further going. The announcement will probably bring in a change in increase in these stocks to perform well. Bringing you all latest updates on Oneindia, the budget 2020, and what we're latest expecting is, of course, the budget is going to bring in various kinds of changes and slabs in various sectors. And what we are talking about here is sectors like that of infrastructure and auto, who have been keen on waiting in some kind of development and changes. In fact, we've seen in last 8 months it's not been a very happy situation for the industry. And just taking you right on the key expectations that the budget 2020 is expected to bring to markets and corporates. These are certain kind of expectations and suggestions that have come in from the corporates. Well, of course, the first such is to revise the personal income tax slab that is expected. In fact, the government of India in its last budget has also worked around certain kind of changes with the income tax for the middle class slab, but this time it's expected that the government could in fact change the 5% slot which is currently holding for 2.5 lakh to 5 lakh earnings, but will change to 2.5 to 7 lakh. So that gives a rebate of about 2 lakh to people, and they do not and will of course be exempted from them. The government also proposes a 10% tax for income tax bracket of 7 to 10 lakh, and is planning to make it for of course for the 10 to 20 lakh bracket. The finance ministry may also propose a 20% hike rate in this. Well, on the personal taxes section, of course, infrastructure bonds may be reintroduced as a tax saving instrument. Just not that, also having a look at what the corporate taxes looks like. Abolish dividend distribution tax of 20.56%, and tax recipients is expected introduce one-time dispute resolution scheme of income tax like for GST. Well, besides this, of course, a lot is expected around the auto sector. The auto sector has been keen on getting a GST rebate. In fact, on the BS4 vehicles, which has been in, of course, developments and news for a longer time, the auto sector is expecting some kind of changes in that, and also what we are expecting in is the key things to watch out are corporate tax receipts are to be seen lower by 15 to 16% following the rate cut, and there is an expectation that the personal tax slabs will also be revised, like I just mentioned to you on that note. In fact, the government is also planning to do away with the issuance of TDS certificates and to provide investment linked tax deduction of sunrise sectors. Let's just jump in to have a look at how is the market doing. We of course try seeing some kind of uptick that's happening with the BSE Sensex, but still the Nifty has not seen very remarkable increase on that note. But today stands a day where certain stocks are of course being expected to keenly watched at, and that is of course followed by the earnings season that has just passed on last week, and SBI is one such stock that is to be keen watched in today. The list of stocks of course also include others such that of Hindustan Lever. Yesterday SBI also posted its highest gross quarterly net profit of about 5,583 crores on back of 11,000 crores recovery from a single account. And today, with the kind of changes that budget may probably announce, SBI being one of the largest PSU banks in the country, may see some kind of change, of course, followed by Hindustan Lever. That brings in us to the point of the stocks that are in focus due to the consumption changes in the country, and the budget may bring about certain kind of changes with the consumption factor, having a direct impact on the FMCG goods. And rest, the real estate stocks to watch is the India Bulls
group, which is based out of Maharashtra, and government has of course in its last budget given some kind of relief to the real estate sector by bringing in certain kind of reforms on affordable housing site. And this year it's again expected, with the full-fledged budget coming in, the government is planning to bring in some kind of real estate cutoff on that side also. Well, you know, the most primary part that the government of course is looking into, and I think the corporate India is also expecting, is to bring in money in the market. You know, liquidity still persists, and the government through this budget has to prove in that there is credible revenue and expenditure projection, because that will bring about the status of investments and acquisitions that the corporate India is looking at. Of course, a strong fiscal stimulus is needed, and income tax relief for the middle class will be very beneficial and could play as a profitable note for the public who's been waiting for this budget. Not every Saturday do we meet with a market that is of course on a competitive note, but yet has started not on a very good side. Of course, reforms in auto industry, if any, is expected on the GST cut, and tax benefits on housing scheme, like we just mentioned to you, that real estate is of course one such sector that is being keenly observed at. Now, just taking a look at what are the other sectors that government may probably focus on, especially keeping in mind the corporate taxes, and the budget expectations from that scenario is to abolish dividend distribution, is to extend profit linked deduction for exports from, of course, SEZ beyond March 31, introduce one-time dispute resolution scheme for income tax, that is for GST, provide investment linked deduction for sunrise sectors, and to allow CSR expenditure to bring it on the deduction purposes of the tax note, and to relax conditions for additional 30% on the salaries as of now. Well, to do away with the practice of issuance of TDS certificates. These are certain latest points that we've been picking up from of course the budget expectations. And Nirmala Sitharaman, of course, this is the second budget, this is the second budget in this annual interim period of the Modi government that she will be having a look at. And we will now just take on expecting also further, like you will see on the screen, Nirmala Sitharaman. There are visuals of Nirmala Sitharaman stepping out of the car. Of course, the budget to 2020 has changed the whole concept of carrying the budget documents in a briefcase, and now it's moved on to carrying it in a booklet kind of form. Well, and you see that along with her is of course the team of I'd say Budget 2020, the officials from Finance Ministry. We also have CEA Arvind Subramanian who is in the profile. Well, just taking in a quick look, and here's bringing you what's happening latest. We have got you certain expectations from what the industry and the corporates think, and we are joined by our first guest, who is of course Dr. D.K. Pant from India Research Ratings, who will be sharing with us that what is the corporate sector actually looking for and expecting from the Finance Ministry for Budget 2020. Released by the National Statistical Organization, the country's economic growth is likely to hit an 11-year low of 5% in the current fiscal ending March 2020. But will the Modi government's budget bring any respite to the taxpayer or the market that is keenly waiting for the Budget 2020? We are joined by Mr. D.K. Pant, the Chief Economist at India Ratings. Thanks a lot for joining us, sir. As the Modi government is set to present the Budget 2020, the government has a formidable task of achieving a fine balance between addressing the current slowdown and maintaining fiscal discipline. What are your views on that? How can the government really achieve this? Yeah, you are right. Government has to look at how to maintain a balance between fiscal deficit and the growth.
In present situation when the growth is falling and there is absence of capex from the private sector, in order to spur demand in the economy, the government has to undertake the counter-cyclical measures. However, with the very limited fiscal space government has, or a very limited headroom, it will be really a fine balancing act between the two. Because if you look at on GDP side, the government, if the government final consumption expenditure has to be increased, there will be hit on the fiscal deficit, which is going to increase. So how much government slip on the fiscal deficit from the budgeted level of 3.3%, and how much will be the growth? This will depend on that. However, still government can adhere to a relatively lower fiscal deficit target than the market believes. We believe this year fiscal deficit will be 3.6% of the GDP. It depends whether government will go for the full escape clause of 0.5 percentage point of the GDP slippage in fiscal deficit because of the adverse conditions, growth being so low. Corporate tax rate concession has been given. The GST is compensation is lower. So government can do the rollover of expenditure because the government budgets are on the cash basis. So some amount of expenditure can be rolled over to next fiscal, that is FY21, and by that the government may settle in for a deficit level which is lower than the 3.8, which can be achieved if the full escape clause is used. There is already a lot of talk about RBI giving some more interim dividend. How much that will benefit government and what amount has to be seen. More importantly, other than the tax revenue shortfall, there has been shortfall in the disinvestment receipt. Over past few years, government's record in disinvestment collection had been very good, but since this year the budget was presented in July, and by the time the other things revolve around it, budget got cleared and all those, there was less space. However, if the developments on the Air India disinvestment front is anything to go by, the government is again coming out with the disinvestment of Air India. It has to be seen whether they will be able to achieve it in this fiscal, or that will go into the next fiscal. So net, there will be some fiscal slippage. We believe it will be 3.6% of the GDP. If more fiscal slippage is allowed by incurring expenditure to revive demand, then the deficit will be higher. The bottom line is what is going to have on the impact on the bond market, because the money has to be raised to finance that deficit. As the Chief Economic Advisor, Krishnamurthy Subramaniam, presented the economic survey, what do you think are the key highlights that grab your attention? Well, the 2019-20 economic survey, which was tabled in the Parliament today, there is always analysts' curiosity to look at the economic survey and try to find out, say these things are going to come in the budget next day. But economic survey is a technocrat's advice to the government. We had seen in the past some of the easy levers has been used in the budget or find a place in the budget. Difficult ones have always remained outside the budget. Now, if you look at what economic survey is talking about, one thing which may find placed in tomorrow's budget is economic survey talks about 6 to 6.5% real GDP growth in the fiscal year 2021. Looking at 5% GDP growth as estimated by the National Statistical Office in first advance estimate, 100 to 150 basis point increase in GDP growth looks a tall order. But still, one can find government may go in the budget with the nominal GDP growth rate of 10%, which will be
if the real is 6% and somewhere around 3.8% is the GDP deflator growth, we may achieve a fiscal nominal GDP growth of 10%. Very crucial point is what kind of revenue buoyancy government assumes in the budget and the nominal GDP growth. The other thing it talks about many things. It talks about the government intervention in different areas where the impact of government intervention has been contrary to the final result, or the end result is contrary to what they were initially aimed at. And it talks about 4 different sectors. The first is Essential Commodity Act, and which it shows like by Essential Commodity Act, the government was not able to control prices. Second, it talks about the drug control order. Third, it talks about the government intervention in the food grain market. And the fourth, it talks about the central and state government doing debt waiver. So these are very, 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 very important points. Another important point, it talks about assemble in India forward to be integrated with Make in India, and which shows like it will be able to generate employment if we are able to do it. But there's a big question if we are able to do it, because what is going to happen? We had seen whatever the capital flight or manufacturers went out of China, hardly anyone came to India. They bypassed India, they went to Taiwan, they went to Vietnam, they went to Cambodia, they went to Ethiopia, come to India. Why? Because if you see, though we have improved in an aggregate on ease of doing business in India, but there are still enforcing contract, starting a business, there are still lot of development has to be made. So these are the few crucial points which economic survey talked about. Well, as the budget 2020 is expected to bring a cut in the income tax concessions for the home buyers, do you think it's really feasible? Yes, there is a lot of talk about the government will spur demand or increase, take counter-cyclical measures to cut income tax rate and do something for the housing. But if we look at how many people pay income tax, it's only 4% of the population which pays income tax, and generally those people are in the middle income group and above, where even if they get 10,000 rupee in a year in the tax exemption, it is unlikely that they will spur consume it, and there will be a demand boost. However, we believe if the same amount of money which is there for the income tax rate cut, if the same amount of money is being spent on the rural areas, and the money goes to the people at the bottom of the pyramid. So, for example, increasing the allocation under NREGA. तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आप देख रहे हैं वन इंडिया की ये लाइव स्ट्रीमिंग, और 2020-21 का बजट जो है वो पेश अब से थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री संसद में पेश करने वाली हैं, और मेरे साथ करिश्मा बनी हुई हैं। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से जो अर्थशास्त्री हैं उन्हें भी उम्मीद है कि जो इस बार का बजट पेश होने वाला है उसमें कुछ बड़े कदम जो है वो उठाए जाएंगे करिश्मा, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी हमारी ग्रो करनी चाहिए थी उससे जिस तरह का झटका लगा है, जिस तरह से जॉब सेक्टर को झटका लगा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है वो भारी गिरावट देखी गई है, उसके बाद उम्मीद है कि इस बार मोदी 2.0 का जो ये दूसरा बजट पेश होने वाला है इसमें कुछ बड़े कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले भी ये तस्वीरें देखी होंगी जब निर्मला सीतारमण वो जो है बही खाता जिसे कहते हैं, उन्होंने एक ट्रेडिशन बदल दिया पिछली बार से। सूटकेस में बजट लेकर वित्त मंत्री जो है वो संसद भवन पहुंचता था, लेकिन अब उन्होंने बही खाता के तौर पर आना शुरू कर दिया है। एक बही खाता लेकर वो आती हैं, उसे लेकर संसद पहुंच गई हैं अनुराग ठाकुर उनके साथ।
साथ थे। इसके अलावा जो है प्री बजट जो है कैबिनेट मीटिंग है वो इस वक्त संसद भवन में शुरू हो गई है। 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है वो बहुत ज्यादा है करिश्मा, क्योंकि लोग खासकर मिडिल क्लास और जो सैलरीड क्लास है वो इस बजट से ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसमें बदलाव सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये बदलाव पिछली बार भी नहीं किया गया और जिस तरह का बदलाव किया गया था वो बहुत ही पेचीदा बदलाव था, जिसमें आपकी 1 रुपए भी इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर हो गई तो आप जो है इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते थे। तो सरकार से ये उम्मीद, सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स के लेवल पर आम आदमी को, सैलरीड क्लास को है कि जो 2.5 लाख की सीमा है इनकम टैक्स की उसे बढ़ाकर कम से कम 5 लाख कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन लोगों का भी यही मानना है कि अगर सरकार बूस्ट देना चाहती है, इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, तो उसे जाहिर तौर पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी, लोगों की जेब में पैसा डालना होगा, तभी कंजम्पशन चीजों की बढ़ेगी और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। करिश्मा। बिल्कुल सही कहा योगेश जी, एक बिल्कुल एंथुसियास्टिक नोट से आपने शुरू किया है। इनफैक्ट जैसे आपने मेंशन किया दैट इस बार इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। हमेशा आता था ये एक सूट केस में और 1 तारीख को ये होती थी कि हम सब, चाहे मीडिया हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो या मार्केट्स हो, सब वेट करते थे उस ब्रीफ केस को देखने के लिए। लेकिन इस बार इन्होंने दिया एक नया अंदाज और आई थिंक ये हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी की हालत इस बार भी काफी थोड़ी सी टफ रही है और गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज रहेगा कि कैसे इस बार मार्केट्स को खुश किया जाए। और ये सैटरडे के दिन आज मार्केट्स खुले हैं, लेकिन एक चीज नोट करनी चाहिए योगेश जी कि मार्केट्स की ओपनिंग आज थोड़ी सी वीक हुई है। बिल्कुल, ये करिश्मा, कल का आर्थिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसका असर भी हो सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी और जो मोदी सरकार 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करती है, उसे एक झटका कल के इकोनॉमिक सर्वे में जाहिर तौर पर लगा है। जो जीडीपी की विकास दर है नए वित्त वर्ष के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो 6 से 6.5% कही गई है। और अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आपको 8% की ग्रोथ से बढ़ना होगा हर साल। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद इसी वजह से जो अभी मार्केट्स खुली हैं आज, वो काफी नीचे खुली है। सेंसेक्स लगभग 200 पॉइंट्स नीचे खुला है इस वक्त जो चल रहा है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जब निर्मला सीतारमण जैसे जैसे बजट पेश करेंगी उसमें कुछ अगर राहत वो देती है लोगों को, तो हो सकता है कि मार्केट में जो है वो भी ग्रोथ जो है देखने को मिले। क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो है, कैपिटल गेन टैक्स जो है, उसमें बदलाव की उम्मीद जो है वो मार्केट कर रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में। इसके अलावा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, डीडीटी, उसमें भी बदलाव की उम्मीद मार्केट कर रही है। क्योंकि अगर इसके अंदर बदलाव होता है, सरकार राहत देती है, तो जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे भाषण उनका अगर वो राहत दे देती हैं तो तुरंत मुझे लगता है कि शेयर बाजार में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि वो सूटकेस के बजाय वो बही खाते के तौर पर एक लाल कपड़े में लपेटकर बजट को लाई है, पिछली साल भी उन्होंने वही किया था। बड़ी बात यह होगी कि सरकार जो सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह ठीक है कि सूटकेस में बजट लाने के बजाय वो बही खाते के तौर पर लाल कपड़े में लपेट के उसे ला रही है। लेकिन सरकार को अगर जमीनी स्तर पर इकोनॉमी में चेंज करना है, अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसे बनानी है 2024 तक, तो उसे बड़े कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे, लोगों के जेब में पैसा पहुंचाना पड़ेगा ताकि कंजम्पशन जो है वो बढ़े। हम ऑटो सेक्टर की हालत देख रहे हैं, हम रियल एस्टेट की हालत देख रहे हैं, और जो अर्थशास्त्रियों का मानना भी है कि डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से करिश्मा किया गया और उसके बाद जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया है, उसमें जिस तरह के फ्लॉज हुए हैं, उससे अभी तक जो है वो इकोनॉमी उभर नहीं पाई है। सरकार अपने तर्क दे सकती है कि वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है, लेकिन आपने घरेलू स्तर पर जो कदम उठाए हैं उसका बड़ा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ा है। और ये देखिए अभी हम जो नया सीख रहे हैं कि ऑफ कोर्स अमित शाह आवर होम मिनिस्टर वो आ गए हैं और कैबिनेट मीटिंग ऑफ कोर्स शुरू हो गई है। इट्स अ प्री बजट कैबिनेट मीटिंग जहां डिस्कशन होगा और देश में जो आज हो रहा है, इनफैक्ट इकोनॉमी के अलावा भी आई थिंक आज एक काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट से हमें सुनने को मिलेगा उनका साइड ऑफ द स्टोरी। मार्केट्स की मैं हाल देखूं तो ये बताऊं कि
हिंदुस्तान लीवर एक काफी अच्छा स्टॉक देखा जा रहा है, इट्स राइजिंग, ये बिल्कुल ओपनिंग से राइज करता जा रहा है। हो सकता है सम काइंड ऑफ हम लीवे देखा जाए या सम काइंड ऑफ रिफॉर्म हम देखा जाए बिल्कुल एफएमसीजी साइड पर। बिल्कुल जो हिंदुस्तान लीवर की आप बात कर रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर है जो कि जिसमें साबुन, तेल, ऐसी छोटी छोटी चीजें आती हैं, और जाहिर तौर पर रूरल इकोनॉमी की यहाँ पर बहुत बड़ी बात होगी करिश्मा, क्योंकि जो ये एफएमसीजी सेक्टर है ये बड़ी तेजी से रूरल सेक्टर में जो है, गांव देहात में जो है वो इसका बढ़ने का बहुत ज्यादा स्कोप है, और तभी लोग ये सेक्टर बढ़ सकता है अगर वहां पर गांव में देहात में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनके पास ज्यादा पैसा होगा। इसके लिए जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र में खास तौर पर जो है वो बड़े कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, ताकि लोगों के जेब में पैसा जाए, लोग चीजें खरीदें, डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगी और उनकी कंजप्शन बढ़ेगी, और इसके साथ साथ इससे जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी जनरेशन भी होगी। तो एक ये क्लासिक उदाहरण एक तरह से इकोनॉमी का है, जो कि एक चक्र के तौर पर जो है वो चलता रहता है। अनुराग ठाकुर जो है वो हमारे उनकी हम एक बाइट इस वक्त हम करिश्मा सुनाना चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है पूरे बजट को लेकर। आइए सुनते हैं। का विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली आदरणीय मोदी जी की सरकार, देशवासियों के सुझाव भी आए और ये बजट देश और देशवासियों के लिए अच्छा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली आदरणीय मोदी जी की सरकार, देशवासियों के सुझाव भी आए और ये बजट देश और देशवासियों के लिए अच्छा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। तो अनुराग ठाकुर को आपने इस वक्त सुना, उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, ये नारा यहां भी उन्होंने दे दिया, और अच्छा होगा बजट, ये उम्मीद उन्होंने की है। तो देखते हैं कि बजट कितना अच्छा वो लेकर आते हैं, और उनकी जो बॉस हैं निर्मला सीतारमण, वो क्या लेकर आई हैं। जाहिर तौर पर मिलके जो है वो बजट दोनों ने बनाया होगा, तो इस पर नजर रहेगी। लगभग आधे घंटे बाद जो है वो संसद में बजट पेश करना शुरू कर देंगी निर्मला सीतारमण। और करिश्मा, यहां पर हम बात करें जिस तरह की इकोनॉमी की हालत है, पिछले 11 साल में इस वक्त का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है, और ये बड़ा झटका है। वो कम है, और वो कम, अगर हम जीडीपी का जो पुराना फॉर्मूला था कैलकुलेट करने का, अगर उस फॉर्मूले से लगाए तो इस वक्त हम 2.5% की ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ये नया फॉर्मूला है जो अडॉप्ट किया है सरकार ने, उसके बाद ये ग्रोथ रेट जो है 5 दिखा रहा है, अदरवाइज हम शायद 2.5 और 3% से ज्यादा पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसकी चिंता बीजेपी को भी पार्टी के स्तर पर जाहिर तौर पर है, क्योंकि जिस तरह के देश में राजनीतिक हालात बने हुए हैं, दिल्ली का चुनाव जो है 8 फरवरी को होने वाला है। इस बजट में एक चीज हम और भी देख सकते हैं करिश्मा, कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए भी बड़ी घोषणाएं इस बजट में दिल्ली के लिए हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से रोक रहती है कि कुछ घोषणाएं जो है वो पर्टिकुलर स्टेट को लेकर या पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर ना हो, किसी राज्य को लेकर, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी ने भी जो है वो एक तरह से पॉलिटिकली इस गेम को खेला है। उसने नरेंद्र मोदी सरकार को साफ तौर पर कहा है कि आप बजट का बहाना बनाकर दिल्ली का ग्रोथ रोकने की जो है वो कोशिश ना करें, तो बजट में दिल्ली के लिए खूब घोषणाएं करें। तो देखते हैं कि दिल्ली के लिए क्या घोषणाएं होंगी। लेकिन पूरे देश के स्तर पर भी अगर हम बात देखें, लोकसभा चुनाव 2019 के बाद हर एक राज्य के अंदर बीजेपी को झटका लग रहा है जी, हर एक राज्य के अंदर झटका लग रहा है। तो उसे देखते हुए भी, और उसमें बेरोजगारी, इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर है। आप राष्ट्रीय स्तर के भावनात्मक मुद्दे जो है वो जितने उठा ले, 370, पाकिस्तान, राम मंदिर, जितना गा ले, लेकिन ये जमीनी सच्चाई है कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, और उसका इफेक्ट जो है स्टेट इलेक्शंस के अंदर जरूर बीजेपी के लिए झटका लगा है। वो उसे सुधारने के लिए, क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार बड़ा राज्य जो है वो आने वाला है इस साल, जिसमें चुनाव होने हैं, तो इसमें सुधार सरकार को जाहिर तौर पर करना ही होगा। बिल्कुल। और बस आपने अभी ऐसी बात करी जीडीपी पर, और हमारा जो डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ देखा गया है, इस पर ऑफ कोर्स हमारे पहले वाले गवर्नर फ्रॉम आरबीआई रघुराम राजन ने अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये बात बोली थी। बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि इंडिया का डाउनफॉल उनके बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ है। और ये देखा जाए योगेश जी, इस बात को करीब 2 से 3 साल होने को आ रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन वो नवंबर 8 की रात थी जब सारा भारत काफी एक शॉक में चला गया था, और जब से अभी तक देखा जाए तो उसके इफेक्ट्स अभी तक नहीं गए हैं। अगर आपने देखा है तो इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स, और अभी तक
रियल एस्टेट सेक्टर देखा जाए, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी अनसोल्ड इन्वेंट्री हुई है बॉम्बे जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में, बैंगलोर, जहां पे ऑफ कोर्स लैंड रेट्स इतने हाई हो रहे हैं क्योंकि वहां पर सेल नहीं होती है। और ये हम दिल्ली एनसीआर का इलाका भी देख ले, जहां पर सरकार बैठी हुई है, जहां पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, कि लोगों के अंदर डिमांड नहीं है किसी भी चीज के लेकर। कुछ कदम जो है सरकार ने पिछले दिनों में उठाए, लेकिन फिर भी लोगों के मन में अभी भी एक तरह की आशंका बनी हुई है। वो लोन लेने आदमी बैंक नहीं जा रहा है इस वक्त, लोन नहीं ले रहा है तो जाहिर तौर पर वो घर नहीं खरीद पा रहा है, वो कार नहीं खरीद पा रहा है, तो वो कंजम्पशन नहीं हो रही है अगर वो करना भी चाहे। लेकिन उसके अंदर क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, उसे लगता है कि इकोनॉमी की अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में क्या मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, या मेरा सैलरी कट तो नहीं हो जाएगा, तो मुझे बचत जो है वो इस वक्त कर देनी चाहिए ताकि बुरा वक्त जो है अगर आता भी है तो उसमें मैं संभल कर रहा हूं। आपने रघुराम राजन की बात की, अभी जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, अभिजीत बनर्जी, उन्होंने इकोनॉमी को लेकर सवाल उठाए। जो पहले के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे सरकार के, उन्होंने भी कई तरह की चीजें इस बारे में कही थी। तो सरकार बेशक जितना फील गुड बाहर से दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर की सच्चाई जमीनी स्तर पर यही है कि अगर बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपके बहुत से सेक्टर्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो आने वाली है। बिल्कुल। और ये देखिए, अभी हम ये सीख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं पार्लियामेंट में और कैबिनेट शॉर्टली अप्रूव करेगा यूनियन बजट 2020-2021 को। इसका मतलब कि ऑफ कोर्स बीजेपी पार्टी के मेन सिग्निफिकेंट मेंबर्स और कैबिनेट विच इज ऑफ कोर्स द एसेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूनियन बजट, वो सब आ गए हैं और मीटिंग शॉर्टली शुरू हो जाएगी इस बजट पर। बस कुछ ही मिनटों में हम देखेंगे कि निर्मला सीतारमन इस बजट को प्रेजेंट करेगी और इस बजट के थ्रू काफी सेक्टर्स के होप्स लगे हुए हैं और स्टॉक्स भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। आज के दिन काफी लोग इसकी वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि कौन से सेक्टर्स में क्या सुधार आएगा। ऑटो सेक्टर की बात की जाए योगेश जी, तो ऑटो सेक्टर काफी महीनों और सालों से एक डिप्लीटिंग जोन में रहा है और वो सिर्फ यही मांगते हैं कि गवर्नमेंट हमें जीएसटी रिबेट दे दे। और अभी हम बात कर रहे हैं 2021 आने की, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं और ये दिल्ली से रिलेटेड काफी पॉल्यूशन को देखते हुए अगर देखा जाए बिल्कुल बड़ा फैक्टर है जी, दिल्ली से रिलेटेड काफी सिग्निफिकेंट फैक्टर है। और इस चीज पर गवर्नमेंट के पास, जैसे आपने कहा, लिक्विडिटी का इतना इशू चल रहा है, देयर इज नो मनी इन द मार्केट, कंजम्पशन लो है। और इस बात पर एक्सपेक्टेशंस की बात आती है जहां पर कॉर्पोरेट इंडिया चाहता है कि फिस्कल स्टिमुलस आए और जो आज का बजट है वो एक फिस्कल स्ट्रेंथ दिया जाए इस कॉर्पोरेट एंड मार्केट्स को। और ये बस वही होगा अगर गवर्नमेंट पैसा ला पाए या नहीं, क्योंकि बात वहीं पर आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट पैसा ला पाएगी तो कंजम्पशन होएगी, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी और सेक्टर्स में सुधार आएगा। बिल्कुल। हम जो अभी कुछ देर पहले हमने एक बाइट दिखाई थी, मिस्टर पंत जो कि आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी भी बाइट दिखाई थी। डिसइन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने करिश्मा बात की। तो सरकार कई सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है। एयर इंडिया को बेचने के लिए बिडिंग जो है इनवाइट कर ली है सरकार ने। तो क्या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा लाएगी? इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज जो और हैं उनमें भी जो है उनकी मर्जिंग या फिर दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर दे, बल्कि पीएसयूज की जो बात हो रही है उसके थ्रू पैसा जनरेट करने की बात हो रही है। लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हमारी पीएसयूज जो है वो पिछले 70 साल में खड़ी की गई हैं, 50 साल में खड़ी की गई हैं। अगर उन्हें हम बेच देते हैं या बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो भी एक गलत बात होगी कि फौरी तौर पर हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उस पैसे की वजह से अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आता है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट किसी काम की नहीं रह जाएगी और उन कंपनी को भी बड़ा नुकसान जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। तो ये चीजें भी हमें देखनी होगी। इन चीजों को समझ रही है सरकार और कुछ तस्वीरें भी हम जो करिश्मा दिखा रहे हैं कि बजट की कॉपीज जो हैं वो भी पार्लियामेंट पहुंच गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक की किस तरह से ये जो बड़ी बड़ी बोरियों में जो है भरकर ये बजट की सारी कॉपीज जो है पार्लियामेंट पहुंच गई हैं छपकर। और पिछले कई दिनों से 15-20 दिनों से ये छपाई का काम चलता है। बड़े सीक्रेट तौर पर ये काम बजट का होता है और पार्लियामेंट में ये कॉपियां बांटी जाएंगी। सभी जो सांसद वहां पर मौजूद है उन्हें, और उसके बाद निर्मला सीतारमन भी इसे साथ साथ पटल पर रखेंगी और पढ़ेंगी। इसके अलावा जो हम बात करें बीजेपी की, जो मैं बात कर रहा था, बीजेपी ने खुद जो प्री बजट मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, बीजेपी के जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं पार्टी के, तो उन्होंने जो मांग रखी है करिश्मा, उसमें बड़े पैमाने पर यह कहा गया है कि ग्रोथ को सहारा देना होगा।
हमें ग्रोथ को सहारा देना होगा, खपत बढ़ानी होगी, सरकारी खर्च जो है उसे देखना होगा, और ताकि ग्रोथ बढ़े और लोगों की, जो हम बात कर रहे हैं लगातार, कि कंजम्पशन बढ़े चीजों की, और उसके साथ जो है इकोनॉमी बढ़े। इसके अलावा निवेश और की बात बीजेपी की तरफ से की गई है, जो सरकार को कहा गया है कि निवेश बढ़ाए, क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुई है इस दौरान। तो वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होती है, कोई नए सेक्टर में नई फैक्ट्री लगती है, तो जाहिर तौर पर वो रोजगार पैदा करती है, वो नहीं हो रहा है। तो इसकी मांग बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से सरकार को की गई है। साथ ही टैक्स का दायरा बढ़ाने की बात जो हम लगातार कह रहे हैं, कि जो खासकर जो इनकम टैक्स के स्लैब्स जो हैं उसमें बदलाव की बात की गई है, ताकि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा जाए और उनकी खर्च करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाए। और सेविंग्स की बात बीजेपी की तरफ से की गई है कि सेविंग बढ़े। वही एक बात है कि अगर इनकम टैक्स में राहत देती है सरकार मध्यम वर्ग को, तो उसकी सेविंग्स बढ़ेगी, और अगर सेविंग्स बढ़ती है तो वो कुछ नई चीजें खरीदेगा मार्केट से, और जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सकता है। और जो दूसरी बात, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर की एक बार फिर से बता दें, जो हम कह रहे थे कि शेयर बाजार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है टैक्स, इसमें सुधार या हटाने या इसकी ड्यूरेशन बढ़ाने की जो बात है वो हो रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो पहले नहीं लग रहा था, दोबारा से जो है वो मोदी सरकार ने जो है लगाया है। पी चिदम्बरम ने इसे हटा दिया था पहले, और ये काफी बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसमें भी बात की जा रही है कि ये डबल टैक्सेशन है, डीडीटी एक तरह से कंपनीज के ऊपर जो डिविडेंड देती है उसके ऊपर टैक्स जो है वो कंपनी को देना होगा, जबकि कंपनी का कहना है कि हमारी इनकम पे आप पहले ही टैक्स जो है वो डिडक्ट कर चुके हैं, अब दोबारा से अगर डीडीटी रखा हुआ है तो एक तरह से ये डबल टैक्सेशन जो है वो आप कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर है। इसके अलावा हमारे साथ करण भसीन इस वक्त करिश्मा जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं करण भसीन, जिस तरह से मंदी का दौर, हम जो चर्चा भी कर रहे हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है, मंदी का दौर चल रहा है, उसके अंदर और जो फिजिकल डेफिसिट की बात होती है, उसे भी एक फिजिकल डिसिप्लिन वो भी मेंटेन सरकार को करना है, राजकोषीय घाटे को मेंटेन करना है। इसके बीच संतुलन अगर सरकार को बनाना है तो ये बड़ा कठिन काम है। किस तरह से ये संतुलन सरकार बना सकती है? बजट के लिए बेसिकली ये जो एक बात चल रही है कि फिस्कल डिसिप्लिन और स्लो डाउन एड्रेस करना के लिए कैसे बैलेंस होगा, आज ही इकोनॉमिक सर्वे आया और इकोनॉमिक सर्वे ने जैसे कि बताया कि फिस्कल डेफिसिट के इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हुए हैं अभी। एक रेवेन्यू ज़रूर कम आया है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर हम पिछले 6-8 महीने से देखें तो एक तरीके से कंसेंसस या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक व्यू है या जो उनका मानना है वो ये है कि इस समय उनका फोकस होना चाहिए ग्रोथ बढ़ाने में। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा अगर फिस्कल स्लिपेज भी होगा तो वो बहुत फैक्टर्ड इन होगा, एक सोच समझ के फिस्कल स्लिपेज भी लिया जा सकता है ताकि ग्रोथ को अकोमोडेट करा जा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए हम सबके लिए कि अगर इस समय हम फिस्कल डेफिसिट को देखेंगे जब हमारा ग्रोथ ऑलरेडी 5% पे आ चुका है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा डैमेज कर दें। और यही बात आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ रही है, जिस वजह से वो अपना एक्सपेंडिचर जो बजटेड था वैसा ही रखा उन्होंने, इवन दो रेवेन्यू उनका उतना कलेक्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जो बैलेंस है बहुत अच्छे तरीके से पिछले 6-8 महीने में मैनेज हुआ है और ये आगे भी मैनेज होता रहेगा। अगर थोड़ा बहुत स्लिपेज भी हो तो इसमें कोई एकदम से घबराने वाली बात एज सच नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण भसीन आपका जवाब देने के लिए, जो आपने समझाया कि फिजिकल डेफिसिट अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है ग्रोथ के लिए, अगर वो ज़रूरी भी है, तो उसकी इस वक्त सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए, ये करण भसीन का कहना है। और इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की ये तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो उसे चेयर करना है नरेंद्र मोदी को। और एक ये यूजुअल प्रोसेस है कि कैबिनेट की मीटिंग होगी, वो अप्रूवल बजट को देगी, तो उसी के लिए अभी थोड़ी देर में ये कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें
में तमाम नेता पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। करिश्मा, जिस तरह से करण बसीन ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो अभी सरकार को बूस्ट इकोनॉमी में देने के लिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो धीरे धीरे मैनेज हो सकता है अगर इकोनॉमी जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ती है। और अगर सेक्टर्स की बात करें, जो अर्थशास्त्रियों का कहना है और जो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो सेक्टर्स हैं उन पर किन किन सेक्टर्स पर फोकस हो सकता है। रियल एस्टेट एक ऐसा बड़ा सेक्टर है जिस पर बड़े फोकस की जरूरत जो है वो सरकार को है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है एनबीएफसी, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये जो है बड़े स्ट्रेस के अंदर इस वक्त चल रही हैं, जिस तरह से इनके पास पैसा नहीं था या फिर ये कहें कि एनपीए के तौर पर इनके ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर इन कंपनीज के ऊपर आ गया था। एनपीए इन कंपनीज का बहुत ज्यादा हो गया। इन्हें सहारा देने की जो है वो बहुत बड़ी जरूरत इस वक्त है और इन पर फोकस सरकार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी ऐसी कंपनीज है जिससे बड़े पैमाने पर लोग जो है वो लोन लेते हैं, जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं होती, अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जिनके पास उनका सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि बड़े बैंक उन्हें लोन नहीं देते हैं। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, छोटी कंपनीज हैं, एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनीज जिन्हें कहते हैं, वो आम आदमी को, छोटे ट्रेडर्स को, छोटे आम आदमी को, छोटे व्यापारी को, किसान को या जो दूसरे लोग अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो इन कंपनीज के पास पैसा नहीं है, जिस वजह से भी लोगों को अगर लोन लेना भी चाहे तो वो लोन नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें लोन नहीं मिल रहा है तो वो नई चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ग्रोथ हैम्पर जो है वो हो रही है। इसके अलावा जो पर्सनल टैक्स की बात की उस पर तो जोर रहेगा ही, और साथ ही साथ ब्याज दरों में कमी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ और कटौती दिखे। जो आरबीआई ने पिछले काफी टाइम से 3-4 बार जब भी मीटिंग हुई है तो अपनी ब्याज दरों में एक तरह से स्टैटिक रखी है, कुछ कम भी की है, बढ़ाई नहीं है उसने, ना सीआरआर में किसी तरह का बदलाव किया है। तो उसमें और उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऑटो लोन या होम लोन लेना और सस्ता हो जाता है आदमी के लिए, तो हो सकता है कि लोग जो हैं वो लोन लेना शुरू करें और उससे फिर रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में बढ़ावा जो है वो हो सकता है। Yogesh ji, just adding on to what you've mentioned about the whole NBFC's crisis, in fact, I think we've come to this stage of budget where, no more the focus is on bringing the NBFCs back, but it's now more about bringing money in the market, and all that's happened after IL&FS. And if we also see, the recent DHFL crisis, everybody in DHFL, it's a company that was leading the market, as an investment fund, is now out there in pieces, and that's coming in after the debt-laden IL&FS, which has been one of the leading companies out there as an NBFC. So now, while the interim budget in July put a lot of focus on NBFCs, right now I think the consumption factor and the factor of bringing money from anywhere has become the main agenda. And of course, going ahead, you are absolutely right when you say that until and unless NBFCs are back in action, there will be no consumption in the market, there will be no movement in the market. The demand and supplies completely depend on the funding that comes from NBFCs, and this is where the role of Finance Ministry has to come in, and the kind of regulations that it has to tie up with RBI. In the previous 8 months, we have seen that Nirmala Sitharaman has tried very hard to bring about certain changes. Even if you see about the real estate sector, opening up things with the affordable housing, FDI is a very important concept. आपने मेंशन किया कि डिसइन्वेस्टमेंट एक काफी फोकस पॉइंट रहेगा, और लास्ट बजट में भी इंटरिम बजट था, लेकिन हमने उसमें देखा कि एफडीआई इन द मीडिया साइड ऑफ इट को फोकस में रखा गया था. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस बजट, देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एफडीआई opens up for disinvestment to happen. Air India is going to be going for sale after years, and this is the second attempt, and it's being failed because no strong domestic investor. So until I think government brings about a strong movement today in FDI, there will not be probably a more better change than that. Definitely. जिस तरह से आपने कहा कि एयर इंडिया के लिए सेकंड अटेम्प्ट है, जब आपका डोमेस्टिक बायर जो है वो तैयार नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एफडीआई की जो बात कर रही हैं, तो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर क्यों देश के अंदर आएगा, जबकि उसे पता है कि इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, वो पैसा क्यों लगाएगा. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है और सोचने की बात है. तो इसीलिए ये चिंता का विषय है कि एयर इंडिया, एक तो पहली बात है कि बिकनी नहीं चाहिए थी, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए थे,
लेकिन अगर इस स्थिति में आप पहुंच गए हैं कि उसे बेचना पड़ रहा है आपको, तो भी आपको उस तरह का बायर नहीं मिल पा रहा है कि वो आप उसकी पूरी कीमत जो है वो वसूल सके या सरकार को उससे फायदा हो सके। तो ये बड़ी चिंता के विषय है। और जो इकोनॉमी की बात, फॉलिंग इकोनॉमी की बात की है, एक बार करण भसीन एक बार फिर से हमारे साथ है। करण, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो फॉलिंग इकोनॉमी की बात लगातार हम भी कर रहे हैं, हर रोज अखबारों में बात है, बड़े अर्थशास्त्री कर रहे हैं, गिरती इकोनॉमी की बात है, नो जॉब्स हैं, कंजम्पशन जो है वो बड़े पैमाने पर गिर गया है, और क्या बजट इन फैक्टर्स को वापस किस तरह से ला सकता है? एक तरह से हम कहें कि रेड जोन में ये चीजें चली गई है, ग्रीन जोन में लाने के लिए क्या कदम सरकार की तरफ से उठाने होंगे? बजट से पहले हमेशा होता है लोगों को कि टैक्स कट आना चाहिए, और होम बायर्स या घर की खरीद के लिए कुछ टैक्स कंसेशंस होने चाहिए। मेरा इसमें ये मानना है कि ज़रूर टैक्स हमारे यहाँ पे वैसे ज़्यादा है और उसको कम करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर टैक्स कट आना है तो इसी का इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए, क्योंकि टैक्स कट एक चीज़ होती है और टैक्स रिफॉर्म एक अलग चीज़ होती है। इस समय टैक्स कट और टैक्स रिफॉर्म दोनों की ही उतनी ही ज़रूरत है। तो बेसिकली टैक्स रेट भी कम करने चाहिए जहाँ पे अवेलेबल हो, जहाँ एग्जेम्पशंस बढ़ा सकते हैं वहाँ एग्जेम्पशंस भी बढ़ाने चाहिए, और उसके साथ ही साथ डीटीसी भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं डीटीसी के अंदर, जैसे कि एलटीसीजी है जो इक्विटी में लगता है। आज एसटीटी जो होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था तो बोला था कि एलटीसीजी नहीं लगता, इसलिए हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और थोड़े साल बाद इन्होंने एलटीसीजी भी इक्विटी पे लगा दिया। तो ये वाली प्रॉब्लम्स है वो डीटीसी काफ़ी हद तक सुलझा देगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टैक्स कट आए तो डीटीसी के साथ आए, ताकि एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इस बजट में हो, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू जस्ट एक छोटा सा टैक्स कट। तो बहुत बहुत शुक्रिया करण भसीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर इस ओर ध्यान देना होगा, जो सेक्टर्स बात किए हैं, जो रेड जोन में हम बात कर रहे थे, अगर इन्हें ग्रीन जोन में लाना है तो सरकार को कदम उठाने ही होंगे। और निवेश की जो आपने करिश्मा बात की थी वो है, और इसमें निवेश के सेक्टर में जो सरकार, मोदी सरकार का एक बड़ा फोकस रहा पिछली टर्म में भी, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ आपने स्किल इंडिया प्रोग्राम खुद भी चलाया। इसके अलावा आपने कहा कि नए एंटरप्रेन्योर्स आए, आप नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, प्रोवाइड जॉब्स टू द अदर्स। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा जो नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है, क्योंकि इकोनॉमी डिस्ट्रेस में चलेगी, इकोनॉमी गिर रही है, तो उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। अगर इस चीज को भी देखना है तो उन नए एंटरप्रेन्योर्स को भी आपको बूस्ट देना होगा कि अगर जॉब क्रिएशन आप बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास क्या उन्हें राहत आपकी तरफ से मिल सकती है, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें, ताकि वो उनका बिजनेस जो है वो बढ़े और इन रिटर्न जो है वो रोजगार को बढ़ावा मिल सके। Right, absolutely. And you know, like you just mentioned, the whole concept of uplifting the small scale industries and MSMEs, of course, and of course giving a lot of focus to the ones who are starting out, you know, doing business from the idea of home and by yourself. The whole idea of entrepreneurship, MSMEs has been one major focus of the Narendra Modi government, besides of course the whole concept of Made in India that they have come up with. And what we are learning latest is that Finance Minister Nirmala Sitharaman and of course Anurag Thakur leave from the cabinet meeting. That means of course they are heading towards the parliament. It's about 7 minutes towards the central hall, like Yogesh has added, that they will be leading, and the budget will be announced. Major reforms expected. And what about the we are trying to have a look share market. At the market. Of course, the market has now started to show certain kind of green shoots, which shows that, you know, the Sensex is trying to catch up. While it started on a very low note in the morning, I think that was also because of the economic survey. I think the market is tends to have its trust back with the whole process, and I'm sure that it will take a better curve with the kind of
reforms. Right. Market is more about the sentiments. Absolutely. More about the sentiments, और जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, what we are saying, what other channels or what other economists are saying that government will do something better in this budget. उसके बाद sentiments ये दिख रहा है और उसका असर शायद मार्केट पर भी हमें दिख रहा है, लेकिन अब जब बजट पेश होगा, क्या चीजें दी जाती है, असली असर जो है वो तब मार्केट का हमारे सामने आएगा। तो निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर सेंट्रल हॉल की तरफ संसद भवन में निकल गए हैं, कैबिनेट की मीटिंग से जाने वाले हैं। अब से 5 से 6 मिनट में जो है वो बजट पेश होना शुरू हो जाएगा संसद के अंदर। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, निवेश की जो बात कर रहे थे, हर बार जाहिर तौर पर निवेश बढ़ाने की बात जो है हर बजट के अंदर होती है और उसके लिए पैसा कैसे चैनलाइज किया जाए उसकी चीज होती है। यहां पर एक मैं पढ़ रहा था कहीं, तो एक चाणक्य, जिन्हें बड़ा अर्थशास्त्री भी कहा जाता है एक तरह से, एशियंट इंडिया का, उन्होंने कहा था कि सरकार को जो है टैक्स जो है कलेक्शन उसका ऐसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खी जो है शहद निकलता है, बड़ा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। अगर मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हैं, वो छत्ता बनाने में बहुत टाइम लगाती है और उसके अंदर शहद बनता है तो वो बड़ा धीरे धीरे शहद बनता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स लेना है या लोगों से अपना कलेक्शन, अपना इनकम टैक्स का कलेक्शन, अपनी किटी बढ़ानी है सरकार की, तो आपको टैक्स भी उसी तरह से धीरे धीरे लेना होगा ताकि लोगों पर भी उसका ज्यादा बोझ ना पड़े और आपकी किटी भी जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ती रहे। और ये अक्सर देखा गया है कि जब टैक्स का दायरा, जब अब टैक्स घटाया गया है, इनकम टैक्स में राहत दी गई है, तो उसका दायरा भी बढ़ा है, एक तरह से दायरा भी बढ़ा है और टैक्स कलेक्शन भी उसके बाद बढ़ा है। बिल्कुल योगेश जी, अभी लेटेस्ट आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जनरल बजट 2021। प्रोसीजरल होता है वैसे तो ये, बट अब होगा ऑल आईज ऑन लोकसभा, वेयर ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमण विल बी प्रेजेंटिंग। बट व्हाट वी आर सीइंग एन अपटिक, योगेश, इज ऑफ कोर्स an increase of, an uptick of stocks in the auto and infrastructure, just like we were predicting and talking about that. The market and the sectors around auto and infrastructure, if we talk about Maruti, as we talk, they are on a hike of 2%. As we talk, Bajaj Auto is on a hike of 1%. Of course, M&M is there, and what we're also seeing an increase of banks. There comes Axis Bank from red to green. SBI is also flagging off. Cement stocks are increasing. Ultra Semo is there. Asian Paint. So what we can see is that infrastructure, real estate and auto, these are the core sectors that need change, and these core sectors are showing the green shoots, which could be that market is now, as you said, the sentiments of market are changing. People are expecting, but of course, what we see on the red side of it are certain still, the bank stocks, which is also maybe because of the earnings. But that's the latest coming in, that, the budget is approved, and in just moments and minutes from now, Nirmala Seetharaman will be flagging off, announcing the mega moment that people have been waiting for since they have come into power. Right. और लोगों को ये उम्मीद है कि मोदी 2.0 को जिस तरह का मैंडेट मिला है, उसके बाद लोगों को जिस तरह के वादे किए गए हैं, जिस तरह की चीज़ें कही गई है, उसका असर ज़मीनी स्तर भी लोगों को दिखे। अगर विकास करना है आपको, तो जाहिर तौर पर उसके लिए इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है और इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। और जिस तरह से कोर सेक्टर्स की आपने बात करी कि कुछ ऑटो सेक्टर्स ठीक दिखना शुरू हो गया है, FCMG ठीक दिखना शुरू हो गया है, और ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो दिखना ग्रीन जोन में जाना शुरू हो गया, तो मार्केट की ये सेंटिमेंट्स की जो बात है। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर ये चीजें पॉजिटिव होती हैं करिश्मा, तो जाहिर तौर पर इससे जो हम बात कर रहे थे, MSME सेक्टर की बात कर रहे थे, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये सिंपल सी बात, एक समझने वाली बात है कि जो कंपनीज गाड़ियां बनाती हैं, एक तरह से फॉर एग्जाम्पल हम ले, तो वो गाड़ी में जो पार्ट्स बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, नट बोल्ट बनते हैं, अगर सिंपल भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में बने, तो वो नट बोल्ट जो है वो कोई कंपनी नहीं बनाती है कि हुंडई बना दे, मारुति बना दे, होंडा बना ले। वो नट बोल्ट जो है, छोटे पार्ट्स जो है, वो छोटी जो कंपनियां हैं, MSME जिन्हों कहते हैं हम, छोटे छोटे उद्योग जो है, वो गली मोहल्लों में जो उद्योग लगे हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहां पर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी है, वहां पर वो चीजें बनती है और वो सप्लाई होती है आपकी ऑटो सेक्टर में, वहां पर फिट होती है और गाड़ी आपके सामने बनकर तैयार होती है। तो अगर बूस्ट मिलता है ऑटो सेक्टर को, तो जाहिर तौर पर वो डिमांड बढ़ेगी और MSME सेक्टर जो है उससे ग्रोथ करेगा, क्योंकि नोटबंदी और GST का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो कहा जाता है
वो एमएसएमई सेक्टर पर सबसे ज्यादा बड़ा है। और एमएसएमई सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो कि 11 करोड़ लोगों को लगभग, करिश्मा जो डाटा कहता है कि लघु उद्योग जो है हमारे सूक्ष्म लघु मझोले उद्योग, 11 करोड़ लोगों को ये काम देता है ये सेक्टर इस देश के अंदर, तो बहुत बड़ा सेक्टर है। Right, and Yogesh, you know, just months back in the month of September, Nirmala Sitharaman had announced a kind of, you know, relief to the MSMEs. In fact, it requested banks, including the regulators, not to take any kind of action on the stressed MSMEs as NPAs. इसका यही मतलब था कि उन्होंने बैंक से यही रिक्वेस्ट की कि MSMEs को आप नेगेटिव जोन में मत डालिया करिए, उसको एक स्ट्रेस्ड एसेट मत बनाइए करिए, एक एनपीए दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट मत बनाइए, बट रादर टेक इट एज अ बूस्ट एंड टेक इट फॉरवर्ड, सिंस आपने जैसे बोला दैट यू नो देयर बेसिस स्टार्ट्स ऑन अ स्मॉलर स्केल ऑफ वर्किंग. सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन प्रिटी पॉजिटिव टुवर्ड्स एमएसएमईज ऑलरेडी, एंड गोइंग फॉरवर्ड अ मोर relief to MSMEs will definitely pull the plug. Definitely, and what Mr. Nitin Gadkari has expected and demanded from this budget is, Nitin Gadkari is MSME minister. Absolutely. He is having MSME with him. Nitin Gadkari ने कहा है कि उन्हें 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए. This is what Nitin Gadkari has demanded. Right. We have listened Nitin Gadkari yesterday also when he was presenting the vision for Delhi. जो संकल्प पत्र दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने पेश किया है, उसके अंदर उन्होंने जो सड़कों का जाल है उसकी जो बात की थी कि किस तरह से मैं बिछा रहा हूँ, किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हम आगे भी काम करेंगे. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ भी है सड़कों को लेकर. उसी तरह से एमएसएमई सेक्टर अगर उनके पास है तो उनका कहना है कि 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, जो कि पिछले बजट में जो था उससे 71% जो है वो ज़्यादा डिमांड नितिन गडकरी ने की है. वो समझ रहे हैं कि इस सेक्टर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और जाहिर तौर पर देखना होगा कि उनकी डिमांड कितनी फुलफिल होती है, क्योंकि सरकार को देखना होगा कि अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो किस आधार पर डिमांड कर रहे हैं. और सरकार जाहिर तौर पर समझ रही है कि ये सेक्टर बहुत बड़ा है, जो मैंने बात की कि 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है ये सेक्टर, क्योंकि आप इसमें स्किल्स की भी बात आती है एमएसएमई सेक्टर में. अगर आपके पास जो गाँव देहात के लोग हैं, जो आपकी आईटीआईज हैं, जो अगर बात करें वहां से जो स्किल्ड लोग निकलते हैं, जो छोटी जॉब्स करते हैं, हर कोई आईआईएम और आईआईटी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो जो छोटे हुनर सीखता है अपना, जो आपने स्किल इंडिया का प्रोग्राम एक तरह से चलाया था, वो कहां पे एडजस्ट होंगे? वो लोग जो है एमएसएमई सेक्टर में ही एडजस्ट होंगे, और इसी के लिए इस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो सरकार को देना होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और अब हम सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर लर्निंग व्हाट्स द लेटेस्ट कमिंग इन, दैट यू नो पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स एंटर्स लोकसभा, दैट्स कमिंग इन जस्ट आफ्टर, एंड द बेल्स हियर एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट एनी मोमेंट. और करिश्मा बिल्कुल शुरू हो ही गई है. बिल्कुल, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो गई है. इस वक्त हम आपको सीधे अब जो है वो पार्लियामेंट लिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का पिटारा जो है वो बीजेपी सरकार और निर्मला सीतारमण खोलने वाली है इस बजट के अंदर. और सीधे पार्लियामेंट चलते हैं, निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण सुनते हैं, क्या कहती हैं, उसके बाद फिर वापस मेमोरेंडम ऑन द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस कंटेन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, नए दशक का पहला आम बजट में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. So I rise with your permission to present a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2020-2021. दो 2020-2021 के लिए भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और वे विवरण प्रस्तुत करेंगी निर्मला सीतारमण जी. I rise to present the budget for the year 2020-2021. So in May 2019, Prime Minister Modi received a massive mandate to form the government again
with renewed vigor under his leadership, we commit ourselves to serve the people of India with all humility and dedication. People of India have unequivocally given their Janadesh for not just political stability and also reposed faith in our economic policy. This is the budget to boost their incomes and enhance their purchasing power. Only through higher growth we can achieve that and have our youth gainfully and meaningfully employed. Let our businesses be innovative, healthy, and solvent with use of technology. For today's youth, born at the turn of the century, for every member of the scheduled castes and scheduled tribes who seek a better life, for every woman wishing to stand up and get counted, for every individual from the minority sections of our society, this budget aims to give and have your aspirations and hopes addressed. We wish to open up vistas for a vibrant and dynamic economy with a gentle breeze of new technology. This vibrant India shall be a caring society which shall attend to its weak, the old, and the vulnerables among its citizens. During 2014-19, our government brought in a paradigm shift in governance. This shift was characterized by a twin focus: fundamental structural reform and inclusive growth. Fundamentals of the economy are strong, and that has ensured macroeconomic stability. Inflation has been well contained. Banks saw a thorough cleaning up of accumulated loans of the past decade, and then they were recapitalized. Companies were provided an exit through the IBC. Several steps on the formalization of the economy were taken up. Of the structural reforms, the Goods and Services Tax, the GST, has been the most historic in our country. Its chief architect is not with us today. I pay homage to the visionary leader, late Sri Arun Jaitley. At the time of rollout of GST, he had said, and I quote, It will be an India where the center and states will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. The unanimity of the constitutional amendment and the consensus of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics for the nation's interest. With the GST, neither the state nor the center loses its sovereignty. In contrast, they will pool their sovereignty on decisions on indirect taxes, unquote. True to this vision for the historic structural reform, the Goods and Services Tax has been gradually maturing into a tax that has integrated the country economically. It has consolidated numerous taxes and cesses to one tax and facilitated formalization of the economy. It has resulted in the efficiency gains in logistic and transport sectors. The turnaround time for trucks has witnessed a substantial reduction to the tune of 20% due to abolition of checkposts in the GST. The dreaded Inspector Raj has also vanished. It has also led to a significant benefit to MSME by way of enhanced threshold and composition limit. The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially. Through several rate reductions, an annual benefit of 1 lakh crore rupees has been extended to consumers. It amounts to 10% reduction
in overall tax incidence. An average household now saves about 4% of its monthly spends on account of reduced GST rates. During this phase of maturing, GST did face certain challenges. This was natural, as transition was daunting. GST Council has been proactive in resolving issues during the transition. In the last 2 years, we have added more than 60 lakh new taxpayers. A total of about 40 crore returns were filed. 800 crore invoices were uploaded and 105 crore e-way bills were generated. There has been extensive engagement with stakeholders. A simplified new return system is being introduced from 1st April 2020. A former Prime Minister had once voiced a concern that the fruits of the welfare schemes were not reaching the intended citizens. The common and deserving citizen was only receiving 15 paise of every rupee sent to him. Guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, our government and our Prime Minister added manifold speed and scaled up the implementation of schemes and programs that directly benefited the poor and the disadvantaged. I wish to list out only a few as examples. 1. Welfare schemes with direct benefit transfer embedded in them. 2. Sanitation and water as provision of basic needs and as a measure of preventive health care. 3. Healthcare through Ayushman Bharat. Clean energy through Ujjwala and solar power. 4th. 5th. Financial inclusion, credit support, insurance protection to vulnerable sections and pension scheme. 6th, digital penetration with broadband and UPI. And finally, affordable housing for all through PMAY, the Prime Minister Awas Yojana. The milestones achieved are unprecedented, globally recognized and benchmarked against international indices. This strategy changed the established order of a few individuals, cornering most of the benefits, and was appreciated by the people. This had immensely positive outcomes. We have moved on from a growth rate of just over 4% in 1950s to 6% in 80s and in the 90s. However, during 2014 and 19, we clocked a growth of 7.4% on average, with inflation averaging around 4.5% itself. It is worthwhile to note that inflation was close to 9% in the and 16, India was able to raise 271 million people out of poverty, which we all should be proud of. We are now the 5th largest economy of the world. India's foreign direct investment got elevated to the level of 284 billion US during 2014 and 19 from 190 billion US that came in during the years 2009 to 14. The central government debt that has been the bane of our economy got reduced in March 2019 to 48.7% of GDP from a level of 52.2% in March 2014. Just between 14 and 19, I recall this figure, the central government's debt in March 2019 has come down to 48.7% of the GDP
from a level of 52.2% in March 2014. With this backdrop, our government shall work towards taking the country forward so that we can leapfrog to the next level of health, prosperity, and well-being. We shall strive to bring ease of living to every citizen. I am mindful of presenting this budget in the backdrop of two cross-cutting developments. One, proliferation of technologies, especially analytics, machine learning, robotics, bioinformatics, and artificial intelligence. And also, number two, the number of people in the productive age group, that is 15 to 65 years of age in India, being at its highest. So these are the two cross-cutting streams, keeping in the backdrop while we are talking about the budget today. This combination is special to contemporary India. Across the world, if there is a shrinking of globalization, equally there is a debate on the efficacy of monetary policy too. The efforts we have made in the last 5 years and the energy, the enthusiasm and the innovation of our youth are the ignition required to push forward. This Indian spirit of entrepreneurship, which weathered several storms over the centuries, inspire and motivate us. We recognize the need to support and further energize this spirit. This budget is woven around three prominent themes. One, aspirational India, in which all sections of the society seek better standards of living with access to health, education, and better jobs. Two, economic development for all, indicated in the Prime Minister's exhortation of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. This would entail reforms across swathes of the economy. Simultaneously, it would mean yielding more space for the private sector. Together, they would ensure higher productivity and greater efficiency. And three, ours shall be a caring society that is both humane and compassionate. Antyodaya is an article of faith. So, I repeat, this budget is woven around three prominent themes: aspirational India, economic development, and a caring society. The digital revolution, which has placed India in a unique leadership position globally, will see the next wave. We shall aim to achieve seamless delivery of services through digital governance, to improve physical quality of life through national infrastructure pipeline, risk mitigation through disaster resilience, social security through pension and insurance penetration. Each one of these initiatives and their components would be benchmarked to international standards, and the indices would be announced soon. Before I move to elaborate on each of these three themes, I wish to recite a small verse in Kashmiri. सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यूं, सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यूं, दल मंज फोलवून पंपोश ह्यूं, नवजवान अन हुंद वूशन खुमार ह्यूं, म्योन वतन च्योन वतन सोन वतन Nundboni Vatan. I'll read this in Hindi, not as a poem, but for the meaning. Hamara Vatan,
खिलते हुए शालीमार बाग जैसे। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे। हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा। नौजवानों के गर्म खून जैसा। नौजवानों के गर्म खून जैसा। मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। It is everything that we do here, everything that we speak through the budget, and everything that this government everything that this government does with the guidance and leadership of the Prime Minister is for this Pyara Watan. This poem, I must mention, is a poem written by Pandit Dinanath Kaul, who's a Sahitya Academy awardee. Honorable Speaker, sir, I now move to the first of my theme, which is the aspirational India. I shall cover programs and plans related to agriculture, irrigation, and rural development. That's my first under the aspirational India theme. Second, wellness, water, and sanitation. That's the second under aspirational India. And the third is education and skills. I move to talking about agriculture, irrigation, and rural development. Our government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022. We have provided energy sovereignty through Kusum and input sovereignty through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. We have provided resilience for 6.11 crore farmers insured under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Focus on cultivation of pulses, expansion of micro-irrigation through Krishi Sinchai Yojana have raised the self-reliance of the country. Provision of any annual supplement of the income to the farmer directly is done through PM Kisan. Connectivity through PM GSY Gram Sadak Yojana, financial inclusion have helped raise farm incomes. Prosperity to farmers can be ensured by making farming competitive. For this, farm markets need to be liberalized. Distortions in farm and livestock markets need to be removed. Purchase of farm produce, logistics, agri-services need copious investments. Substantial support and hand-holding of farm-based activities such as livestock, apiary, and fisheries need to be provided for. Farmers desire integrated solutions covering storage, financing, and processing and marketing. Adopting sustainable cropping patterns and bringing in more technology are integral to our plan. All this and more can be achieved through working with and in cooperation with the states. The following 16 action points indicate our focus. We propose to encourage those state governments who undertake implementation of following model laws already issued by the central government. My first of the action points, 16 action points, but the first one is to encourage those state governments who undertake implementation of following model laws which are already passed and issued by the central government. First, Model Agricultural Land Leasing Act of 2016. Model Agricultural Produce and Livestock Marketing Act of 2017. Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services Promotion and Facilitation Act of 2018. So 3 model agriculture related laws we would like state governments to consider favorably.
Second of the 16 action points. Water stress related issues are now a serious concern across the country. Our government is proposing comprehensive measures for 100 water stressed districts. Our government is proposing comprehensive measures for 100 water stressed districts. Third of the 16. In the budget speech of July 2019, I had stated that Annadata can be Urja Data also. The PM Kusum scheme removed farmers' dependence on diesel and kerosene and linked pump sets to solar energy. Now I propose to expand the scheme to provide 20 lakh farmers for setting up standalone solar pumps. Further, we shall also help another 15 lakh farmers solarize their grid-connected pump sets. In addition, a scheme to enable farmers to set up solar power generation capacity on their fallow and barren lands and to sell it to grid would be operationalized. Speaker, sir, this is a major step forward in which we are saying that farmers, if they have fallow or barren lands, now will be helped to set up solar power generation units so that they can then sell that which is being generated, solar power, to the grid, and through the grid, having given the solar power from their barren land, they will be able to make a living out of their barren land also. Fourth of the 16. Our government shall encourage balanced use of all kinds of fertilizers, including the traditional organic and other innovative fertilizers. This is necessary step to change the prevailing incentive regime which encourages excessive use of chemical fertilizers. So this is an important point. I'd like to repeat it. This is a necessary step to change the prevailing incentive regime which encourages excessive use of chemical fertilizers. Honorable Speaker, sir, in Tamil Nadu, there was a very wise old woman saint poet who lived more than 3,000 years ago. And she had used every letter of the Tamil alphabet to teach children moral stories. Not stories, moral lines. Each line was only 3-worded ones. They were very simple ones. They are called Ati Chudi, written by Avayar. Whilst talking about effective use of land, taking care of your land, removing weeds and making sure you tend to it properly, she had just used 3 words in a little sentence, which says it all. And that's exactly what our Prime Minister is aiming to achieve, so that the farmlands are used with proper manure, not excessive manure, and limited water to grow their grains. Bhumi Tirutti Un is the line from Attichudi, which was said by a saint poet, a woman called Avayar. Bhumi Tirutti Un. First, tend to your land, take care that you're not excessively leaving it, and then trying to take a crop out of it. So the 5th point out of my 16 action points. India has an estimated capacity of 162 million metric tons of agri warehousing, cold storage, reefer van facilities, and so on. NABARD will undertake an exercise to map and geotag them. In addition, we propose creating warehousing in line with Warehouse Development and Regulatory Authority WDRA norms. Our government will provide viability gap funding for setting up such efficient warehouses in the block or taluk level. This can be achieved where states can facilitate with land and are on PPP mode. Food Corporation of India and Central Warehousing Corporation shall undertake such warehouse building on their own land too. 6th action point. As a backward linkage,
a village storage scheme is proposed to be run by SHGs. This will provide farmers a good holding capacity and reduce their logistics cost. Women SHGs can avail of Mudra or NABARD assistance and regain their position as Dhanya Lakshmi. We've heard of Dhana Lakshmi often, and many of us are familiar with Dhanya Lakshmi, and I'm sure many of us do recall the days when women in the villages were the ones who kept the seed for the entire village, and they would distribute seeds as and when a farmer required it. So we would like to restore women SHG groups to play that role or at the village level as Dhanya Lakshmis, being assisted by Mudra and being assisted by NABARD. To build a seamless national cold supply chain for perishables inclusive of milk, meat and fish, the Indian Railways will set up a Kisan Rail through PPP arrangements. There shall be a refrigerated coaches in express and freight trains as well, so that perishable goods can be quickly, easily within the country transported, and the benefit will accrue to the farmers. Krishi Udan will be launched by the Ministry of Civil Aviation, not just trains. Krishi Udan will be launched by the Ministry of Civil Aviation on international and national routes. This will immensely help improve value realization, especially in Northeast and in the tribal districts. Horticulture sector. So this is very important. Point number 9 of the 16th. Horticulture sector with its current produce. It's a very important point, sir. Horticulture sector with its current produce of 311 million metric ton exceeds the production of food grains. Horticulture exceeds the production of food grains. For better marketing and export, we propose supporting states which, adopting a cluster basis, will focus on one product, one district, so that a high focus is given at the district level for products in horticulture to really gain that momentum. 10th of the 16 action points. Integrated farming systems in rain-fed areas shall be expanded. Multi-tier cropping, beekeeping, solar pumps, solar energy production in non-cropping season will be added. Sir, I had mentioned in my July budget, zero budget natural farming. That shall also be included in our activities. The portal on Jaivik Kheti, online national organic products market, will also be strengthened. So the next point, the 11th, financing on negotiable warehousing receipts, ENWR, has already crossed more than 6,000 crores. Financing on negotiable warehousing receipts. This will be integrated with National Agriculture Market, the electronics one. The next point is the 12th of the 16. Non-banking finance companies and cooperatives are active in the agriculture credit space. The NABARD refinance scheme will be further expanded. Agricultural credit target for the year 2021 has been set at 15 lakh crores, 15 lakh crores, agricultural credit availability. All eligible beneficiaries of PM Kisan will be covered under the KCC, Kisan Credit Card Scheme. 13th of the 16th. Our government intends to eliminate foot and mouth disease, brucellosis in cattle, and also what is called the PPR in sheep, which is a French expression. Sorry for those who know French, I'll try to pronounce. Peste des petits ruminants. PPR
in sheep and goat by 2025. So foot and mouth disease, brucellosis in cattle, and also PPR in sheep and goat by 2025 will be eliminated. Coverage of artificial insemination shall be increased from the present 30% to 70%. Manrega would be dovetailed to develop fodder farms. Further, we shall facilitate doubling of milk processing capacity from 53.5 million metric tons to 108 million metric tons by 2025. From 53.5 million metric tons of milk to 108 million metric tons by 2025. 14th point, blue economy. Our government proposes to put in place a framework for development, management and conservation of marine fishery resources. 15th, youth in coastal areas benefit through fish processing and market. By 2022-23, I propose raising fish production to 200 lakh tons. Propose raising fish production to 200 lakh tons. Growing of algae, seaweed and cage culture will also be promoted. So this coming point is very important. Our government will involve youth in fishery extension work through 3,477 Sagar Mitras and 500 fish farmer producer organizations. We hope the rural youth, particularly those who are in the coastal areas and inland fishing areas, will work as Sagar Mitras and also form 500 fish farmer producer organizations. You know that we already have a farmer producer organization, which is FPO. Now we are expanding it to cover fish farmer producer organizations. 16th and the last action point, sir, under Deen Dayal Antyodaya Yojana for alleviation of poverty, 58 lakh SHGs have been mobilized. We shall further expand on SHGs in this regard too. Now, for the fund allocation, for the 16 different steps that I have announced, they are being stated under two broad categories. They are being stated under two broad categories. For the sector comprising of agriculture, allied activities, irrigation and rural development, an allocation of 2.83 lakh crores has been made for 2020-21, and it is divided, among other things, for agriculture, irrigation and allied activities, 1.6 lakh crores. For rural development and Panchayati Raj, 1.23 lakh crores. Both put together, it is about 1.73 lakh, 2.8 lakh, 83 lakh crores, 2.83 lakh crores. Wellness and water and sanitation is the second under Aspirational India. I said my three themes: Aspirational India, Economic Development and Caring Society. Under each, I state three which contain specific programs. Aspirational India, already I have mentioned about the rural development and so on. Now I talk of wellness, water and sanitation. We have a holistic vision of healthcare that translates into wellness for citizens. Mission Indradhanush has been expanded to cover 12 such diseases, including 5 new vaccines. Fit India movement is a vital part of fight against non-communicable diseases coming out of lifestyle issues. A very focused safe water Jal Jeevan mission and comprehensive sanitation program Swachh Bharat mission have been launched to support the health vision that would reduce the disease burden on the poor. Presently, under PM Jan Arogya Yojana, there are more than 20,000 empaneled hospitals who help in Ayushman Bharat. We need more such hospitals to be empaneled in Tier 2 and Tier 3 cities for poor people
in these areas to benefit from them. It is therefore proposed to set up a viability gap funding window for setting up hospitals in PPP mode. In the first phase, those aspirational districts will be covered. We know there are 112 of them. So those aspirational districts from 112 that we have, where presently there are no Ayushman empaneled hospitals, will be given priority. So from 112 of aspirational districts, those which don't have an empaneled hospital for Ayushman treatments will be given the first priority, so that in Tier 2 and Tier 3 we have more such hospitals. This would also provide large-scale employment opportunities to youth. Proceeds from taxes on medical devices. This is very interesting. It has a bearing on what I will be saying during taxation, the Part B. Proceeds from taxes on medical devices would be used to support this vital health infrastructure which will get built in the aspirational districts. Using machine learning and artificial intelligence in the Ayushman Bharat scheme, health authorities and the medical fraternity can target diseases with an appropriately designed preventive regime. TB harega, desh jeetega. TB harega, desh jeetega. This campaign has been launched. I propose to strengthen this campaign to realize our commitment to end tuberculosis by 2025. I propose to expand also Jan Aushadhi Kendra scheme to all districts, offering 2,000 medicines and 300 surgicals by 2024. I have provided for the health sector about 69,000 crores, that is inclusive of 6,400 crores for Prime Minister Jan Arogya Yojana. So now the important point on sanitation. Our government is committed to ODF Plus. We know ODF is already there, launched, successfully sort of covered, saturation reached. But our government is committed to ODF Plus in order to sustain ODF behavior, because it has a lot of impact. If behavioral patterns don't remain consistent, it can have a negative bearing. So our government is committed to ODF Plus in order to sustain ODF behavior and to ensure that no one is left behind. Now more needs to be done towards liquid and grey water management. Focus would also be on solid waste collection, source segregation and processing. The total allocation for Swachh Bharat mission is about 12,300 crores for this year, 2020-21. Aiming to provide piped water supply to all households, Prime Minister announced from the Red Fort the Jal Jeevan mission. Our government has approved 3.6 lakh crore for this mission. 3.60 lakh crore for this mission is being approved. This scheme also places emphasis on augmenting local water resources, recharging existing sources, and will promote water harvesting and desalination. Cities over 1 million population will be encouraged to meet this objective during the current year itself. During the year 2021, this scheme would be provided a budget exclusively of 11,500 crores. So I now move to the third under Aspirational India, education and skills. The third and the final item under Aspirational India is education and skills. By 2030, India is set to have the largest working age population in the world. Not only do they need literacy, but they need both job and life skills. Dialogues have been held with state education ministries, members of parliament and other stakeholders about education policy. Over 2 lakh suggestions were also received. The new education policy will be announced soon. It is felt that our education system needs greater inflow of finance to attract talented teachers,
innovate and build better labs. Therefore, steps would be taken to enable sourcing external commercial borrowings and FDI so as to deliver higher quality education. Students in general stream, as opposed to those in services or technology stream, sciences and technology stream, need their employment opportunities improved. About 150 higher education institutions will start apprenticeship embedded degree diploma courses by March 2021. The government proposes to start a program whereby urban local bodies across the country would provide internship opportunities to fresh engineers for a period up to 1 year. So local bodies, as you know, do undertake a lot of public work program, and their manpower is also limited. But yet, young engineers who are ready to serve for the purpose of learning how it is to work with the government are also going around seeking opportunities. So here we have created an opportunity by saying urban local bodies should now give opportunity for fresh engineers so that they can help them plan better and in turn also learn as an intern under the local bodies. So this is for a period of 1 year that we've opened up. In order to provide quality education to students of deprived section of the society as well as those who do not have access to higher education, it is proposed to start a degree-level, full-fledged online education program. This shall be offered only by institutions who are ranked within top 100 in the National Institutional Ranking Framework. Initially, only a few such institutions would be asked to offer such programs. Sir, India should also be a preferred destination for higher education. Hence, under its Study in India program, an IND SAT exam is proposed to be held in Asian and African countries. It shall be used for benchmarking foreign candidates who receive scholarships for studying in Indian higher education centers. A national police university and a national forensic science university are being proposed in the domain of policing science, forensic science and cyber forensics. There is a shortage of medical doctors. There is a shortage of qualified medical doctors, both general practitioners as well as specialists. In order to meet this requirement, it is proposed to attach a medical college to an existing district hospital in PPP mode. Those states that fully allow facilities of the hospital to the medical college and wish to provide land at a concession would be able to receive viability gap funding from the center. Details of the scheme would be worked out soon, so we aim to have at the district level with hospitals which are being extended for medical college training and also for producing more doctors, viability gap funding will also be extended. So the National Board of Examination imparts PG medical qualification, diploma and fellow of National Board, DNB and FNB. The government will therefore encourage large hospitals with sufficient capacity to offer resident doctors the DNB and FNB courses under the National Board of Examinations. There exists a huge demand for teachers, nurses, paramedical staff and caregivers all abroad. There exists a huge demand abroad for teachers, nurses, paramedical staff and caregivers. However, their skill sets many a time do not match the employer's standards and therefore need to be improved. I propose that a special bridge course be designed by the Ministries of Health, Skill Development together with professional bodies to bring in equivalence. Language requirements of various countries need also to be included. All these should be achieved through a special training package. Our government proposes to provide about 99,300 crores
for education sector in 2021 and about 3,000 crores for skill development. So I move to the second theme, economic development. Aspirational India, economic development and caring society. I'm now talking on economic development. And in economic development, industry, commerce and investment are the ones which come first in our. So the most important thing as an introduction I'd like to say here, the guilds of Saraswati Sindhu civilization and the Harappan seals are remarkable. Saraswati Sindhu civilization is about 4,000 before the Common Era. They belong, the seals in particular, belong to 3,300 BCE, before the Common Era. Words from the Indus script, which are all hieroglyphs, have been deciphered. Words from those hieroglyphs have been deciphered. Interesting words which we need to know when we're talking about commerce and industry. Commerce and trade-related words show how India for a millennia has been a continuing civilization with rich skills in metallurgy, rich skills in trading and so on. Sreni is a word found in the Harappan seals, which means guild. Seti is a word found in the Harappan seals, which means wholesale merchant. Seti was a wholesale merchant in the Sindhu civilization, Saraswati Sindhu civilization. Poddar is an affair of metal into treasury. And also, India is a continuing maritime power in terms of commerce and industry. Sakara Kholmi is using word which shows blacksmithery and also iron and tin smithery existed that time. So India's commerce, India's industry, India's trade in such materials which were all unique to India have existed and continues to exist over the millennia. So entrepreneurship has always been the strength of India. That's the point I wanted to explain. I'm sure many members already know it and therefore they are a bit restless. Entrepreneurship has always been the strength of India. Even today, young men and women have given up greener pastures elsewhere to contribute to India's growth. They are risk-taking and come up with disruptive solutions to festering challenges. Equally, established old industries are resetting themselves in a changing global domestic situation. Global and domestic situation. We recognize the knowledge, skills and risk-taking capacities and capabilities of our youth. He is no longer a job seeker. He is a creator of jobs. Now we wish to create more opportunities and remove roadblocks from this path. I propose to set up an investment clearance cell that will provide end-to-end facilitation and support, including pre-investment advisory, information related to land banks, and facilitate clearances at the center and also in the state level. It will work through a portal. There is a case for maximizing the benefits of three separately developing economic activities. The upcoming economic corridors, revitalization of manufacturing activities, and technology and the demands for aspirational classes. We have to benefit from their convergence. Hence, it is proposed to develop 5 new such smart cities in collaboration with states and in PPP mode. Such sites would be chosen that offer the best choices in terms of the aforementioned principles. India needs to manufacture networked products that will make it a part of global value chains. This in turn gets more investment and generates more employment for our youth. Electronics manufacturing industry is very competitive
and India has shown its cost advantages. The potential of this industry in job creation is immense. India needs to boost domestic manufacturing and attract large investments in the electronics value chain. Here I propose a scheme focused on encouraging manufacture of mobile phones, electronic equipment, and semiconductor packaging. The details will be announced sooner. With suitable modifications, this scheme can be adapted for manufacturing of medical devices too. India, sir, imports significant quantity of technical textiles worth $16 billion every year. To reverse this trend and to position India as a global leader in technical textiles, a national technical textiles mission is proposed with a 4-year implementation period from 2020-21 to 23-24 at an estimated outlay of 1,480 crores. Honorable Speaker, sir, Honorable Speaker, sir, from the Red Fort, our Prime Minister spoke about quality and standards when he spoke of zero defect, zero effect manufacturing. In September last year, I had called for a time-bound adoption by industry of all necessary mandatory technical standards and their effective enforcement. All ministries during the course of this year would be issuing quality standard order. So to achieve higher export credit disbursement, a new scheme, NIRVIC, is being launched, which provides for higher insurance cover, reduction in premium for small exporters, and simplified procedure for claim settlements. It is proposed to digitally refund to exporters. That was NIRVIC. I'm coming to a different point now. It is proposed to digitally refund to exporters duties and taxes levied at the center, state, and local levels, such as electricity duties, VAT, the VAT, on fuel used for transportation, which are not getting exempted or refunded under any other existing mechanism. This scheme for reversion of duties and taxes on exported products will be launched from this year itself. Honorable Speaker, it is the vision of our Prime Minister that each district should develop as an export hub. Efforts of the centre and state governments are being synergized and institutional mechanisms are being created in order that every district becomes an export hub. Government e-marketplace, GEM, is moving ahead for creating a unified procurement system in the country for providing a single platform for procurement of goods, services, and works. It offers a great opportunity for medium and small and micro enterprises. 3.24 lakh vendors are already on this platform. It is proposed to take its turnover to 3 lakh crores. I propose to provide about 27,300 crores for development and promotion of industry and commerce for the year 2020-2021. So under economic development, the second point that I want to focus on is a very important point, and it is on infrastructure. Honorable Speaker, in his Independence Day speech of 2019, the Prime Minister has highlighted that 100 lakh crores would be invested on infrastructure for the next 5 years. As a follow-up measure, I had launched the National Infrastructure Pipeline on 31st December 2019 of 103 lakh crore worth projects. It consists of more than 6,500 projects across sectors and are classified as per their size and stage of development. These new projects will include housing, safe drinking water,
access to clean and affordable energy, health care for all, world-class educational institutions, modern railway stations, airports, bus terminals, metro, railway transportation, logistics and warehousing, irrigation projects, etc. The National Infrastructure Pipeline envisions improving the ease of living for each and every individual citizen in the country. It will also bring in generic and sectoral reforms in development, operation and maintenance of these infrastructure projects. A huge employment opportunity exists for India's youth in construction, operation and maintenance of infrastructure. National Skill Development Agency will give special thrust to infrastructure-focused skills and their development opportunities. I propose to set up a project preparation facility for infrastructure projects. This program would actively involve young engineers, management graduates, and economists from our universities. It is also proposed to direct all infrastructure agencies of the government to involve youth power in startups. They will help in rolling out value-added services in quality public infrastructure for citizens. A national logistics policy will soon be released. Among other things, it will clarify the role of union government, state government, and also the key regulators. It will create a single window e-logistics market and focus on generation of employment, skills, and making MSMEs competitive. So also, accelerated development of highways will be undertaken. This will include development of 2,500 kilometer access control highways, 9,000 kilometers of economic corridors, 2,000 kilometers of coastal and land port roads, and 2,000 kilometers of strategic highways. The Delhi-Mumbai Expressway and two other packages would be completed by 2023. Chennai-Bengaluru Expressway would also be started. So the fast-track mechanism encourages us towards greater commercialization of our highways so that NHAI can raise more resources. I propose to monetize at least 12 lots of highway bundles of over 6,000 kilometers before 2024. In carrying out its duty, the Indian Railways performs a service to the nation. Within 100 days of assumption of this government, it has commissioned 550 Wi-Fi facilities in as many railway stations. It has eliminated unmanned level crossings and aims to achieve electrification of 27,000 kilometers of tracks. This will call, obviously, for optimization of costs. Railways have small operating surplus. About Indian Railways, there are 5 measures, among other things, that I wish to highlight. Setting up a large solar-powered capacity. Setting up a large solar power capacity alongside the rail tracks on the land owned by railways. A proposal is under consideration. 4 station redevelopment projects and operation of 150 passenger trains would be done through PPP mode. The process of inviting private participation is underway. More Tejas type trains will connect iconic tourist destinations. High-speed train between Mumbai and Ahmedabad would be actively pursued. 148-kilometer Bengaluru suburban transport project at a cost of 18,600 crores would have fares on metro model. Central government would provide 20% of the equity, and it will also facilitate external assistance up to 60% of the project cost. Sir, our seaports
need to be more efficient. Technology has to be used to improve performance. A governance framework keeping with global benchmarks needs to be put in place. This government would consider corporatizing at least one major port and subsequently its listing on the stock exchanges. Inland waterways received a boost. Inland waterways received a boost in the last 5 years. The Jal Vikas Marg on National Waterway 1 will be completed. Further, the 890-kilometer Dhubri-Sadiyar connectivity in Assam will be done by 2022. Honorable Speaker, sir, developing waterways has its impact on the ecosystem on both the banks of the river. Our Prime Minister has conceptualized Arth Ganga. Plans are afoot to energize economic activity along the river banks. Air traffic has been growing rapidly in the country as compared to global average. 100 more airports would be developed by 2024 to support the Udaan scheme. It is expected that the air fleet number shall go up from the present 600 to 1,200 during this time itself. I propose to provide 1.7 lakh crores for transport infrastructure in 2021. So taking electricity to every household has been a major achievement of this government. However, the distribution sector, particularly the DISCOMs, are under financial stress. The ministry intends to promote smart metering. I urge all the states and union territories to replace conventional energy meters by prepaid smart meters in the next 3 years. Also, this would give consumers the freedom to choose the supplier and the rate as per their requirements. So this is a very important step in reaching electricity to all people. This would give consumers the prepaid meters, the smart meters, would give consumers the freedom to choose the supplier and the rate as per their requirements. Further measure to reform DISCOMs would be taken. I propose to provide 22,000 crores to power and renewable energy sector for the year 2020-21. So now I come to oil and natural gas. In the upstream sector, oil and gas, the open acreage licensing policy, OALP, is a success, having awarded 1,37,000 square kilometers for exploration to private sector and to the CPSCs. City gas distribution rights are also awarded. Further, it is proposed to expand the national gas grid from the present 16,200 kilometers. At the moment, it is 16,200 kilometers only. We propose to expand it to reach 27,000 kilometers. To deepen the gas markets in India, further reforms will be undertaken to facilitate transparent price discovery and also ease of transactions. So I come to talking about the new economy now. The new economy is based on innovations that disrupt established business models. Artificial intelligence, Internet of Things, 3D printing, drones, DNA, data storage, quantum computing, etc. are all rewriting the world economic order. India has already embraced a new paradigm such as the sharing economy with aggregator platforms displacing conventional businesses. Government has harnessed new technologies to enable direct benefit transfers and financial inclusion on a scale like never before. It's now a cliche, data is the new oil. And it is true that analytics, fintech,
and Internet of Things are changing the way we deal with our lives. To take advantage of this, I propose to bring out soon a policy to enable private sector to build data center parks throughout the country. Building data center parks throughout the country. It will enable our firms to skillfully incorporate data in every step of their value chains. Our vision is that all public institutions at the Gram Panchayat level, such as Anganwadis, health and wellness centers, government schools, PDS outlets, post offices, and police stations will all be provided with digital connectivity. So, the fiber to home FTTH connections through BharatNet will link 100,000 Gram Panchayats this year itself. 1 lakh Gram Panchayats this year itself will be connected to the optical fiber FTTH program. It is proposed, therefore, to provide 6,000 crores to BharatNet program 2020-21. We need to expand the base for knowledge-driven enterprises. Intellectual property creation and protection will play an important role. Several measures are proposed in this regard, which will benefit the startups. A digital platform would be promoted that would facilitate seamless application and capture IPRs. Also, in an institute of excellence, a center would be established that would work on the complexity and innovation in the field of intellectual property. Honorable Speaker, sir, knowledge translation clusters would be set up across the different technology sectors, including new and emerging sectors. For designing, fabrication, and validation of proof of concept, and further scaling up technology clusters, harboring such test beds and small-scale manufacturing facilities would be established. Mapping of India's genetic landscape is critical for next-generation medicine, agriculture, and for biodiversity management. To support this development, we will initiate 2 national-level science schemes to create a comprehensive database. The government proposes to provide early life funding, including seed fund, to support ideation and development of early-stage startups. So critical to our quantum technology. Quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cybersecurity with widespread applications. It is expected that a lot of commercial applications would emerge from theoretical constructs which are developing in this area. It is proposed to provide an outlay of 8,000 crores over a period of 5 years for the national mission on quantum technologies and applications. India would probably be the 3rd biggest and pioneering nation if we are able to break into this technology of quantum technology related to computing and other applications. Sir, I come to the 3rd theme, the last theme in my part A, after which, of course, I will speak of a few others. Caring society. In our 3rd theme, we focus on women and child, social welfare, culture and tourism, and also on environment and climate change. Women and child and social welfare, sir. I am pleased to inform the House that Beti Bachao, Beti Padhao has yielded tremendous results. Gross enrollment. Sir, if you hear the data, I think it's important not to politicize issues related to women. Beti Bachao, Beti Padhao has yielded tremendous results. Gross enrollment ratio of girls across all levels of education is now higher than boys. At elementary level, it is 94.32% as against
89.28 for boys. At secondary level, it is 81.32% as compared to 78% for boys. At higher secondary level, girls have achieved a level of 59.70 compared to only 57.54% for boys. So girls are actually under Beti Padhao benefiting from the scheme. Health of mother. Sir, health of mother and child are correlated closely. Nutrition is a critical component of health. To improve nutritional status of children 0 to 6 years, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers, our Prime Minister launched a Poshan Abhiyan in 2017-18. More than 6 lakhs Anganwadi workers are equipped with smartphones to upload the nutritional status of more than 10 crore households. Sir, Honorable Speaker, sir, for the benefit of those who may not have heard this line, because it's very important, I'd like to repeat it. To improve the national nutritional status of children in 0 to 6 years of age, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers, our Prime Minister launched a Poshan Abhiyan in 2017-18. More than 6 lakh Anganwadi workers are equipped with smartphones to upload the nutritional status of more than 10 crore households. The scale of this development is unprecedented. So the next is, women's age of marriage was increased from 15 years to 18 years in 1978 by amending erstwhile Sharda Act of 1929. As India progresses further, opportunities open up for women to pursue higher education and careers. There are imperatives of lowering MMR, maternal mortality rate, as well as improvement of nutrition levels. Entire issue about age of girl entering motherhood needs also to be seen in this light. I propose to appoint a task force that will present its recommendations in 6 months' time. I propose to provide 35,600 crores for nutrition-related programs for the financial year 2020-2021. So in continuing with our government's commitment to welfare of women, this budget provides for about 28,600 crore for programs that are specific to women. Our government is determined that there shall be no manual cleaning of sewer systems or septic tanks. Suitable technologies for such tasks have been identified by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The ministry is working with urban local bodies for the adoption of these technologies. We will now take this to its logical conclusion. We will now take it एक मिनट बंद to मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा आपको बजट पर पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा, उस समय आप बोलना, और दादा विशेष रूप से आपको बोलने की परमिशन दूंगा. Thank you, sir. No. Thank you, Speaker, sir. We will now take this to its logical conclusion through legislative and institutional changes. Financial support for wider acceptance of such technologies will be provided. In furthering this government's commitment towards the welfare of scheduled castes and other backward classes, I propose a budget provision of about
85,000 crores for 2020-21. For scheduled castes and other backward classes, I repeat, I propose a budget provision of about 85,000 crores for 2020-21. In furthering the development and welfare of scheduled tribes, sir, I provide in the budget for the year 2020-21 an amount of 53,700 crores. For scheduled tribes, I repeat, we provide 53,700 crores. This government is mindful of the concerns of senior citizens and Divyang. Accordingly, an enhanced allocation of about 9,500 crores is being provided for 2020-21. So now I move to the second of the third topic theme that I have, which is culture and tourism. Our government proposes to establish an Indian Institute of Heritage and Conservation under Ministry of Culture. It shall have the status of a deemed university to start with. Acquisition of knowledge in disciplines such as museology and archaeology are essential for collecting and analyzing scientific evidence of such findings and for dissemination through high-quality museums. Currently, lack of trained manpower is a handicap for both these disciplines, and therefore it also has a negative impact on tourism. 5 archaeological sites would be developed as iconic sites with on-site museums. They are Rakhi Ghadi, Haryana; Hastinapur, Uttar Pradesh; Shiv Sagar in Assam; Dholavira, Gujarat; Adichanallur, Tamil Nadu. I repeat, 5 archaeological sites would be developed as iconic sites with on-site museums. They are Rakhi Ghadi, Haryana; Hastinapur, Uttar Pradesh; Shiv Sagar, Assam; Dholavira, Gujarat; and Adichanallur in Tamil Nadu. Our Prime Minister in January 2020 announced recuration of the Indian Museum in Kolkata, which is the oldest in the country. In the historic Old Mint Building, Kolkata, a museum on numismatics and trade will also be located. 4 more museums from across the country shall be taken up for renovation and recuration so that a world-class experience can be offered to our visitors. Our government shall also support setting up of a tribal museum in Ranchi, Jharkhand. So I spoke about the Sindhu-Saraswati civilization. A maritime museum would be set up at Lothal, the Harappan Age maritime site near Ahmedabad, by the Ministry of Shipping. I propose to provide 3,150 crores for Ministry of Culture for the year 2021. Sir, India has moved up from the rank 65 in 2014 to 34 in 2019 in the Travel and Tourism Competitive Index, the World Economic Forum's index. Foreign exchange earnings grew 7.4% to 1.88 lakh crores for the period January to November 2019 from 1.75 lakh crores. From 1.75 lakh crores, it has gone up to 1.88 lakh crores. Growth of tourism directly relates to growth and employment. States have a critical role to play. I expect the state governments to develop a roadmap for certain identified destinations and formulate financial plans during 2021 against which specified grants will be made available to the states from the center in the year 2020-21. For purpose of tourism promotion, sir,
I propose to allocate 2,500 crores for 2020-2021. So I now move to the third under this theme, environment and climate change. In September 2019, the Prime Minister has launched the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure with its secretariat in Delhi. This global partnership is the second such initiative, international initiative, after the launch of, as members would recall, after the launch of International Solar Alliance. That was in 2015. This global partnership will help in addressing a number of sustainable development goals, as also the aims of Sendai framework. It will enhance climate change adaptation with a focus on disaster resilient infrastructure. India submitted its nationally determined contribution under the Paris Agreement in 2015 on a best effort basis, keeping in mind the development imperative of our country. Its implementation effectively begins from 1st January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors. Honorable Speaker, sir, I interrupt here only to say this is a very important point, because a lot of our commitments which have been given in the Paris Climate Change Conference on best effort basis will start kicking in from 1st January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors by the departments and ministries concerned through a normal budget process. They will do it through the normal budgeting process. There are, however, yet thermal power plants that are old and their carbon emission levels are very high. For such power plants, we propose that utilities running them would be advised to close them if their emission is above the preset norms. The land so vacated can be put to alternative uses. In large cities having population above 1 million, clean air is a matter of concern. I'm sure a lot of our members will be keen to know about what steps are being taken for cities and clean air. The government proposes, Honorable Speaker, to encourage such states that are formulating and implementing plans for ensuring cleaner air in cities above 1 million. Parameters for the incentives would be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Allocation for this purpose is 4,400 crores for 2020-2021. So there is something which, before I move to talking about governance, because the three themes that I put before the members is coming to a close, I fall back on the wise words of Thiruvalluvar. And this, it's very important, sir. We have heard several words of wisdom from Thiruvalluvar. Thiruvalluvar has spoken about what a good country is. What a good country is actually got to be like. And what makes up for jewels of a good country. I first read it in Tamil, then I'll give you the meaning. Pini inmai, selvam, vilai inbam, emam. Pini inmai, selvam, vilai inbam, emam. Ani enba, nattin vaindu. Ani enba, nattiv vaindu. There are 5, what Thiruvalluvar says, which are jewels for a good country. The first is pini inmai, meaning the country will have to be without epidemics or illnesses, major illnesses. The second, he says, it should be wealthy. It should have wealth. It should have wealth. Vilai. It should also have velachal. In the sense, from the fields it should have good crop. It should have inbam. It should have happiness. It also should have emam, which is security and safety of the country. So the 5 jewels. 5 jewels. Pini inmai, selvam, vilai inbam, emam.
and Inbam. Prime Minister Modi, Ayushman Bharat for health for all is penny in mind. Selvam, wealth creators will be respected in this country. Wealth creators will be respected in this country. Selvam. Vilaychal, having good crops. Farmer PM Kisan, doubling of income, use of fertilizers and proper growth leads to surplus in horticulture, surplus in Silhan, surplus now, probably also in Dalhan. So the Prime Minister's program at health, at creating and giving respect for wealth creators and improving agricultural output and looking at ease of living, bringing happiness to people, and above all, the fifth aim of this country's national security. You have enough proof to say national security is the top priority of this government. So, if Tiruvallur, आपको कुछ होना चाहिए, तमिल में पढ़ा है, बैठ जाइए. That's right, sir. If Tiruvallur identified the 5 jewels for a good country, those 5 jewels are the ones which Prime Minister Modi is now addressing through his program. For health, Ayushman, for wealth creators, a respectable and honorable climate, good crops, happiness through ease of living, and national security. So, now with all that said, the bouquet of flowers which I would like to give every citizen with trust and faith, had flowers under aspirational India, had aspirational India, a set of flowers under aspirational India, had set of flowers under environment and economy and also commerce and industry. A third set of flowers was under the caring India, caring society that we want to have. Now this bouquet of flowers is held by 2 hands, governance and other financial institutions. I speak about governance, sir, which is very important. Good governance is what is going to be giving faith to the people. Honorable Speaker, sir, all the while I have explained the color and composition of the bouquet of flowers, schemes and programs. They were grouped under aspirational India, economic development and caring India. Now I speak about the 2 hands that will hold them. One such a hand is governance, which is clean, corruption-free, policy-driven, and good in its intent. And most importantly, trusting in faith, trusting every citizen, the aspirational youth, the hard-working women. Honorable Speaker, sir, trusting every citizen, I repeat, trusting every citizen, the aspirational youth, the hard-working women, the risk-taking entrepreneur, the ever-hopeful and untiring farmer, or the wise and old senior citizen. Many among them are taxpayers. Others may not be taxpayers now. Our Prime Minister has laid before us ease of living as a goal to be achieved on behalf of all citizens. An important aspect of both ease of living and ease of doing business is fairness, efficiency of tax administration. We wish to enshrine, this is important, Honorable Speaker. This is important, sir. Money being allocated to various programs is finance of this country. We will
This is very important, sir. Businesses should have the confidence that things are being fair and the efficiency of the tax administration. We wish to enshrine in the statutes a taxpayer charter through this budget. A taxpayer charter is getting institutionalized into the statutes. It's going to be enshrined as a part of our laws. That's building trust. A taxpayer statute will be a part of our, a taxpayer charter will be a part of our statutes. Our government would like to reassure taxpayers that we remain committed to taking measures so that our citizens are free from harassment of any kind. We mean it, and we are willing to put it in the law. Tax harassment cannot be tolerated when we are talking about citizens and wealth collectors. There has been a debate about building into statutes criminal liability for acts that are civil in nature. This is important, sir. There has been a debate about building into statutes criminal liability for acts that are civil in nature. Hence, for Companies Act, certain amendments are proposed to be made that will correct this. Similarly, other laws would also be examined where such provisions exist, and attempts would be made to correct them also. The government intends to introduce major reforms in recruitment to non-gazetted posts in governments and public sector banks. At present, candidates have to appear for multiple examinations conducted by multiple agencies at different points of time for similar posts. This places enormous burden on time, effort, and cost for young people. To mitigate the hardship so faced, it is proposed to set up a national recruitment agency as an independent, professional, specialist organization for conduct of computer-based online common eligibility test for recruitment to non-gazetted posts. A test center in every district, particularly in the aspirational districts, would be set up. For the speedy disposal of commercial and other disputes, government has constituted various tribunals and specialized bodies. It is proposed to evolve a robust mechanism for appointment, including direct recruitment to these bodies to attract best talents and professional experts. A stable and predictable business environment is a key objective of this government. There is also a strong argument for ensuring that contracts are honored. India has a sound framework related to Contracts Act. We shall deliberate upon strengthening it. There is a growing need, sir, for Indian statistical system to meet the challenges of real-time monitoring of our increasingly complex economy. Data must have strong credibility. The proposed new national policy on official statistics would use latest technology, including artificial intelligence. It would lay down a roadmap towards modernized data collection, integrated information portal, and a timely dissemination of information thus collected. I am happy to inform that India will host G20 presidency in the year 2022. That is the year of 75th anniversary of independence of the Indian nation. During this presidency, India would be able to drive considerably the global economic and development agenda. For this historic occasion, I allocate a sum of 100 crore to begin the preparations. 100 crore rupees. Sir, Northeastern region has a very high priority in government's developmental agenda. Government is ensuring smooth access to financial assistance from multilateral and bilateral funding agencies to help introduce innovative and global best practices. Central government has effectively used an online portal
to reduce gestation period of online. This has improved the flow of funds to the Northeast region. The government is fully committed to supporting the all-round development of the newly formed Union Territories of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. Accordingly, an amount of 30,757 crores has been provided for the financial year 2020-21. An amount of 5,958 crores has been provided for the Union Territory of Ladakh. So that was one hand, which is governance. Now I come to the other, which is the financial sector. If governance was described as one of the pair of the hands holding the bouquet consisting of aspirational India, economic development and caring India, the other is the financial sector. A clean, reliable, robust financial sector is critical to the economy. A clean, reliable and robust financial sector is critical to the economy. In our efforts to achieve the US $5 trillion economy, the financial architecture should evolve. The financial architecture should keep evolving and move from strength to strength. We had earlier approved consolidation of 10 banks into 4. In the last few years, the Government of India has infused about 3,50,000 crores by way of capital into public sector banks for both regulatory and growth purposes. Governance reforms would be carried out in these banks so that they become more competitive. A few among them will be encouraged to approach capital market to raise additional capital. Sir, I wish to inform this august House that robust mechanism is in place to monitor the health of all scheduled commercial banks and that depositors' money is absolutely safe. I wish to underline this point, sir, that this August House should know that robust mechanism is in place to monitor the health of all scheduled commercial banks and that depositors' money is absolutely safe. Further, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has been permitted to increase deposit insurance coverage for a depositor, which is now standing at 1 lakh of rupees to 5 lakh per depositor. Sir, the insurance cover for a depositor is at 1 lakh now. Now we are raising it to 5 lakh for each depositor. Sir, to strengthen the cooperative banks, amendments to the Banking Regulation Act are proposed for increasing professionalism, enabling access to capital, and improving governance and oversight for sound banking through the RBI. The limit for NBFCs to be eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests under the SARFAESI Act 2002 is proposed to be reduced from 500 crores to asset size 100 crores only, or loan size from existing 1 crore to 50 lakhs. Therefore, we feel many of the small NBFCs which can come for debt recovery would be far easily done for smaller companies. In the last few years, the government has taken concrete steps to bring our banking system to be robust. However, there is a need for greater private capital. Accordingly, it is proposed to sell the balance holding of Government of India's IDBI Bank to private, retail and institutional investors through the stock exchange. There is a need, sir, to take further steps to bring in transparency and greater professionalism in public sector banks. The government will take appropriate measures towards this end. So, to help easy mobility while in jobs, we wish to infuse into the universal pension coverage with auto-enrollment. Also, we wish to place such mechanisms
which can enable interoperability and provide safeguards for the accumulated corpus. Regulating role of PFRDAI, which is the pension regulatory body, requires strengthening. Necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority of India Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from the PFRDAI. This would also enable establishment of a pension trust by the employees other than from the government. I am confident that this will motivate citizens to plan for their old age. So this section, which I will now speak, will relate to the MSMEs. MSMEs are vital to keep the wheels of our economy moving. They also create jobs, innovate, and also risk takers, and they are risk takers. Several measures for the MSMEs have been taken in the past few years. There are more steps proposed in this budget also. I propose to make necessary amendments to the Factor Regulation Act 2011. This will enable NBFCs to extend invoice financing to the MSMEs through TREDS, thereby enhancing the economic and financial sustainability. Working capital credit remains a major issue for the MSMEs. It is proposed to introduce a scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of MSMEs. This subordinate debt to be provided by banks would count as quasi-equity and would be fully guaranteed through the Credit Guarantee Trust for medium and small entrepreneurs. The corpus of the CGT MSC would accordingly be augmented by the government. More than 5 lakh MSMEs have benefited from restructuring of debt permitted by RBI in the last year. The restructuring window was to end on 31st March 2020. Government has asked RBI to consider extending this window till 31st March 2021, one more year, so that whoever wants, they can go and approach. An app-based invoice financing loans product will be launched. This will obviate the problem of delayed payments and consequential cash flow mismatches for the MSME. Many mid-sized companies are successful domestically, but not in export markets. For selected sectors such as pharmaceuticals, auto components and others, we propose to extend hand-holding support for technology upgradations, R&D, business strategy planning, and so on. A scheme of 1,000 crore rupees will be anchored in the Exim Bank together with the SIDBI. Both these institutions would contribute 50 crores each. This 100 crore would be achieved towards equity and technical assistance. Debt funding of 900 crores from banks would be made available. Sir, financial markets. I would like to give a few of the major steps and initiatives being taken by the government for the financial markets. Last year in my budget speech, sir, I had mentioned about deepening the bond markets. To achieve the aspirational growth rate, we would require flow of capital in our financial system. A lot of work has been done on this in consultation with the RBI. Honorable Speaker, sir, I am pleased to inform this House of the developments. Certain specified categories of government securities would be opened fully for non-resident investors, apart from being available to domestic investors also. The limit for FPI in corporate bonds, currently at 9% of outstanding stocks, will be increased to 15% of the outstanding stock of corporate bonds. To improve investors' confidence and to expand the scope of credit default swaps, we propose to formulate a legislation to be placed soon before this House for laying down a mechanism for netting of financial contracts. The debt-based exchange-traded fund, the ETF,
recently floated by the government was a big success. Government proposes to expand this by floating a new debt ETF consisting primarily of government securities. This will give retail investors access to government securities as much as giving an attractive investment for pension funds and long-term investors. So to address the liquidity constraints of the NBFCs and the HFCs, this was very much talked about between July and December last year, 2019. Liquidity constraints was very frequently mentioned to us. So to address liquidity constraints of the NBFCs and the housing finance corporations, post the Union Budget 2019-20, the government formulated a partial credit guarantee scheme for the NBFCs. To further the support of providing liquidity, a mechanism would be devised. Government will offer support by guaranteeing securities that are so floated. Infrastructure financing. Government's commitment for investment in infrastructure was reiterated when 103 lakh crore national infrastructure pipeline projects were announced. I would also like to inform that about 22,000 crores of rupees has already been provided as support for infrastructure pipeline. On December 31st, if honorable members would recall, a national pipeline consisting of more than 6,500 projects were announced. 22,000 crore has already been provided as support to infrastructure pipeline. This would cater for equity support to infrastructure finance companies such as the IIFCL and a subsidiary which is of NIIF. So two institutions, they would leverage it as permissible to create financing pipeline of more than 1 lakh crores. This would create a major source of long-term debt financing for infrastructure projects and fulfill a long-awaited requirement. So the IFSC, GIFT City, has the potential to become a center of international finance as well as a center for high-end data processing. GIFT IFSC has an approved free trade zone for housing vaults. It already has 19 insurance entities, 40 banking entities. It has also provided for setting up of precious metals, testing laboratories for them, and refining facilities also. With the approval of the regulator, GIFT City would now set up an international bullion exchange in GIFT City IFSC as an additional option for trade by global market participants. This will enable India to enhance its position worldwide, create jobs in India, and will lead to better price discovery of gold. Sir, in the recent years, there has been a surge in trading volumes of Indian rupee in the offshore financial centers. The government and the RBI has taken various measures to permit rupee derivatives to be traded in the International Financial Services Center at GIFT City, Gujarat. So just a very quick word on disinvestment. Listing of companies on stock exchanges brings discipline, and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. Initial public offer. Sir, fiscal management. The 15th Finance Commission. The 15th Finance Commission has given its first report pertaining to financial year 2020-2021. In the spirit of cooperative federalism, I am pleased to announce that we have in substantial measure accepted the recommendations of the Commission.
the Commission would submit its final report to the President during the latter part of the year for 5 years beginning 2021-22. It is decided to transfer to the GST Compensation Fund balances due out of the collection of the years 2016-17 and 17-18 in 2 installments. Hereinafter, transfers to the fund would be limited only to the collection by way of GST compensation cess. A fundamental overhaul of centrally sponsored schemes and central sector schemes is necessary so that we can align them with emerging social and economic needs of tomorrow and to ensure that scarce public resources are spent optimally. Recently, there has been a debate over transparency and credibility of the projected fiscal numbers. Let me assure the House that the procedure adopted is compliant with the FRBM Act. This is also consistent with the practices hitherto followed. However, for greater clarity, I have enumerated those central government debt that are not part of the market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. I'd like to repeat this line, sir. I'd like to repeat this line, sir. For greater clarity, I have enumerated those central government debts that are not part of market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. Servicing of interest and repayment of these debts, as hitherto done, are done out of Consolidated Fund of India. So now I come to some numbers. Revised estimates of expenditure for the financial year 2019-20 are at a level of 26.99 lakh crores and the receipts are estimated at 19.32 lakh crores. We have estimated nominal growth of GDP for the year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. Accordingly, we have estimated, sir, let me finish, sir. So we have estimated the nominal growth. We have estimated the nominal growth of GDP for year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. Accordingly, receipts for the year 2020-21 are estimated at 22.46 lakh crores. And keeping in mind commitment of the government towards various schemes and the need for improvement of the quality of life, level of expenditure has been kept at 30.42 lakh crores. Sir, during the year, government has unfailingly worked towards keeping up capital expenditure. Actually, there is substantial enhancement. All the flagship schemes of the government have been fully provided for. Details may be seen in the annexes to the printed copy of my speech. Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Recently, government has undertaken very significant tax reforms for boosting investment. However, expected tax buoyancy will take time. We estimate
a fiscal deficit of 3.8% in RE 2019-20 and 3.5% for BE 2020-2021. This estimation is consistent with the government's abiding commitment to macroeconomic stability, and it comprises of A, 3.3 for year 2019-20 and 3 for the 2020-2021 budget estimate, and B, Section 4.2 of the FRBM Act, which provides for a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications. Therefore, I have taken a deviation of 0.5% consistent with the Section 4.3 of the FRBM Act, both for RE 2019-20 and BE 2020-21. Accordingly, the return path is being laid before the Parliament as a part of the medium-term fiscal policy cum strategy statement. This fiscal path commits us to the path of fiscal consolidation without compromising the needs of investment out of public funds. Accordingly, net market borrowings for the year 2019-20 would be 4.99 lakh crore, and for the year 2020-21 it would be 5.36 lakh crores. A good part, this is very important, sir, a good part of the borrowings of the financial year 2020-21 would go towards capital expenditure of the government that has been scaled up by more than 21%. As I had previously mentioned, another about 22,000 crores have already been allocated for equity to fund certain specified infrastructure finance companies who would leverage it manifold and provide much needed long-term finance for infrastructure sector. That should spur the growth impulses in the economy. So I would now move to part B of my speech. Thank you. Direct tax. Thank you. No, thanks. Sir, part B of my speech starts with direct tax, sir. Honorable Speaker, sir, our government has spearheaded radical fiscal measures to ensure that Indian economy continues to tread the path of high growth. There are times when countries are competing with each other like never before to become the most attractive destination for doing business. Therefore, to make sure that India stays globally competitive and a favored destination for investment, we took a bold historic decision of reducing the corporate tax rate for new companies in the manufacturing sector to an unprecedented level of 15%. Similarly, for the existing companies, the rate has also been brought down to 22%, which is the lowest in the world now. This will enable companies to expand their businesses and make fresh investments in the coming future. Though we will have loss of substantial revenue due to these measures in the short run, I am certain that our economy will reap huge returns on this score in due course. So one quick verse from Raghuvamsa, written by Kalidasa. Prajanam eva bhutyartham sattabhyo balim agrahit. Prajanam eva bhutyartham sattabhyo balim agrahit. Sahasra gunam utsrashtam adatte hi rasam ravihi. Surya, the sun, collects vapor from little drops of water. He collects only from little drops of water. So does the king.
They give back copiously. They collect these from the people only for their well-being. So the collection of taxes or the vapor from the water drops are only from small trickles, but they all go back to the people manifold. So the purpose of taxation and also the way in which it is done has been voiced even then. And this in Raghuvamsa refers to the Purvaja or the elders belonging to Ikshvaku dynasty, father of Ayodhyapati Rama, Dilipa, grandfather. It refers to Dilipa, the king. So in continuation of the reform measures already taken so far, the tax proposals in this budget will introduce further reforms to stimulate growth, simplify tax structure, bring ease of compliance, and reduce litigation. Personal income tax and simplification of taxation. So in the interim budget of 2019, our government exempted individuals having income up to 5 lakh of rupees from paying any income tax. Presently, an individual pays 20% on income between 5 lakh and 10 lakh and 30% on income between 10 lakh. That's the prevailing matrix. Further, currently the Income Tax Act is riddled with various exemptions and deductions which make compliance by the taxpayer and administration of Income Tax Act by the tax authorities a burdensome process. It is almost impossible for a taxpayer to comply with income tax law without taking the help from professionals. In order to provide significant relief to the individual taxpayers and to simplify the income tax law, I propose to bring a new simplified personal income tax regime wherein income tax rates will be significantly reduced for the individual taxpayers who forego certain deductions and exemptions. Under the new regime, sir, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20% comes down to 10%. Sir, the next example. For income between 7.5 lakhs to 10 lakhs, I earlier said about 5 to 7.5, now I'm saying about 7.5 to 10 lakh. So for income between 7.5 lakh to 10 lakh, he or she will pay at the reduced rate of 15% only against the current prevailing 20%. Sir, similarly, for the income between 10 lakhs to 12.5 lakhs, presently the tax is 30%. For income between 10 lakh to 12.5 lakh, the present prevailing rate is 30%. That is now being brought down to 20% only. Sir, the income between, I spoke about 10 to 12.5 lakhs. Now, 12.5 lakhs to 15 lakhs will be taxed. At the moment, 12.5 to 15 lakhs is taxed at 30%. Now, those earning between 12.5 lakhs to 15 lakhs will be charged at 25% only. Sir, incomes above 15 lakhs will be continued at 30%, but no exemptions at all. Those earning up to 5 lakhs shall not pay any tax either in the old regime or in the new regime. So the proposed tax structure will provide significant relief to taxpayers and more so to those in the middle class. I just want to very clearly read out 0 to 2.5 lakhs exempt now, will be exempt in the new scheme also. 2.5 lakhs to 5 lakhs,
5% now will be 5% in the new tax rate. 5 to 7.5 lakhs, 20% now will become 10% in the new rate. 7.5 to 10 lakhs, 20% now will be 15% in the new. 10 to 12.5 lakhs, 30% now will now come to 20%. 12.5 to 15 lakhs, 30% now, 25% in the new rate. Above 15 continues at 30%. In the new tax regime, sir, substantial tax benefit will accrue to a taxpayer depending upon the exemptions and deductions claimed by him. For example, just to make it clear, for example, a person earning 15 lakh of rupees in a year and not availing any deductions whatsoever will pay 1,95,000 as compared to 2,73,000 that is paying now in the old regime. So his tax burden shall be reduced by 78,000 rupees. That will be the reduction in the tax that he has to otherwise pay. Then this is the example of somebody who earns 15 lakhs. He would still be a gainer. He would still be a gainer in the new regime even if he was taking deduction of 1.5 lakh under various sections of Chapter 6A of the Income Tax Act under the old regime. The new tax regime, sir, shall be optional for taxpayers, so there's no compulsion. Those who want to be in the old regime can continue to be in the old regime, in the old rates, in the whole sets of exemptions and deductions. But those who wish to come into the new are welcome to come into the new. An individual who is currently availing more deductions and exemptions under the Income Tax Act may choose to avail them and continue to pay the tax in the old regime. A new personal tax income tax rate will entail estimated revenue foregone of 40,000 crores per year. We have also initiated measures to pre-fill income tax return so that an individual who opts for the new regime would need no assistance from an expert to file his return and pay income tax. Sir, I will have to put this observation here. In order to simplify income tax system, I have reviewed all the exemptions and deductions which got incorporated in the income tax legislation over the past several decades. In fact, I have that list with me, sir. I have reviewed all the exemptions and deductions which got incorporated in the income tax legislation over the past several decades. It was surprising to know that currently more than 100 exemptions and deductions of different nature are provided in the Income Tax Act. No wonder the code is like this, the book. I have removed around 70 of them. I have removed around 70 of them in the new simplified regime. We will review and rationalize the remaining exemptions and deductions in the coming years, with a view to further simplifying the tax system and lowering tax rates. Sir, the dividend distribution tax. Currently, companies are required to pay dividend distribution tax on the dividend paid to its shareholders at the rate of 15% plus applicable surcharge and cess in addition to the tax payable by the company on its profits. It has been argued that the system of levying DDT results in increase in tax burden for investors and especially those who are liable to pay tax less than the rate of DDT if the dividend income is included in their income. Further, non-availability of credit of DDT to most of the foreign investors in their home country results in reduction of rate of return on equity capital for them. In order to increase the attractiveness of the Indian equity market and to provide
relief to a large class of investors, I propose to remove the DDT and adopt the classical system of dividend distribution tax, under which companies would not be required to pay DDT. The dividend shall be taxed only in the hands of the recipients at their applicable rates. Further, in order to remove the cascading effect, I also propose to allow deduction for the dividend received by holding company from its subsidiary. The removal of DDT will lead to estimated annual revenue foregone of 25,000 crores. This is another bold move, sir, which will further make India an attractive destination for investment. Sir, a concessional rate for electricity generation companies. In order to give boost to the manufacturing sector, new provisions were introduced in September 2019, offering a concessional corporate tax rate of 15% to the newly incorporated domestic companies in the manufacturing sector, which start manufacturing by March 31st, 2023, the corporate rate cut which happened in September. In order to attract investment in power sector, I propose to extend the concessional corporate tax rate cut down to 15% to new domestic companies engaged in the generation of electricity as well. So that corporate rate, which came down to 15% for the new manufacturing companies, will now be available even for power generation companies too. So tax concession for foreign investments. In order to incentivize the investment by foreign sovereign wealth funds of foreign governments in the priority sector, I propose to grant 100% tax exemption to their interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified sectors before 31st March 2024 with a minimum lock-in period of 3 years. Honorable Speaker, sir, in order to make available foreign funds at lower cost, I propose to extend the period of concessional withholding rate of 5% under Section 194 LC for interest payment to non-residents in respect of monies borrowed and bonds issued up to 30th June 2023. I also propose to extend the period up to 30th June 2023 for lower rate of withholding of 5% under Section 194 LD for interest payment to foreign portfolio investors and qualified foreign investors in respect of bonds issued by Indian companies and government securities. I further propose to extend the concessional rate of withholding of 5% under Section 194 LD to the interest payment made on the municipal bonds. In order to incentivize listing of bonds at IFSC exchange, I propose to further reduce the withholding rate from 5% to 4% on interest payment on the bonds listed on its exchanges. Startups. Startups have emerged as an engine of growth for our economy. Over the past year, our government has taken several measures to handhold them and support their growth. During their formative years, startups generally use Employee Stock Option Plan, the ESOP, to attract and retain highly talented employees. ESOP is a significant component of compensation for these employees. Currently, ESOPs are taxable as perquisites at the time of exercise. This leads to cash flow problem for the employees who do not sell the shares immediately and continue to hold the same for long term. In order to give a boost to the startup ecosystem, I propose to ease the burden of taxation on the employees by deferring the tax payment by 5 years
or till they leave the company, or when they sell their shares, whichever is the earliest. Further, an eligible startup having turnover of up to 25 crores is allowed a deduction of 100% of its profits for 3 consecutive assessment years out of 7 years. If the total turnover does not exceed 25 crore rupees. In order to extend this benefit to larger startups also, I propose to increase the turnover limit from existing 25 crores to 100 crores. Moreover, considering the fact that in the initial years, a startup may not have adequate profit to avail this deduction, I propose to extend the period of eligibility for claim of deduction from the existing 7 years to 10 years. So the corporate rate cut in September has led to a lot of cooperatives who are asking for level playing field. Cooperative societies play an extremely important role in our economy in facilitating access to credit, procurement of inputs, and marketing of products to their members. These cooperatives are currently taxed at the rate of 30% with surcharge and cess. As a major concession, and in order to bring parity between cooperative societies and corporates, I propose to provide an option to the cooperative societies to be taxed at 22% plus 10% surcharge and 4% cess with no exemption or deductions. Further, I also propose to exempt these cooperative societies from alternative minimum tax, the AMT, just like companies under the new tax regime are exempted from minimum and alternative tax, the MAT. MAT for corporate tax, corporates were removed, and similarly now AMT for the cooperatives is also being moved. Medium and small and micro enterprises, the MSMEs, currently businesses having turnover of more than 1 crore rupees are required to get their books of accounts audited by an accountant. In order to reduce the compliance burden on small retailers, traders, shopkeepers who comprise the MSME sector, I propose to raise by 5 times the turnover threshold for audit from the existing 1 crore to 5 crores. So up to 5 crores, there wouldn't be a requirement for auditing of their accounts. Further, in order to boost less cash economy, I propose that the increased limit shall apply only to those businesses which carry out less than 5% of their businesses and business transactions in cash. So we wish to move to greater digitization. Affordable housing. For realization of the goal of housing for all and affordable housing, in the last budget, I had announced an additional deduction of up to 1,50,000 rupees for interest paid on loans taken for the purchase of an affordable house. The deduction was allowed on housing loans sanctioned on or before 31st March 2020. In order to ensure that more persons avail this benefit and to further incentivize the affordable housing, I propose to extend the date of loan sanction for availing this additional deduction by 1 more year. Further, in order to boost the supply of affordable houses in the country, a tax holiday is provided on the profits earned by developers of affordable housing projects approved by 31st March 2020. In order to promote the affordable housing projects, I propose to extend the date of approval of affordable housing projects for availing the tax holiday by 1 more year again. I propose to extend the date of approval of affordable housing projects for availing this tax holiday by 1 more year. So next is the concession to real estate transactions. Currently, while taxing income from capital gains, business profits, and other sources
in respect of transactions in real estate, if the consideration value is less than the circle rate by more than 5%, the difference is counted as income both in the hands of the purchaser and the seller. In order to minimize hardship in the real estate transaction and provide relief to the sector, I propose to increase the limit from 5% to 10%. Charity institutions. Acknowledging the important role played by the charitable institutions in the society, the income of these institutions is fully exempt from taxation. Further, donations made to these institutions are also allowed as deduction in computing taxable income of the donor. Currently, a taxpayer is required to fill the complete details of the in the donation done in the income tax return for availing deduction. In order to ease the process of claiming deduction for donation, it is proposed to pre-fill the donee's information in taxpayer's return on the basis of information of donations furnished by the donee. This would result in hassle-free claim of deduction for the donation made by the taxpayer. Further, in order to claim the tax exemption, the charity institution had to be registered with the income tax department. In the past, the process of the registration was completely manual and scattered all over the country. In order to simplify the compliance for the new and existing charity institutions, I propose to make the process of registration completely electronic, under which a unique registration number shall be issued to all new and existing charity institutions. To facilitate the registration of the new charity institution, which is yet to start their charitable activities, I propose to allow them provisional registration of 3 years. Faceless appeals. Our government is committed to bringing in transformational changes so that maximum governance is provided with minimum government. In order to impart greater efficiency, transparency, and accountability to the assessment process, a new faceless assessment scheme has already been introduced. Currently, most of the functions of the income tax department, starting from the filing of return, processing of returns, issuance of refunds, and assessment, are performed in the electronic mode without any human interface. In order to take the reforms initiated by the department to the next level and to eliminate human interface, I propose to amend the Income Tax Act so as to enable faceless appeal on the lines of faceless assessment. So faceless assessment was done, now faceless appeals will also be possible. Sir, Honorable Speaker, Vivad se Vishwas scheme. Vivad se Vishwas scheme. No dispute, but only trust scheme. If I can say it in English, no dispute, but trust scheme. Vivad se Vishwas scheme. Sir, in the past, our government has taken several measures to reduce tax litigations. In the last budget, Sabka Vishwas scheme was brought in to reduce litigation in indirect taxes. It resulted in settling over 1,89,000 cases. Currently, there are 4,83,000 direct tax cases. 4,83,000 direct tax cases pending in various appellate forums, Commissioner of Appeals, Income Tax Appellate Tribunal, High Court, Supreme Court, and so on. This year, I propose to bring a scheme similar to the indirect tax Sabka Vishwas scheme for reducing the litigation even in the direct taxes. Under the proposed Vivad se Vishwas scheme,
a taxpayer would be required to pay only the amount of disputed tax and will get complete waiver of interest and penalty provided he pays by 31st March 2020. Those who avail this scheme after 31st March 2020 will have to pay some additional amount, but even then they can come in. The scheme will remain open till 30th June 2020. So the first thing is 31st March 2020, where you just pay the disputed tax amount, no penalty, no interest. In case you don't do it before that, you move over to 30th June, but where you pay some additional amount. Taxpayers in whose cases appeals are pending at any level can benefit from this scheme. I hope that taxpayers will make use of this opportunity to get relief from vexatious litigation process. So losses of merged banks. As part of consolidation of the financial sector, our government has brought out schemes for merger and amalgamation of public sector banks in order to ensure that amalgamated entities are able to take the benefit of unabsorbed losses and depreciation of the amalgamated entities. I propose to make necessary amendments to the provision of the Income Tax Act. Taxpayers' Charter. I mentioned it briefly in Part A. Any tax system requires trust between taxpayers and the administration. This will be possible only when taxpayers' rights are clearly enumerated. Towards this end, and with the objective of enhancing the efficiency of delivery system of the Income Tax Department, I propose to amend the provisions of the Income Tax Act to mandate the Central Board of Direct Taxes, CBDT, to adopt a taxpayer's charter. The details of the contents of the charter will be notified soon. Instant PAN through Aadhaar. In the last budget, I had introduced the interchangeability of PAN and Aadhaar, for which necessary rules were already notified. In order to further ease the process of allotment of PAN, soon we will launch a system under which PAN shall be instantly allotted online on the basis of Aadhaar without any requirement for filling up of detailed application form. Sir, our government brought in the GST as a historic reform of the indirect taxes in 2017. We also took a path-breaking step of simplifying and rationalizing corporate tax in September 2019. More importantly, we offered a rate of corporate tax which perhaps is the lowest in the world. Continuing on this path, we have now put the personal income tax at its lowest ever rate and totally removed the DDT at the company's hands. Further, the direct taxes are now the lowest, simplest and the smoothest. Direct tax on the startups have also seen many reformatory steps in quick succession. Even ease of compliance is seeing unprecedented changes. Last but not the least, personal interface with tax administration is at the minimum level. So last, indirect tax. Indirect tax, sir. As I mentioned earlier in Part A of my speech, reforms are continuing in the GST. A simplified return shall be implemented from 1st April 2020. This is under the pilot run. It will make return filing simple with features like SMS-based filing for nil return, return pre-filling, improved input tax credit flow, and overall simplification. Refund process has been simplified and has been made fully automated with no human interface. Electronic invoice is another innovation wherein critical information shall be captured electronically in centralized system. It will be implemented in a phased manner starting from this month itself on optional basis. It will facilitate compliance and return filing.
Several measures have been taken for improving compliance. That has been a worry for many of the states. Aadhaar-based verification of taxpayers is being introduced. This will help in weeding out dummy or non-existent unit. Dynamic QR code is proposed for consumer invoices. GST parameters will be captured when payment for purchases is made through the QR code. A system of cash reward is envisaged to incentivize customers to seek invoice. Deep data analytics and AI tools are being used for crackdown on GST input tax credit refund, and other frauds, and to identify all those who are trying to game the system. Invoice and input tax credit matching is being done, wherein returns having mismatch more than 10% or above a threshold are identified and pursued. Significant policy level changes have also been made. GST rate structure is also being deliberated upon so as to address issues like inverted duty structure. Customs. A number of measures have been taken for ease of doing business. India's quantum leap in the trading across border parameter of ease of doing business rankings by the World Bank is a testimony to these efforts. India's rank on this parameter improved from 146 to 80 in 2018 and further to 68 in 2019. Measures have also been taken for providing a level playing field to our domestic manufacturers, particularly the MSME sector, and for securing our borders. It has been observed that imports under free trade agreements are on the rise. Undue claims of FTA benefits have posed threats to domestic industry. Such imports require stringent checks. In this context, suitable provisions are being incorporated in the Customs Act. In the coming months, we shall review rules of origin requirements, particularly for certain sensitive items, so as to ensure that FTAs are aligned to the conscious direction of our policy. Speaker, sir, we are also strengthening provisions relating to safeguard duties, which are applied when surge in imports causes serious injury to domestic industry. Amended provisions shall enable regulating such surge in imports in a systematic way. The provisions for checking dumping of goods and imports of subsidized goods are also being strengthened for ensuring level playing field for domestic industry. These changes are in line with international best practices. Exemptions from customs duty have been given in the public interest from time to time. However, a number of these have outlived their utility or have become outdated. On review, certain exemptions are being withdrawn. Remaining customs duty exemptions shall be comprehensively reviewed by September 2020 for taking a view on their relevance. I propose to crowdsource suggestions for such reviews. Suggestions would also be invited in respect of the customs laws and procedures for aligning them with the needs of changing times. Sorry. Labor-intensive sectors in MSME
are critical for employment generation. Cheap and low quality imports are impediment to our growth. Special attention has been taken to put measured restraint on import of these items which are being produced by our MSMEs with better quality. Keeping in view the need of the sector, customs duty is being raised on items like footwear and furniture. Our policy of Make in India has started giving dividends. Need more water. Our policy of Make in India has started giving dividends. India is now making world-class goods and exporting such products. We have made considerable progress in medical equipments too. Thank you. We have made considerable progress in medical equipment too. Till a few weeks back, we were dependent on imports for medical equipment. Now, not only we are manufacturing medical equipment, but also exporting them in large quantities. This sector deserves further fillip. Government has also been committed to provide health services to all. Ayushman Bharat has made it possible to achieve the twin objectives of giving impetus to the domestic industry and also to generate resources for health services. I propose to impose a nominal health cess by way of duty of customs on the imports of medical equipment, keeping in view that these goods are now being made significantly in India. I'm finished. No. There are only 2 more pages. To achieve the twin objectives of giving impetus to the domestic industry and also to generate resources for health services, I propose to impose a nominal health cess. I propose to impose a nominal health cess by way of duty of customs on the import of medical equipment. Keeping in view that these goods are now being made significantly in India, the proceeds of this cess shall be used for creating infrastructure. So I think I will lay the rest of the pages, sir. Please consider us read. Thank you. माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज अपने अपने स्थान बैठे आप। आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारामन जी स्टेटमेंट सभा पटल पर रखें। Sir, item number 3, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त विधेयक पुनर्स्थापना 2020। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2020. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 जनवरी 2020 को 3 फरवरी 2020 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने 2020-21 के लिए बजट जो है वो पेश कर दिया है। काफी लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया है बजट के बारे में। लगभग 11 बजे से वो शुरू हुई थी और 1:45 बजे के करीब आकर उनका भाषण समाप्त हुआ है और उन्होंने पटल पर 2020-21 का बजट रख दिया है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अलग तरह से बजट स्पीच की अगर बात करें तो उन्होंने शुरू की है और अलग तरह से अलग अलग पार्ट्स में बजट को उन्होंने बांटा है। तो एक तरह से नए तरीके से ये पूरा बजट जो है वो पेश किया गया है सदन के अंदर। लाइव वो ट्रेडिशनल तरीके से वो बही खाते के तौर पर कपड़े में लपेट कर, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने बजट भाषण के दौरान इस्तेमाल की है सदन के अंदर और जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में बजट को बांटा गया है और जो कहा कि हमारा फोकस जो है एस्पिरेशनल इंडिया पर रहेगा और इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल पर रहेगा और केयरिंग सोसाइटी पर रहेगा, इस तरह से हिस्सों में बांटते हुए उन्होंने बजट को पेश किया। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात जो रवि जी की जा रही थी कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा और इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़नी चाहिए। उन टैक्स स्लैब्स के अंदर जो बड़ा बदलाव किया गया है वो एक तरह से अपने आप में सबसे पहले हम आपसे उसी के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शनल दिया गया है ये टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव कि आप पुराने टैक्स स्लैब के अंदर जो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंदर भी रह सकते हैं और नई टैक्स रिजीम जो है पर्सनल इनकम टैक्स के लिए जो शुरू की जा रही है उसके अंदर भी आप जो है वो स्विच कर सकते हैं। इन दोनों में किस तरह का बदलाव है और किस में कितना फायदा आम आदमी को हो सकता है, सबसे पहले इसी से बात शुरू करेंगे। देखिए, हर आदमी बजट में कुछ देखे ना देखे लेकिन ये जरूर देखता है कि इनकम टैक्स में कितना बदलाव हुआ और मुझे कितना फायदा मिला। अब मैं बहुत सिंपल वे में बोलता हूं, आप जो पुराने टैक्स स्लैब्स थे नेक्स्ट टैक्स स्लैब में अगर आते हैं तो पर सेगमेंट यानी कि 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख, इन सभी में 5,000 से 3,500 रुपए तक की बचत आपकी जेब में आती है जी। ये पहला सार है जो कि पूरे के पूरे स्पीच में या फिर एक आम आदमी की समझ में आता है। दूसरी बात मैं यहां पर करना चाहूंगा कि अब इसमें इन्होंने ऑप्शनल दिया है, जैसे आपको याद होगा कि गिव अप आपको सब्सिडी के लिए दिया गया था, गैस सब्सिडी के लिए, उसी तरीके से यहां पर इस टैक्स स्लैब का भी एक ऑप्शनल दिया गया है कि आप चाहे तो पुराने टैक्स से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे सकते हैं या फिर आप नए टैक्स को अपना सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं आपको नया नहीं अपनाना, पुराना अपनाना है, पुराना नहीं अपनाना, नया अपनाना। ये आपके है कि अगर आप चाहते हैं कि देश हित में ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं तो आप ज्यादा दीजिए और नए टैक्स स्लैब को ले लीजिए। एक बस इसमें अमेंडमेंट है जिसमें कि शायद आपको पुराने टैक्स स्लैब में जो एग्जम्पशन मिलते थे, एग्जम्पशंस जो 1.5 लाख रुपए के मिलते थे, वो नए टैक्स स्लैब में नहीं है, यानी कि उनको आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ये एक बेसिक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मैं आपसे क्लियरिटी चाहता हूं कि एग्जम्पशंस जो थे 80C के अंदर जी, 80C के अंदर जो 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन था वो एग्जम्पशन जो है नए टैक्स स्लैब में नहीं है। ये क्लियर इसमें जो स्पीच में उन्होंने बोला है। बाकी जो डिटेल है वो उनकी स्पीच की जब डिटेल हम लोगों के पास आएगी तो डिकोड करेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने फिलहाल अपनी स्पीच में बोला है उससे क्लियर कट एक इंडिकेशन ये मिलता है। अगर एग्जम्पशंस, रवि जी, ये तो वही बात हो गया कि कान आपने सीधा नहीं पकड़ा, आपने कान घुमा के पकड़ लिया। अगर आप नए टैक्स स्लैब्स के अंदर एग्जम्पशन नहीं दे रहे हैं 1.5 लाख का, तो इसका क्या फायदा है? देखिए, क्या कोई फायदा दिखता है आपको कि होगा आम आदमी को?
देखिए आम आदमी को फिर भी थोड़ा फायदा होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो एजम्पशंस हैं अगर उनको देखें तो उसमें आपके 1.5 लाख में अगर आप 5% लेते हैं तो आपके थोड़े पैसे बचते हैं, यानी कि 5,000 जो आपको बेनिफिट हो रहा था वो शायद 5,000 ना होकर के वापस से 2,500 ही आपकी जेब में आएगा। लेकिन हाँ, बेनिफिट तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा बेनिफिट होगा। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो कह रहे हैं रवि सिंह इस वक्त हमें कि जो टैक्स एग्जम्पशन, जो नया रजीम है जिसके अंदर जो निर्मला सीतारमण ने पढ़कर बताया है, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि उन्होंने कहा है कि एक क्लैरिटी इसमें और हम आपसे चाहते हैं। उन्होंने ये बात कही पहले अपनी स्पीच में कि 0 to 5 लाख तक कोई एग्जम्पशन नहीं, निल आपको टैक्स देना पड़ेगा। पिछली बार भी यही बात थी, लेकिन जहां पर पिछली बार 0 से 2.5 लाख तक 0% लगता था, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5% लगता था। उन्होंने बाद में दोहराया कि नए में यही रहेगा। हाँ। ये जो सिस्टम है कि 1 रुपया भी अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर हो गया एग्जम्पशन लिमिट तो आप 5% के स्लैब में आ जाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ये सही बात है जी। तो एक तरह से उन्होंने जो नया टैक्स रजीम है अपने दर्शकों को बता दें, उन्होंने 7 कैटेगरी के अंदर इसको एक तरह से बांट दिया। 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात, ठीक। और उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख से 12.5 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, 12.5 लाख से 15 लाख तक आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है टैक्सेबल इनकम तो आपको 30% टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। पुराने में 4 कैटेगरी थी, ये भी हम आपको बता दें कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और 2.5 लाख से 5 लाख, अगर 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा आपकी इनकम होगी तो फिर आप 5% में आ जाते थे, अदरवाइज शून्य था। और 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता था। इन 4 कैटेगरीज को एक तरह से 7 कैटेगरीज के अंदर जो है वो नए टैक्स रजीम के अंदर बदला गया है। लेकिन यहां पर बड़ी बात जिस तरह से रवि सिंह बता रहे हैं कि अगर जो एग्जम्पशंस थी 1.5 लाख तक की एग्जम्पशंस, 1.5 लाख रुपए तक की, जिसमें एटीसी के अंदर हमारा LIC की पॉलिसी, इंश्योरेंस की पॉलिसी आ जाती थी, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसके अंदर आ जाता था, आपका जो PF आपने है, NSE आपने लिया है, तो वो सारी एग्जम्पशन जो है, और फीस की, स्कूलों के बच्चों की ट्यूशन फीस की एग्जम्पशन 1.5 लाख के अंदर आती थी जो आप ATC के अंदर ले सकते थे पुरानी रजीम के अंदर। लेकिन नए रजीम में ये एग्जम्पशन अगर खत्म कर दी गई है तो मेरा सवाल फिर से वही है कि कितना फायदा जो है वो इस नई रजीम में आने पर टैक्स पेयर को होगा। और दूसरा सवाल यह कि जो पुरानी रजीम में सेस देना पड़ता था, जो सरचार्ज लगता था, वो सरचार्ज सेस क्या नई रजीम में भी देना होगा? देखिए इसके लिए तो अभी थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। जो स्पीच में उन्होंने बोला है ये उसका डिकोड हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इस वजह से उसकी क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको अभी रुकना पड़ेगा। उसका डिटेल जैसे ही आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। बिल्कुल, तो लेकिन ये बड़ी बात है, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रवि जी पिछले बार भी जो है ये टैक्स स्लैब्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहा था कि क्या 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़े था, लेकिन जो बाद में क्लैरिफिकेशंस आप मामले में आई थी, जब डिटेल्ड में चीजें निकलकर सामने आई थी, तो ये निकल कर आया था कि 2.5 लाख तक तो शून्य ही लगेगा, लेकिन इनकम अगर 1 रुपया भी ज्यादा हो गई तो आप 5% के टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगे। वो स्थिति अभी भी है। और जो दूसरी बड़ी बात रवि सिंह बता रहे हैं कि जो ATC वाली बात है, अगर ATC पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है नया टैक्स स्लैब्स के अंदर, उसका अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा तो ये भी एक बड़ा झटका ही माना जाएगा। और अगर मामूली बचत आपको 500, 1000 रुपए, 700 रुपए की अगर होती भी है तो वो बहुत बड़ा फायदा जो है टैक्स रिलीफ जो है वो आम आदमी को नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो टैक्स नया है वो दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा भी हम इंतजार करेंगे कि डिटेल में अगर चीजें निकलकर सामने आती है। अगर ATC खत्म कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर ये एक झटके की बात, ये बुरी बात जो है वो
टैक्स पेयर्स के लिए, आम आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए हो सकती है। मैं इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको देता हूं, क्योंकि जब उन्होंने स्पीच में बोला तो उन्होंने जो नया टैक्स स्लैब से ऑप्शनल जब बताया कि ऑप्शनल है कि आप पुराने टैक्स स्लैब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नए टैक्स स्लैब में आप जा सकते हैं। उस टाइम पे उन्होंने ये भी किया कि जो नया टैक्स स्लैब है उसमें एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे, यानी कि अगर एग्जेम्पशन यहां पर नहीं मिलेंगे तो वो पूरी तरह से जो 80C के एग्जेम्पशन मिलते हैं उसी की यहां पर बात की जा रही है, ऐसा स्पेकुलेशन यहां पर देखते हैं। तो इस वक्त मतलब इतनी क्लियरिटी है जिस तरह से रवि सिंह बता रहे हैं कि जो उन्होंने एग्जम्पशंस की बात की कि उसको हटाकर ये सब कुछ उन्होंने किया, तो जाहिर तौर पर ये एक झटके वाली बात मैं साफ तौर पर कहूंगा है या नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए पिछली बार भी जब 5 लाख के तक लोगों ने सुना तो बहुत खुश हुए, लेकिन पता चला शाम तक जब मीडिया ने डिकोड किया तो पता चला कुछ खास फायदा नहीं है। अब जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा है। बहुत से लोगों ने तो ये सोचा कि इससे अच्छा कि मेरा 5 लाख से जो इनफैक्ट इसकी वजह से एक नया दौर शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि इंडस्ट्री में देखता हूं तो जो लोगों की सैलरी ज्यादा होती तो वो लोग कहते थे मुझे इंक्रीमेंट मत दीजिए क्योंकि उतने से ज्यादा मेरा टैक्स जा रहा है, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप मुझे थोड़ा सा इंक्रीमेंट आप मेरा कम रखिए, या तो बड़े स्लैब में जाइए नहीं तो उससे कम रखिए। तो यहाँ पर हम ये कहें कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है चीजों को, सिंप्लीफाई करने की बजाय जो निर्मला सीतारमण कह रही है कि हम तो टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। 100 एग्जम्पशंस दी गई हैं पुराने सिस्टम के अंदर, उससे 70 लगभग हमने खत्म कर दी है, बाकियों को भी खत्म करेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ है या फिर ये घुमा फिरा के वो आदमी से लिया तो जाएगा लेकिन उसे इंप्रेशन ये जाएगा कि नहीं ये रिलीफ आपको दिया गया है? देखिए ये एक तरीके का इल्यूजन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही डिस्काउंट मिलता है हम एक बार को ये भूल जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मॉल में जब आप कभी खरीदारी करने के लिए जाते हैं या कोई आपको ऑफर देता है तो आपका ध्यान इसमें होता है कि वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन आप ये कभी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय ये नहीं देखते। जैसे आप बिस्किट खरीदते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो पहले उसका वेट हो सकता है 100 ग्राम होता हो और अब उसका वेट 90 ग्राम हो। तो ये कुछ ऐसी ही बात है जो घुमाकर आपसे कही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा एजम्पशन में फायदा मिला है। 5000 का बेनिफिट मैक्सिमम जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपको ये थोड़ी सी खुशी जरूर होगी कि साल के आपके पास 500 से 700 रुपए आपके महीने के शायद बच सकते हैं। ये हर एक स्लैब्स के अंदर बात है या उन्होंने जो मैक्सिमम स्लैब की बात कही थी, जो 15 लाख वाली बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि 78,000 के आसपास जो है आपको बेनिफिट होगा? नहीं, देखिए 78,000 का बेनिफिट मुझे लगता है शायद टोटलिटी में उन्होंने बोला होगा, क्योंकि आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 लाख तक अभी तक हमारा जो टैक्स था वो टैक्स स्लैब यहाँ पर 10 लाख का था, 20% था पुराने में। और लेकिन जैसे ही आप 5 से 7.5 जाते हैं तो आपको वहां पर 10% यानी उस 5 से 2.5 लाख रुपए में आपको करीब 10% का फायदा मिल रहा है। दूसरे 7.5 से 10 जो कि आपका 20% वो भी था, उसमें आपको 15% यानी सिर्फ 5% का फायदा है। तीसरे टैक्स स्लैब में जाते हैं जिसमें कि 10 से 12.5% है, वो 30% से 20% कर दिया गया है, यानी 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% का फायदा। तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर 10% करते हैं तो 2,500 रुपए, तो यानी कि मैक्सिमम जो है वो 5,000 से 2,500 रुपए। लेकिन 2,500 का फायदा सीधा दिख रहा है, लेकिन ATC हटा दिया तब कहां? तो तब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ATC में जाते हैं तो आपको सिर्फ 1,500 रुपए वहां पर आपके 10% के हिसाब से लगते हैं। 5% में चूंकि अगर वो टैक्स स्लैब जाता है तो वो आपके 750 रुपए होते हैं। तो 2,500 नहीं, लेकिन आपको कम से कम 1,800 से 1,700 से 1,800 रुपए मिलेंगे। 1,700 से 1,800 रुपए का फायदा मिलेगा, जिस तरह से रवि सिंह हमें समझा रहे हैं। तो ये वही बात है जो इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपको मॉल में जाकर कुछ खरीदारी पर छूट कितनी मिलती है, आप उससे बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस बिस्किट का या उस चाय पत्ती का वेट पहले 100 ग्राम था, उसे 90 या 95 ग्राम कर दिया गया है और वहां पर आपको नुकसान हो गया। थोड़ी सा इंतजार हमें और करना पड़ेगा इन चीजों को लेकर, जब तक और क्लियरिटी आती है कि किस तरह से इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर आपकी कैलकुलेशन होगी और आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल दिख रहा है कि थोड़ा सा फायदा है, लेकिन जितने बड़े फायदे की बात जो है आम आदमी शायद सोच रहा था, मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास सोच रही थी, उतना बड़ा फायदा होता फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में नहीं दिख रहा है। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज को मैं इसलिए ऐसा रिलेट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट देखिए तो वो एक इंडिकेशन होता है हमारी इकोनॉमी का या फिर बजट के एक रिफ्लेक्शन का। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि ऐसा हिस्ट्री में देखने को मिला है कि जब बजट होता है तो सैटरडे के दिन स्टॉक मार्केट खोला गया है और स्टॉक मार्केट शायद बंद होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने
देखने को बिल्कुल। मिली है। निफ्टी जो है 151.9 पॉइंट नीचे इस वक्त चल रहा है और सेंसेक्स 472.05% जो है इस वक्त नीचे चल रहा है। सुबह जब रवि जी हम बताएं, हमने कार्यक्रम शुरू किया था प्री बजट, थोड़ा सा डिस्कशन में अपनी सहयोगी करिश्मा के साथ कर रहा था यहां पर कि किस तरह से मार्केट सेंटीमेंट्स पर चलता है और वो सेंटीमेंट्स आते अब दिख रहे हैं। ये सेंटीमेंट्स कहें या फिर जो रियल रिफ्लेक्शन है जो उन्होंने बजट में चीजें कही हैं, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स में उन्होंने बेनिफिट दिया है, इसके अलावा जो डीडीटी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसे भी हटा दिया, लेकिन बावजूद उसके जो है मार्केट पॉजिटिव नहीं है। तो सर ये इसीलिए मार्केट हमसे ज्यादा एडवांस है और वो इस बजट को ज्यादा अच्छे से डिकोड करते हैं और वही रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने खर्चे की बात तो बहुत की है, रेवेन्यू की बात बहुत कम की है, पहली बात है। दूसरी बात है डिसइन्वेस्टमेंट एक सोल्यूशन हर बार नहीं हो सकता गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, क्योंकि आप ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा होगा पिछली बार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 1 लाख करोड़ के आसपास था, इस बार उसको 2.1 लाख करोड़ कर दिया, जस्ट डबल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि LIC एक लाइफ लाइन भारत के लोगों की भी है, जिससे कि शायद प्राइवेटाइजेशन में जाते हुए लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे आपको रोकूंगा, LIC कहा जाता है कि जब 2008 में रिसेशन आया था, 2008 में जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था, तो भारत की यही कंपनियां जो PSUs थे, LIC थी या बड़ी कंपनियां थी जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बचाया था। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए हमेशा सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या अभी बीजेपी की है, हमेशा LIC का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए किया गया है और उसको संभालते संभालते कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर के साथ एक धोखा हो रहा है। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट में LIC के शेयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि LIC का स्टेक इस समय आपके लिए काफी खतरा पैदा कर रहा है। मैं खतरे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके सामने एग्जांपल है, DHFL जैसी कंपनीज का स्टेक LIC ने खरीद रखा है, साथ ही यस बैंक का स्टेक खरीद रखा है और इन शेयरों में अगर देखिए तो आप ये शेयर अब बचे ही नहीं है, लगभग ये कंपनियां 100% या कंपनियां डूब गई हैं, 100% के पास तक का करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो LIC का जो खुद का बुक वैल्यू है वो उसकी वजह से काफी हद तक इंपैक्ट है और ऐसे में सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट लाती है तो शायद आपने संसद में उस समय जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई और LIC को आगे किया गया तो सभी लोगों ने थोड़ी सी हुटिंग शुरू कर दी, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आया। शायद इसी वजह से LIC के शेयर में जरूर तेजी है, लेकिन शेयर में निवेश कितने लोग करते हैं मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल। आज भी गांव का जो आदमी है, जो गांव देहात में जिसे शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हमें तक जो है शेयर मार्केट पूरी तरह से समझ नहीं आता है, जो शहर में रहते हैं या हम जिस प्रोफेशन में हम हर रोज चीजों को देखते हैं, हमें तक मालूम नहीं है, तो वो उस आदमी के लिए LIC एक बिल्कुल जो है वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जीवन में जब तक है तब तक भी, और जब नहीं है तो उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप के पास नंबर काफी घबराने वाले हैं, जैसे कि टैक्स में टैक्स टोटल 7% लोग ही देते हैं और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट के इतने एक्शन के बावजूद उन्होंने खुद अपनी स्पीच स्टार्ट करी थी कि 60 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए 60 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शायद ये बताती कि उनसे टैक्स कितना आया तो और खुशी की बात होती या फिर और हमारे लिए नंबर अच्छे दिखाई देते। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में 125 यानी कि अब तो हमारी पॉपुलेशन 134 करोड़ से ऊपर है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ये सच्चाई हमें जाननी चाहिए। और जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपके सामने दो ऑप्शन वैसे उन्होंने दिया, IDBI को भी उन्होंने सरकारी निवेश की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि IDBI कहीं इससे ज्यादा बड़ा खतरा दे रही है, क्योंकि उस स्टॉक का अगर आप बुक वैल्यू आप सिंपल, आप अगर CA हैं तब तो आप आसानी से समझेंगे, लेकिन मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि उनका उस कंपनी में अभी आपको NPA ज्यादा देखने को मिला, लॉस उन्होंने 20 करोड़ का दिखाया हुआ था। तो जब 20 करोड़ का लॉस दिखाया हुआ तो क्या सिर्फ लाइसेंस की कॉस्ट आप बेचेंगे? जी बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनियां लॉस में है, 50 रुपए से नीचे स्टॉक चल रहा है। तो ऐसे में
जिस इन्वेस्टमेंट आपका जो तरीका है वो शायद आम आदमियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल, वो मार्केट को भी ज्यादा अच्छा शायद नहीं लग रहा है फिलहाल तो, क्योंकि जिस तरह का मार्केट के ट्रेंड्स आ रहे हैं, सेंसेक्स जो है नीचे है, निफ्टी और बीएसई दोनों जो है वो नीचे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है नई कंपनीज जो आएंगी, जो लगी, उनके लिए 15% सरकार की तरफ से कर दिया गया है, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 25% था वो 22% कर दिया। क्या ठीक हूं मैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल, इसके बावजूद जो है मार्केट में तेजी नहीं दिख रही है। साथ ही साथ डीडीटी जो है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है, डिविडेंड पर जो कंपनीज देती थी, डबल टैक्सेशन उसे कहा जाता था, वो हटा दिया, और उसके बावजूद भी तेजी नहीं है। लेकिन वहां पर भी एक खेल जो है मुझे लगता है सरकार ने कर दिया है कि कंपनी तो डीडीटी नहीं देगी, लेकिन जो डिविडेंड वो अपने कस्टमर को देगी वो उसकी इनकम में जुड़ेगा और वो टैक्सेबल होगा। जी बिल्कुल, ये तो वही बात है। मैंने अभी आपको जो बिस्किट का एक एग्जांपल दिया, ये कुछ ऐसा है कि बिस्किट आप पहले कंपनी आपको दे रही थी तो वो टैक्स देके उतना डिविडेंड काट रही थी, अब आपके पास बिस्किट आ गया है तो आप उसका टैक्स पे करेंगे। तो कुछ ऐसी ही है सिचुएशन। आपके इनकम में अगर जुड़ता है तो वो लॉन्ग टर्म, चूंकि यहाँ पर सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि एसटीटी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या फिर ये कहें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बड़ा इसमें बात हो रही थी, देंगे बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात है जिसे आपने अभी टच नहीं किया है, वो है कि सोने पे बहुत लोगों को उम्मीद थी कम से कम इस बार कुछ ड्यूटी कम होती हुई नजर आएगी। 10% इस समय इंपोर्ट ड्यूटी है, अनऑफिशियल चैनल काफी एक्टिव हैं, और आम आदमी के लिए सोना खरीदना महंगा हो रहा है। आप, मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल आते हैं लोगों के, आपके पास भी आते होंगे कि सोना इतना महंगा हो रहा है कि शादियों के लिए जो लोग खरीदारी करते थे वो अब उतनी क्वांटिटी की खरीदारी नहीं कर पा रहे, या फिर ये कहें कि किसानों को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि किसानों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ एक एवेन्यू होता है, वो बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेशन नहीं समझते, ना म्यूचुअल फंड ना बॉन्ड, वो नहीं समझते। वो सीधे जब उनके पास फसल इकट्ठी होती है, पैसा आता है, तो वो थोड़ा सा सोना खरीद लाते हैं, और दोबारा जब फसल के लिए या बुआई के लिए चाहिए होता है तो सोना बेच आते हैं और उससे काम चलाते हैं। इस समय सोने की महंगाई कहीं ना कहीं से उन आम आदमियों को भी खल रही है। या फिर एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, इस समय 56 लाख लोग गोल्ड की ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, आपको मैं बताता हूं, और इसका इंतजार पिछले 7 सालों से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि अब कम होगा, अब कम होगा। 56 लाख परिवार उससे चलते हैं और सरकार को इसमें कुछ सोचना चाहिए जी। अगर रवि जी, अब हम पूरे बजट पर अगर हम आए, ये तो हमने बात कर ली कि इनकम टैक्स स्लैब्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो बदलाव किए गए हैं उसका क्या रिएक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हम एक बार फिर से अगर मार्केट पर जल्दी से नजर डाल दें तो निफ्टी 147.8% पॉइंट्स और सेंसेक्स 441.82 पॉइंट्स नीचे जो है, माफ कीजिएगा पहले मैंने परसेंट बोल दिया था, तो निफ्टी 136.7 पॉइंट्स और सेंसेक्स 424.95 पॉइंट्स जो है वो इस वक्त नीचे चल रहा है। ये स्टॉक मार्केट का मूड जो है इस वक्त हो रहा है। और जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब्स में जो बदलाव किए गए हैं और उसमें जो रवि जी बता रहे हैं कि एग्जम्पशंस जो है वो एटीसी के अंदर नई रिजीम के अंदर अगर खत्म कर दी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा धक्का जो है आम आदमी के लिए है, क्योंकि पुरानी रिजीम के अंदर ये एग्जम्पशंस जारी है। शायद यही वजह रही कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने, ये ऑप्शन दे दी है कि आप पुराने रिजीम में रहो, वहां कैलकुलेट करो, वहां अगर आपको कम पड़ता है टैक्स तो वहां रहिए, और नए रिजीम में अगर आपको कुछ फायदा होता है तो आप नए रिजीम के अंदर आए। एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को यहां पर यह देना चाहूंगा, जो सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिस तरह से पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ महाराष्ट्र के अंदर और लोगों के पैसे उसके अंदर फंस गए एक तरह से, और इतना हंगामा उस चीज को लेकर हुआ है। और जो इंश्योरेंस की बात होती थी, आपका जो डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, वो बैंक में 1 लाख तक का डिपॉजिट आपका इंश्योर्ड रहता था पहले बैंक के अंदर। अगर आपके बैंक के अंदर 5 लाख रुपए भी है और अगर बैंक डूब जाता है तो आपको 1 लाख रुपए ही आपको एज ए इंश्योरेंस आपके उसमें सेफ थे। तो वो लिमिट जो है सरकार ने एक तरह से बढ़ा दी है। ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है जो सरकार की तरफ से उठाया गया है, और इसके कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो इतना बड़ा पीएमसी बैंक का मामला हुआ है उसके बाद, तो वो इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी बैंक में अगर 5 लाख तक रुपए का आपका डिपॉजिट है, 5 लाख रुपए आपके बैंक के अंदर है, तो वो सुरक्षित रहेंगे अगर बैंक को किसी तरह का नुकसान भी होता है।
क्या ये बिल्कुल सही? बिल्कुल ये सही है और मैं समझता हूँ ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि आज हर आम आदमी बैंक पे ही अगर भरोसा नहीं होगा तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि इसीलिए लोग जो है वो अब इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। लेकिन ये भरोसा बहुत जरूरी था और मुझे लगता है कि देर आया पर दुरुस्त आया, क्योंकि ये आ जाना चाहिए था लगभग आज से 3 से 4 साल पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए 5 लाख रुपए का अमाउंट बहुत ज्यादा जरूरी था और आम आदमी का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये फिलहाल आम आदमियों के लिए खुशखबरी है और बहुत सरकार का भी मैं समझता हूँ ये एक सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इस समय जब आपकी जीडीपी 5% भी नहीं ग्रो कर पा रही है और ऐसे में इस तरीके के फैसले लेना सरकार का काफी अच्छा है आम आदमियों के लिए भी, और सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ ये हुआ बहुत अच्छा है, आगे थोड़ा जल्दी आता तो शायद मेरे लिए और अच्छा जी। अब वापस अगर पूरे बजट पर हम आ जाएं, जिस तरह से शुरुआत की निर्मला सीतारमण ने अपने पूरे बजट की और कहा कि 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। एस्पिरेशनल इंडिया है जिसमें बेटर हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज जो है उसकी बात होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल जो नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का दिया है उस पर काम होगा। और इसके अलावा जो है केयरिंग सोसाइटी जो है उसकी बात होगी कि जो डाउन ट्रॉडन आदमी है, जो अंत्योदय एक आदमी है, निचले पंक्ति का जो आदमी है, उसके लिए काम किए जाएंगे। और साथ ही साथ कश्मीर को भी एक तरह से एड्रेस करते हुए वहां भी मैसेज देने के लिए एक पोइट्री जो है निर्मला सीतारमण ने पढ़ी है और 16 पॉइंट्स जो है उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर दिए हैं। अगर हम थोड़ा सा बार बार से चीजों को देखें, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई थी। इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है 5% के हिसाब से, अभी वो भी नई जीडीपी कैलकुलेशन के हिसाब से, पुरानी के हिसाब से शायद 2.5 भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसको बूस्ट देने के लिए जो फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कहा जा रहा था उसे बड़े बूस्ट की जरूरत है ताकि वहां पर कंजम्पशन बढ़े। एफएमसीजी मार्केट रूरल एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ने की उसकी कैपेसिटी है। तो अगर आदमी के पास, आम आदमी के पास कृषि क्षेत्र में जो कृषक आदमी है, हमारा किसान है, उसकी अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उसको फायदा होगा। कृषि के हिसाब से अगर पहले चर्चा शुरू करें तो कृषि के हिसाब से आप कहां इस बजट को किस तरह से देखते हैं? जो एलोकेशंस हुए हैं, फिशरी के अंदर भी हुआ है और सिंचाई के अंदर भी किया गया है और चीजों के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से कृषि के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बजट एलोकेशन रखा है। हालांकि पिछली बार मेरी ये शिकायत थी कि बजट एलोकेशन कम था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मैं थोड़ा सा डेटा आपको देना चाहूंगा सर, टाइम है तो। देखिए, हमारे यहाँ की भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% लोग गाँव में रहते हैं, 30% लोग शहरों में रहते हैं। दूसरी तरफ है 50% लोग किसानी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब सरकार का जो पिछला बजट था वो था 28 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से 3,40,000 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए थे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो फिगर बढ़ी है। मैं अभी टोटल उसका नहीं कर पाया, लेकिन ये मैंने देख लिया कि 7 लाख करोड़ से ऊपर है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक आप किसानों को डेवलप नहीं करेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे, उनको फूड सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप देश की इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते। आज कई चीजों में मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार के स्टेप के बाद काफी अच्छा फायदा भी हुआ है। आप इस समय देखें तो सबसे ज्यादा चावल की पैदावार हमारे यहाँ पे हो रही है 106 मिलियन टन की। साथ ही जहां पर गेहूं हम जो बाहर से पहले हम इंपोर्ट करते थे, हमारी सिचुएशन ऐसी कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें लगभग 96 मिलियन टन का गेहूं की पैदावार इस साल देखने को मिली है, जो कि हायर साइड पे है। हेक्टेयर के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो 60 लाख हेक्टेयर में इस बार गेहूं की फसल ज्यादा हुई है। तो ये नंबर तभी मुमकिन है जब सरकार उनको सपोर्ट दे, और इस बार सरकार ने पूरी तरीके से, चाहे वो फसल बीमा योजना रही हो, क्रेडिट टारगेट उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए का रखा है। और एक सबसे बड़ी बात है, 2 चीजों को जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो आम आदमी से जोड़ती हैं और किसानों को भी साथ जोड़ती हैं, इसमें कि उन्होंने दूध के प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, डबल करने का 2025 तक। जी, इस समय 53.5 मिलियन टन करीब दूध पैदावार होती है और उसको 2025 तक उन्होंने 108 मिलियन टन का टारगेट दिया है, जो कि मैं समझता हूं एक सराहनीय कदम है। क्योंकि जो आप न्यूज सुनते हैं या आप देखते हैं कि दूध में मिलावट होती है, वो दूध आपको मिल रहा है, वो सही है या नहीं है, सरकार को एक ऐसे फंड एलोकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिससे कि ऐसा हो सके। तीसरी तरफ है हेल्थ केयर सेक्टर, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको भी जोड़ता है और किसानों को भी जोड़ता है। तो बहुत सी ऐसी पॉलिसीज मैंने जो डिटेल में देखी हैं। ये इसमें हम बताएं कि फिश प्रोडक्शन जो है, फिशरी के लिए भी 2 लाख मीट्रिक टन जो है वो लक्ष्य रखा गया है कि उसे बढ़ाया जाएगा फिशरी के लिए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर
सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो सरकार का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्लान जो है वो किया जाएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट से एक तरह से कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा नए 20 लाख किसानों को सोलर पंप्स की बात की गई है कि सोलर पंप्स जो है वो सहायता की जाएगी, जोड़ा जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए जो इस बजट में एक और बात कही गई है कि सोलर पावर जनरेशन, अब किसानों की बंजर जमीन है कहीं पर तो वो अन्नदाता ऊर्जादाता, जी ऊर्जादाता, अन्नदाता और ऊर्जादाता भी उसे साथ, और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा इन चीजों को लेकर ये होगा। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने की बात उन्होंने की है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो हमारे ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स हैं जिसको हम कहते हैं, या जो कंपोस्ट जो बनता है, बढ़ावा जो है हमारा फूड चेन जो है वो कैसे जाए, समस्याएं हो रही है तो एक बैलेंस उसे भी दिया जाएगा। इसके अलावा वेयर हाउसिंग के लिए भी जो है वो बात कही गई है कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट जो है वो ब्लॉक और तालुका लेवल पर करने की कोशिश की जाएगी और ये पीपी मोड पर किया जाएगा। इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस बीच राहुल गांधी ने जो है वो बजट पर रिएक्शन दिया है। पहले उन्हें सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने बजट के बारे में क्या कहा है। Longest speech ever by the finance minister. What is your takeaway, Rahul? Well, the main issues facing this country today are unemployment and the situation as far as the economy is concerned. I didn't see any concrete idea, any strategic idea that would help our youngsters get jobs. I saw a lot of tactical stuff, redundant things. I didn't see any central idea. 3 parameters. It describes the government quite well. What it was? How many hours was it? 2 hours 45. More than 2.5 hours. More than 2 hours. More than 2 hours 45 minutes, I think. I don't remember the exact time. A lot of repetition, a lot of rambling, nothing concrete. So it's the mindset of the government. All talk, nothing happening. But the country is of course suffering. You can ask, and I'll speak directly to the youngsters in university and college. You know exactly what's going on. You know that you don't have a future as far as jobs are concerned, and nothing happened here to help you. Thank you. तो अब राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, इसमें सिर्फ बातें बोली गई हैं। अगर उनका ये कहना हो कि हिंदी में कहें कि जुमलेबाजी, शायद उनका कहने का मतलब ये था कि जुमलेबाजी पूरे बजट के अंदर की गई है। तो ऑपोजिशन की तरफ से जाहिर तौर पर रिएक्शंस आने अभी शुरू होंगे, वो हम आपको दिखाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। ऑपोजिशन हालांकि कभी बजट की तारीफ आज तक मैंने सुनी नहीं कि कभी किया, कुछ ना कुछ नुक्स जो है वो निकाल रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर बजट के अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स सभी हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये रहती है कि बजट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपने बातें बोली है, उसके लिए पैसा आप कहां से इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो आपके पास है, और उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से आता है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर मैं बात कर रहा था आपके साथ, इसमें पीपीपी मोड जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी जोर देने की कोशिश की गई है। और क्या मैं ये मानूं कि हम धीरे धीरे जो है वो क्या कॉर्पोरेट खेती की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, क्या इस तरफ सरकार के संकेत है? देखिए, मैं इसमें यही क्वेश्चन करना चाहूंगा, व्हाई नॉट जी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट खेती जब भी इन्वॉल्व होती है तो उसका फायदा किसानों को भी है, और उनकी एक जो मैं इसमें पहले पॉइंट पे जाना चाहूंगा जो 2022 में सबसे पहले स्टार्ट किया कि फार्मर की इनकम डबल करनी। देखिए, डबल इनकम करने के 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका है कि आप किसानों को सब्सिडी इतनी दीजिए कि वो जो इनकम करें उससे उनकी जो भी वो खेती करते हैं वो 0 लागत हो जाए, और जब बेचें तो उनको वहां पर इनकम डबल हो। दूसरा तरीका ये है कि आप एमएसपी बढ़ा करके आप रेट इतने बढ़ा देंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हम और आप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एमएसपी इतना बढ़ जाए कि जो हम गेहूं जो है वो आज 27 रुपए किलो खरीदते हैं वो शायद आपको 60 रुपए किलो खरीदना पड़े, बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। तो इसमें अगर प्राइवेट इंक्लूड किया जाता है या कॉर्पोरेट को इंक्लूड किया जाता है, उनकी फंडिंग होती है, तो उसका एक बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा।
क्योंकि दो तरीके से फार्मिंग की जाती है, एक है ऑर्गेनिक और एक है आप नॉर्मल जो आप फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा ये है कि देखिए जिस तरीके से मेडिकल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से, यानी मैं मेडिकल खर्चे क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो शायद जहर के तरीके का हो रहा है और कई उससे बीमारियां फैल रही हैं। तो इस वजह से अब हम वापस से अपने बैक टू उस पे जाना चाहते हैं ट्रेडिशनल पे 2000 जो 1950 में खेती होती थी। तो उसका फायदा, तो उसको अगर करना है तो कहीं ना कहीं से कॉर्पोरेट की फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूएस या चाइना में इतनी सब्सिडी मिलती है कि वहां पर 70% बजट जो है वो एलोकेट होता है सिर्फ किसानों के लिए। इंडिया में अभी भी वो परसेंटेज 10 से 12% से ज्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप अगर पैसे आप गवर्नमेंट के पास नहीं है तो वो यहाँ पर कॉर्पोरेट फंडिंग को इंक्लूड करे और उसका फायदा मिले। और उसका सबसे ज्यादा फायदा, देखिए मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगा, ज्यादातर लोग बाइक, स्कूटर और कार से एक सेगमेंट बनाते हैं कि ये मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है। आज आपको सच्चाई एक देता हूं कि 90% किसानों के पास कार नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्या दर्शाता है कि किसानों की इनकम उतनी नहीं है जिसकी वजह से वो कार नहीं खरीद सकते। उससे भी चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 65% किसानों के पास बाइक नहीं है। तो सर उनको भी हक है टेक्नोलॉजी का यूज करने का और उसका इस्तेमाल करने का। लेकिन इसमें कई अप्रीहेंशंस भी लगाई जाती है कि अगर कॉर्पोरेट चला गया, ये अलग डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है कि कॉर्पोरेट किस तरह से कब्जा कर ले और कहीं जो किसान है वो अपनी खेत में ही मजदूर ना बन जाए। खैर इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये है कि पीपीपी मोड के जरिए जो है वेयर हाउसिंग डेवलप करने की बात सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि धनालक्षी ग्रुप करके एक बात कही है उन्होंने, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं, कि विलेज स्टोरेज स्कीम एक तरह से उन्होंने कही है कि हमारे जो बीज वगैरह है वो हम गांव में स्टोर करेंगे ताकि जिसका काम जो है आने वाले टाइम में जो जिसे ज़रूरत है उसे कर सकते हैं। किसान रेल जो है ये इसकी भी बात उन्होंने की है पीपीपी मोड पर, इंडियन रेलवे, ताकि जो पेरिशेबल आइटम्स है हमारी जो जल्दी खराब होने वाले जैसी सब्जियां हैं उनको जल्दी से जल्दी एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसकी बात भी जो है वो उन्होंने की है। जी देखिए एक तरीके से मैं आपसे जो अगर मैं कहूंगा पूरे बजट को अगर देखा जाए तो काफी डिटेलिंग दी गई है। जी। किसान से लेके गांव से लेके शहर तक और शहर से लेके कॉर्पोरेट तक। जी। सभी को यहाँ पर एक तरीके से फोकस किया गया है और सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। जब आप किसानों की बात करते हैं तो देखिए इससे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले बजट में अनाउंसमेंट करी थी करीब 100 लाख करोड़ रुपए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए थे, जिसमें से 20% ही इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों के लिए गया था। इस बार मुझे उम्मीद थी कि उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आएगा जो अभी नहीं मुझे दिखा, लेकिन फिर भी इनफ चीजें यहाँ पर अनाउंसमेंट करी गई है। ज्यादातर बजट का एलोकेशन या डिटेलिंग जो है वो किसानों को लेकर के बताई गई है। आप जो फूड का प्रोक्योरमेंट या वेयर हाउस की बात करते हैं तो भारत में 7000 वेयर हाउसेज हैं सिर्फ, और आपको मैं बताऊं कि लगभग 30% जो पैदावार होती है उसका डैमेज आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम 30% में से 10% भी बचा लेते हैं तो हमारे यहाँ पे सफिशिएंट होगा और हम ज्यादातर चीजों को बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे भी रेवेन्यू बनेगा। इस समय सरकार का जो इंपोर्ट बिल है वो लगभग $538 बिलियन का होता है, और जबकि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 333 बिलियन का है। तो इसीलिए आपको जो डेफिसिट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश सरकार ये कर रही है कि अपने बेसिक फंडामेंटल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाए, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, और इसीलिए यहाँ पर चाहे वो सिंचाई हो, जल जीवन हो, हेल्थ केयर हो, या फिर आप देखें तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने भारत नेटवर्क की भी बात की है और उसके लिए भी 6000 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये कहा है कि 1 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये एक तरीके से कहा जाए तो मुझे लगता है कि 70% ये किसानों का ही बजट है और उससे आम आदमी भी जुड़ा हुआ है। जी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या किसानी कोर सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, इसमें 1.23 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है। इसमें आयुष्मान योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई है, और दूसरा ये कि जॉब क्रिएशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है हेल्थ सेक्टर है। और इसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पीपीपी मोड पर जो है वो 112 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ली जाएगी, वहां पर जहां एम्पेनल्ड हॉस्पिटल नहीं है। आयुष्मान योजना जो लागू की गई है सरकार की तरफ से, इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां एम्पेनल्ड हॉस्पिटल नहीं
नहीं है, यानी वो हॉस्पिटल जहां जाकर आप आयुष्मान योजना का कार्ड दिखा दे, कागज दिखा दे और आपका इलाज हो जाए, वहां पर हॉस्पिटल्स खोलने की बात की है। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है करने की बात की गई है। इसके अलावा 2025 तक देश के अंदर से ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को खत्म करने की जो है वो बात की गई है। वो लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। तो ये लक्ष्य 2025 तक का है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये बात जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जन औषधि स्कीम जो है, जिस स्कीम के तहत जो है हमें, आपने देखा होगा कि कई जगहों पर दुकानें खोली गई हैं। ये जन औषधि स्कीम वो है जहां पर आपको सस्ते दरों पर जो है वो जेनरिक दवाइयां जो है वो मिल जाती है। वो स्कीम जो है 2024 तक कहा गया है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, देश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है, 623 के आसपास जो जिले हैं देश के अंदर, 600 से ऊपर जिले, उनमें जन औषधि स्कीम जो है वहां पर पहुंचा दी जाएगी। तो 69,000 करोड़, 69,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए रखा गया है 2020-21 के लिए। इसके अलावा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान जो है, बड़े जोर शोर से सरकार का ये मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए ताकि जो है स्वच्छता रहे, किसी तरह की ना हो मैनेजमेंट की। इसका जो ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस की जो बात हमने अक्सर सुनते हैं, खुले में शौच जो है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो इसके लिए 12,300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है स्वच्छ भारत स्कीम के अंतर्गत जो है 2020-2021 के बजट में किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी योजना जो हर घर नल योजना, जिसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी, हर घर नल योजना, यानी हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की जो स्कीम है, सरकार की जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इस बजट के अंदर 2020-2021 में सरकार की तरफ से रखे गए हैं। उसके बाद हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, बहुत बड़ा सेक्टर है और देश का भविष्य जाहिर तौर पर जो है वो शिक्षा किस तरह की हम अपने बच्चों को देते हैं, किस तरह के संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हम बनाते हैं, इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद जो सरकार ने अभी कुछ वक्त पहले जो की थी, उसे लेकर कई तरह की रिजर्वेशन, कई तरह की आपत्तियां भी जो है वो उठी थी, लेकिन सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। और निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में कहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जल्दी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और जो कही है निर्मला सीतारमण ने, कि जो सरकारी अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, जो आप अर्बन लोकल बॉडीज में आप नगर निगम ले सकते हैं, नगर पालिका ले सकते हैं, जो वो बॉडीज हैं वहां पर जो नए लोग निकल कर आते हैं, जो नए इंजीनियर्स निकल कर आते हैं, उन्हें वहां पर 1 साल के लिए इंटर्नशिप करवाई जाएगी, ताकि उन्हें पता चले कि वो सरकार के साथ सरकारी दफ्तरों में या सरकारी नियम कायदों में किस तरह से काम होता है, किस तरह से चीजें होती है। वो एक तरह से इंटर्नशिप जो है उनकी कराई जा सकती है अर्बन लोकल बॉडीज में 1 साल के लिए, यंग फ्रेश इंजीनियर्स, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा डिग्री लेवल ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने की बात की है कमजोर वर्ग के लिए एजुकेशन सेक्टर में। और अगर हायर एजुकेशन की बात करें, जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम सरकार की तरफ से पहले ही चल रहा है देश के अंदर, उसे भी बढ़ावा देने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि एशियन और अफ्रीकन जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर भी इसके लिए हम जो है कोशिश करेंगे, टेस्ट वहां पर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा एक नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जिस तरह से क्राइम जो होते हैं देश के अंदर और उसके अंदर सबूत जो जुटाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त हमारे देश के अंदर नहीं होती है। ट्रेंड लोगों की उसके लिए कमी है। पुलिस हमारी उस तरह से ट्रेंड नहीं है कि अगर कहीं पर कोई अपराध होता है तो उस अपराध की जगह पर से कौन से सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे उन चीजों की जांच करनी है, उस चीज को इक्विप करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की बात सरकार की तरफ से की गई है, ताकि प्रॉपर ट्रेनिंग वहां पर हो और नए लोग जो है इस फील्ड में आ सके। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस
कॉलेजेस जो हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोलने की बात सरकार की तरफ से की गई है, जाल बिछाने की बात की गई है और इन मेडिकल कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ लिंक करने की बात की गई है, ताकि जो हमारा अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें ज़्यादातर जगहों पर तो वहां पर डॉक्टरों की बड़ी कमी रहती है, तो अगर मेडिकल कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पर डॉक्टरों की कमी से जूझने की जो समस्या है उस पर भी जो है काबू पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए किया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री और कॉमर्स सेक्टर की बात करें तो यहां पर 27,300 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की तरफ से इस बजट में 2020-21 के लिए किया गया है। इसमें वही है जो नए उद्योग लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो है वो कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो है वो सरकार की तरफ से बनाया जाएगा कि वहां पर अगर आप नया उद्योग लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक बॉडी होगी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, जहां पर आपको राय भी दी जाएगी, आपकी जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरी शंकाएं हैं वो भी वहां पर आपकी दूर की जाएगी। इसके अलावा जमीन से कहां आपको जमीन मिल सकती है, कैसे जमीन मिल सकती है, इन सब चीजों के लिए वो सेल जो है इसके अलावा बनाया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज की बात जो है वो राज्य सरकार के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पहले से भी चल रहा है, वो भी आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करें तो इसे बढ़ावा देने की भी सरकार की तरफ से बात की गई है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके लिए 1480 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से रखे गए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना जो कुछ दिन पहले भी योजना की घोषणा जो है वो 100 लाख करोड़ से ऊपर की घोषणा है। ये 103 लाख करोड़ रुपए की पूरी घोषणा है, जिसकी घोषणा जो है निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले की थी। ये पूरा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना है, इसके अंदर देश के अंदर आपके जो जाल एक तरह से बिछाने की कोशिश की जाएगी। जो सेक्टर है, पीने का पानी है, हाउसिंग है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, मेट्रो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेट्रो रेल के अलग अलग शहरों के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत जो है वो पूरी डेवलपमेंट की जाएगी। 103 लाख करोड़ रुपए की ये पूरी योजना सरकार की तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा जो सड़कों की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा जरिया है और बड़ी ज़रूरत है देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की, गांव देहात तक। और जो शहरी ट्रांसपोर्टेशन भी है, जिस तरह से शहरों के अंदर गाड़ियों का रश भी बढ़ रहा है, वो किस तरह से उसे ईज आउट किया जाए, उसका समाधान किया जाए, इसके लिए सरकार का कहना है कि वो आने वाले दिनों में बड़ी योजना इसके लिए ला रही है। 9000 किलोमीटर का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। 2000 किलोमीटर की जो है वो तटीय इलाके में रोड्स जो हैं वो डेवलप की जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है, एक्सप्रेस जो वे जो है, उसे भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो रेल का बजट जो है वो पहले अलग बजट आया करता था, लेकिन उसे खत्म करके अब इसी बजट के अंदर रेलवे के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से डेवलपमेंट हुई है। लेकिन रेलवे में एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की तरफ से जो उठा दिया गया है, इस बजट में भी उसका जिक्र किया गया है और ऑलरेडी वो चीज़ इंप्लीमेंट भी हो गई है। वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि रेलवे में पार्टनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो लाया जा रहा है। और तेजस उसमें एक प्राइवेट ट्रेन जो है वो ऑलरेडी चल रही है, तो इस चीज़ को बढ़ावा एक तरह से सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हम इस पर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा अपने जो मेहमान हैं रवि सिंह, उनसे करना चाहेंगे। डॉक्टर रवि, रेलवे जो है इस देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि सरकारी जो संस्थान हैं उनमें रेलवे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर की जिस तरह से एंट्री हुई है, लोगों को एप्रीहेंशंस भी है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्लियर कर दिया है एक तरह से कि वो पीछे कदम नहीं उठाएगी, वो आगे बढ़ेगी। तो रेलवे को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं? देखिए, रेलवे एक तरीके से ये कहें तो भारत की जो लाइफ लाइन है वो रेलवे ही है। और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, बहुत से ऐसे जैसे
ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं या फिर बहुत सी कम लागत पे आप जो है वो एक तरीके से पैकेजिंग देखते हैं, क्योंकि अगर किसी और ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और रेलवे को यूज़ करते हैं तो आपकी कॉस्ट एक बार में 1/4 हो जाती है। तो फिलहाल रेलवे का डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सरकार ने जैसे इस बार लक्ष्य रखा है, रेलवे लाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ ही 1100 के आसपास शायद 1100 समथिंग कुछ ट्रेन भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और आगे की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट का देखिए फ़ायदा ये होगा कि आज का आम आदमी ये चाहता है, उसका टाइम का इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं से जब प्राइवेट इंक्लूड होता है तो एक तरीके से टाइम बाउंडेशन भी आ जाता है, क्योंकि हमारा एक नेचर है कि सरकार क्यों नहीं ठीक कर सकती? सवाल यहाँ पर आ जाता है कि आप सब कुछ बेच रहे हैं, आप PSUs भी बेच रहे हैं, तो फिर सरकार का रोल कहाँ तक रह जाएगा? क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार बस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रहे, बाकी सब कुछ प्राइवेट हो जाए? क्या इस तरफ सरकार जा रही है? देखिए कहीं ना कहीं से ये तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन को यूज करके शायद सरकार ये समझ चुकी है कि जब तक सरकारी है तब तक लोग चीजों को उसको अपनी नहीं समझते हैं, जैसे ही प्राइवेट में जाती तो उसकी सुरक्षा और उसकी सुविधाएं ज्यादा अच्छी की जा सकती हैं और लोग उसके लिए पे करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी नवरत्न कंपनीज जो है वो भी सरकारी कंपनियां ही हैं, जो गेल है या दूसरी कंपनीज है वो जाहिर तौर पर सरकारी उससे ही बनी है। खैर ये चर्चा का अलग विषय हो सकता है। तो रेलवे पर जिस तरह से आय बढ़ाने की भी एक बात रवि जी इसमें की गई है कि जो रेलवे ट्रैक्स है उसके आसपास की जमीन, काफी जमीन जो है रेलवे पहले से एक्वायर करती है, वहां पर सोलर पावर कैपेसिटी जनरेट करने की बात सरकार की तरफ से की गई है। देखिए इस पे मैं एक सजेशन भी सरकार को देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए रेलवे एक ऐसा मार्ग है जो कि भारत के हर कोने में अवेलेबल है और ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आजकल रेलवे की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि सिर्फ पड़ी हुई हैं, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो सरकार ने पहली बात है जो ये कोशिश करी है, ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर वो वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो स्टेशन से स्टेशन कनेक्टिविटी और किसानों से गांव से जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि हर जगह पे स्टेशन है और स्टेशन डायरेक्ट आपके कैपिटल से जुड़े हुए हैं, और अगर किसान उस स्टेशन को या वहां पर एक वेयर हाउस बनाया जाए तो 24 घंटे के अंदर देश के एक कोने से दूसरे कोने में सामान को पहुंचाया जा सकता है, जो कि अभी इतना टाइम लेता है कि उसकी वजह से उस सामान को काफी हद तक जो है उसमें आपको खराबी देखने को मिलती है, या 30% तक का आप ये कहें कि सामान खराब हो जाता है। किसान रेल की बात की भी है कि किसान रेल शुरू करेंगे तो, लेकिन मुझे लगता है किसान रेल शुरू करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उन स्टेशंस को वेयर हाउसिंग में कन्वर्ट करें, जिससे कि अब देखिए किसान अगर रेल के पास जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं आपको वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, और किसानों से जितना आप जुड़ेंगे, गांव से जितना जुड़ेंगे, उतना फास्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी में होगा। और तब ये कोई सवाल नहीं उठाएगा कि 6% आप अपनी जीडीपी को कैसे लाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भंडारण की बहुत बड़ी समस्या जो है वो पूरे देश के अंदर है। वो वेस्टेज फूड की हम देखते हैं, बारिश में फूड खराब हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर अगर करनी पड़ती है, वेयर हाउसिंग में उसे स्टोर करने के लिए ठीक जगह नहीं है, चूहे खा जाते हैं और गीला हो जाता है बारिश के अंदर। तो ये बहुत सारी समस्या है। तो वेयर हाउस का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो देश के अंदर खड़ा करने की जरूरत है, अगर आप किसान को उसके प्रोडक्ट का सही दाम देना चाहते हैं और डबल इनकम उसकी आप करना चाहते हैं, तो ये चीजें जाहिर तौर पर उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो है 2020-21 के बजट के अंदर सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा 150 नए एयरपोर्ट बनाने की बात जो है 2024 तक सरकार कर रही है। उड़ान स्कीम जो सरकार ने चलाई है, यहाँ पर जब ये एयर इंडिया को बेचने की बात हुई तो बहुत एक तरह से मीम्स और जोक्स भी बने कि एयर इंडिया को तो आप बेच रहे हो और अब इधर 150 नए एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हो। देखिए ये इसलिए मुझे लगता है ज्यादा एयर इंडिया का जो है वो मजाक इसलिए भी ज्यादा उड़ाया गया सरकार का, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर सरकार ने कमेंट मारा था। पाकिस्तान की भी एयर इंडिया की, पाकिस्तान के एयरवेज की लाइंस की हालत कुछ ऐसी ही है जैसे भारत की एयरलाइंस की है। तो जब जीडीपी का कंपैरिजन या जब हम इकोनॉमिक फोरम पे अगर ये कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान भी ये कहता है पलट के कि आपकी एयरलाइंस की हालत भी वही है। तो शायद ये ज्यादा जो है वो मजाक का कारण बना। दूसरी तरफ है देखिए एयरपोर्ट, अगर आप इस चीज को लेकर के संगठित हो जाते हैं कि नहीं आगे एयरपोर्ट हम बना के हम क्या करेंगे, उनका क्या फायदा होगा, जैसे मेट्रो है, मेट्रो में एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं, लेकिन आज के हिसाब से आप आगे के 20 साल 25 साल 50 साल बाद जब आप सोचेंगे तो आप इतनी जल्दी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं क्रिएट कर सकते। तो सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज देखिए, आज से 10 साल पहले, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, सिर्फ 10 साल पीछे जा रहा हूं, एयरपोर्ट पे आपको ट्रैफिक ना के बराबर दिखता था, और आज एयरपोर्ट और बस स्टेशन में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। क्योंकि मैं जब भी ट्रेवल करने जाता हूं, चाहे मैं ऑफ डे पे जाऊं, ऑन डे पे जाऊं, इवनिंग में जाऊं, मॉर्निंग में जाऊं, आपको ट्रैफिक फुल मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं से दिखाता है कि लोगों के अंदर परचेजिंग पावर भी बढ़ी है और लोगों को टाइम का इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। तो वो जरूरी है। अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो फिर आगे हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवील नहीं कर पाएंगे, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है और आगे जरूरी है। स्मार्ट सिटी के ऊपर जरूर मुझे एक कमेंट चाहिए था, अगर आप मुझसे ये कहते, क्योंकि स्मार्ट सिटी को बहुत फोकस किया गया था, 100 स्मार्ट सिटीज को, लेकिन वो टारगेट इस बार बहुत कम दिखाया गया और अभी तक स्मार्ट सिटीज में उतना काम नहीं हो पाया है जितना हमने, जब स्मार्ट सिटी अनाउंसमेंट आया था, आपकी भी खुशी रही होगी कि हमारा भी कहीं ना कहीं से हमारा शहर भी अब स्मार्ट सिटी में आ रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट थोड़ा सा फीका है, उस पर जरूर। और उसे डाउन प्ले भी एक तरह से जो है वो सरकार, मुझे लगता है कि चाहे चुनाव हो तब भी डाउन प्ले किया है उसे। अभी भी बजट में कह रहे हैं कि हम करेंगे, डेवलप करेंगे, लेकिन उसे डाउन प्ले किया गया है क्योंकि सरकार ने जो अपना पिछला लक्ष्य है स्मार्ट सिटी को लेकर वो एक तरह से पूरा नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर सरकार का ये कदम दिख रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा तूल एक तरह से सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर बिजली कंपनियों की हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्टेट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जो है वो चली जाए। अगले 3 साल में पूरे राज्यों के अंदर सभी जगह प्रीपेड मीटरिंग की सुविधा जो है वो लोगों को दी जाए। और पावर रिन्यूएबल जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान एनर्जी सेक्टर के लिए रखा गया है। तो एनर्जी सेक्टर किस तरह से इफेक्ट करेगी आम आदमी को और इसका कैसे फायदा हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ ऐसे तो सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। 22,000 करोड़ रुपए एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है और जो आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हिसाब से 22,000 करोड़ रुपए कम है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, इसलिए कम है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट एनर्जी की बढ़ती जा रही है, बिजली की बढ़ती जा रही है, और इसीलिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था जिसमें उन्होंने सोलर की शुरुआत की थी। लेकिन अभी समस्या इस बात की है कि अब आप शुरुआत तो आप अच्छी करते हैं, लेकिन आप आगे जो प्ले करते हैं उसमें स्लो हो जाते हैं। अब कितना आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अभी सोलर एनर्जी को लेकर के वर्क है उसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसकी जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि उस स्टेट में मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी। मैं टूर करने के लिए गया था कि वहाँ पर जो सरकार है वो ये फैसिलिटी दे रही कि लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाएं और उससे बिजली जनरेट करें घर की, और जो बिजली बचती है वो आप सरप्लस बचती है वो आप दूसरों को दे सकते हैं। आई थिंक यहाँ दिल्ली में भी वो चीजें कही गई है, कितना इंप्लीमेंट हुआ हो पता नहीं। मैं धरातल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये चीजें होती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि ये एक, और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर ऐसा शुरुआत हो जाती है तो सबके पास जमीनें हैं, सब थोड़ा पैसे लगा करके अपनी बिजली फ्री कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा और ज़रूरत है और क्लीन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हम जो ट्रेडिशनल वेज हैं फ्यूल के और एनर्जी के उसकी तरफ जाएं। इसके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। उस पर कितना पैसा जाता है देश के अंदर वो पता नहीं, फिलहाल कितना उसके अंदर सरकार क्या कर रही है ये देखना होगा। इसके अलावा डाटा सेंटर पार्क बनाने की सरकार ने बात की है और इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी, एक नए सेक्टर की बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए जो है अगले 5 साल के लिए सरकार ने कहा है कि वो क्वांटम टेक्नोलॉजी सेक्टर में रखेंगी। 8,000 करोड़, 8,000 जी माफ कीजिएगा, 8,000 करोड़, बिल्कुल 8,000 करोड़ रुपए की बात 5 साल के लिए की गई। भारत नेट की बात आपने पहले की कि पंचायतों को जो है वो जोड़ा जाएगा, इंटरनेट 1 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए जो है उसके लिए रखे हैं। इसके अलावा जो बजट के अगले सेशन में निर्मला सीतारमण आई थी वो उन्होंने केयरिंग सेक्टर की बात की थी कि हम कैसे समाज की देखभाल कर सकते हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उन्होंने सबसे पहले बात की। इस पर वहाँ पर वोटिंग भी होने लगी वो और उस पर निर्मला सीतारमण ने कहा भी इसे कि राजनीतिक तौर पर इसे ना देखा जाए क्योंकि देश के अंदर जो बेटियों के साथ हुआ है शायद इसलिए विपक्ष ने जो है वोटिंग वहाँ पर शुरू कर दी थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके बड़े अच्छे नतीजे आए हैं और जो
एनरोलमेंट है बच्चियों की स्कूल के अंदर, वो जो है वो लड़कों से भी ज़्यादा इस प्रोग्राम के तहत हुई है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस उसके अंदर आई है। न्यूट्रिशनल स्टेटस की उन्होंने बात की, 10 करोड़ घरों तक जो है ये दायरा जो है बढ़ा है पिछले टाइम में, और इसे और बढ़ाया जाएगा। 35,600 करोड़ रुपए जो है वो पूरे पोषण हार का जो कार्यक्रम है, न्यूट्रिशनल का जो कार्यक्रम है, उसके लिए रखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बेटी बचाओ हो गया, या जो हमारी आंगनबाड़ियाँ है, जो कुपोषण की स्थिति इस देश के अंदर है, हम कई राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुपोषण की स्थिति है, कई दूसरे राज्य हैं वहाँ पर, और जो हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है वो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहें, या जो हमारी माएँ हैं, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उसके लिए ये पूरी, अगर हम बात करें 35,600 करोड़ रुपए की बात करें, तो क्या ये सफिशिएंट अमाउंट है, और पिछले वक्त से आप क्या देख रहे हैं कि कितना इंप्रूवमेंट दिखता है? देखिए 35,600 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको कम तब होगा जब आप इसको पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएं। मैं आपको एक और फैक्ट यहां पर बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में बहुत सी चीजें एलोकेट की गई थी, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब किसान फसल बीमा योजना, या फिर जो एक किसानों को पेंशन सम्मान योजना की गई थी, उसमें 14 करोड़ किसानों को जोड़ने की बात की गई थी, और राष्ट्रपति जी ने खुद बोला कि 6 करोड़ लोगों से ज्यादा नहीं ऐड हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जरूरी है कि सरकार उसको एप्लीकेबल करे। बजट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एप्लीकेबल पूरा होता है तो वो और भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी है कि बजट में जो चीजें एलोकेट की गई हैं उनके बारे में, वो चीजें अगर धरातल पर आती हैं तो कहीं ना कहीं से मैं ये मानता हूं कि जो एक न्यू इंडिया जो जीडीपी के टारगेट है वो अचीव होते हुए जरूर नजर आएंगे। और फिलहाल दूसरी बार मैं ये कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे तो ये न्यूट्रिशन के बारे में सोचा भी नहीं जाता था, तो इस बार अब की बजट एलोकेट किया गया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। और सरकार जो एक ऐसा सेक्टर था, एक ऐसी सेगमेंट थी जिसके बारे में शायद सोचता नहीं था आदमी, उसके बारे में सोचा है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम। बिल्कुल, लेकिन बात वही है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो मैंने जो शुरू में भी बात कही कि नई टर्मिनोलॉजी कई तरह की यूज जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के अंदर की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये जो है वो बड़ा जरूरी होगा। केवल ये जुमलेबाजी ना हो जाए, जिस तरह से राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया कि बातें की गई है और कुछ है नहीं इस बजट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि केयरिंग सेक्टर में जो हमारे शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए बात की गई है, उसमें 85,000 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 85,000 करोड़ रुपए की बात उसके अंदर की गई है। इन कैटेगरीज के लिए जो स्कीम्स चलती है उसमें एलोकेट किया गया है। इसके अलावा जो स्टूल ट्राइब वेलफेयर है उसके लिए 53,700 करोड़ रुपए की बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई है कि एलोकेट किया गया है 2020-21 के लिए। और जो इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं जिन्हें दिव्यांग का नाम जो है वो दिया गया है, उनके लिए 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो इसके अंदर रखा गया है। इसके बाद कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें, ये भी बहुत बड़ा सेक्टर जो है एक तरह से है कि आजकल तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करते हैं और बर्थडे मनाने भी जाते हैं आम घूमने फिरने की जगह पर। उसे बढ़ावा देने के लिए जो बात की गई है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर्स बनाने की बात की गई है या म्यूजियम बनाने की बात की गई है, और टूरिज्म प्रमोशन के लिए कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 2,500 करोड़ देने की बात की गई है टूरिज्म के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए 3,150 करोड़ रुपए की बात की गई है। इसमें बहुत से रोजगार उत्पन्न होने के भी चांसेस रहते हैं। इस सेक्टर की एलोकेशंस को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए लगभग टोटल अगर देखा जाए तो 5,650 करोड़ रुपए, जिसे मैं मानता हूँ कि टूरिज्म और इन सब चीज़ों के लिए दिया गया है। अलग अलग सेगमेंट उसमें कैटेगराइज किया गया है कल्चर को लेकर के। देखिए भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि हमारे यहाँ पे एफएक्स रिजर्व जो आपने देखा है कि 461 बिलियन डॉलर का है, वो इसलिए है क्योंकि आप जब पॉलिसीज लाते हैं तो बाहर से फंड आना बहुत ज़रूरी होता है, और जितना टूरिज्म आप बढ़ाते हैं तो आपके पास यहाँ पर डॉलर में इनकम बढ़ती है और इकोनॉमी भी ग्रो करती है, आम आदमी भी ग्रो करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और सरकार ने इस पर जो जिस तरीके से लोकेशन रखा है वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। और इसका यूटिलाइजेशन अगर होता है तो हमारे यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़
चीजें हैं जिन्हें कि आप देखने के लिए आ सकते हैं बाहर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार ने काफी अच्छा एलोकेशन किया है, और कितना सफल हो पाता है सवाल वहीं पर आकर उठता है। बिल्कुल, आप एलोकेशन तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, सेंसेक्स जो है इस वक्त अभी भी डाउन चल रहा है। निफ्टी जो है 195.5 पॉइंट्स जो है वो डाउन है, और बीएससी की बात करें तो सेंसेक्स की 663.2 पॉइंट्स जो है वो डाउन चल रहा है। अभी लगभग 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है जब स्पीच खत्म हो गई है निर्मला सीतारमण की, लेकिन उसके बावजूद जो है इंडस्ट्री की तरफ से, शेयर मार्केट की तरफ से जो है वो पॉजिटिव चीजें नहीं आई है। वही बात हम कर रहे हैं कि बजट के अंदर बहुत सी नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, नई टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया है और एक बड़ी प्लान तरीके से चीजों को किया गया लगता है, लेकिन मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और बड़ी बात यह कि ये इंप्लीमेंटेशन किस तरह से इसका होगा। एनवायरमेंट की भी बात जो है वो बजट में की गई है कि क्लीन एयर जो है हम देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए 4400 करोड़ रुपए का बात की गई है, और जो शहर जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो वहां पर इंसेंटिव्स भी ये जो है उन राज्य सरकारों को, उन सिटीज को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात अब ये करें कि जो रोजगार है, ये सारी चीजें सरकार ने रख दी, इंप्लीमेंटेशन इसकी जब करनी है, रोजगार पैदा करने के लिए इस बजट में आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि रोजगार होगा तभी आदमी कमा पाएगा, उसके पास पैसा आएगा और तब वो खर्च कर पाएगा, चीजें खरीद पाएगा, इंडस्ट्री में, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। देखिए, सरकार ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो उन्होंने एक चीज यहाँ पर क्लियर की कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 6500 प्रोजेक्ट रन कर रही हैं, जिसमें कि हाउसिंग, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से फंड एलोकेशन किया जा रहा है उसमें इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आपके, चाहे वो आप जॉब को लेकर के हो, और टेक्नोलॉजी की भी बात की गई है, जैसे भारत नेट की हमने अभी बात करी है, या फिर यहाँ पर नेशनल मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात की गई है, उसके लिए भी उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए और 6,000 करोड़ रुपए दिए। तो ये सब एक तरीके से जॉब जनरेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो टारगेट है सरकार ने, जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे में टारगेट रखा था कि वो 5 से 6 करोड़ रुपए, 5 से 6 करोड़ लोगों को 5 साल में आने वाले समय में जॉब दे पाएंगे। ये कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 करोड़ की बात, 2 करोड़ की बात भी की थी पिछली बार हर साल। हाँ, बस यही मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार टारगेट अचीव ना होने से आज उनका क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा डाउन है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से एलोकेशन बजट की गई है, इससे जॉब जरूर जनरेट होती हुई नजर आएंगी और उसका फायदा जॉब में यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बस जरूरत है कि सरकारी जो पोस्ट हैं उनको जो अभी खाली हैं और उनकी वजह से डेवलपमेंट रुके हुए हैं, मुझे लगता है सरकार को उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। बिल्कुल, और सरकार में जिस तरह से अगर कहीं पर निचले स्तर पर अगर भर्तियां हो भी रही है तो ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, रेगुलर नौकरियां जो है वो लगातार खत्म हो रही है। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है और इसका लॉन्ग टर्म जो परिणाम है वो बहुत दुष्कर्मी परिणाम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, सरकार, आज का आम आदमी, जैसे आप और हम हैं, अगर मान लीजिए हमें जॉब मिलती है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे मिल रही हो 3 साल के लिए, तो मैं 3 साल में पैसे को कमा कर रखना चाहूंगा, क्योंकि 3 साल बाद मुझे जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा, खर्चे नहीं करूंगा। और जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेप्ट आया है, ये कहीं ना कहीं से मैं समझता हूं कि काफी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म नुकसान है और लोगों को इससे फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है और आपका कॉन्फिडेंस एक तरीके से कम होता है, आम आदमी का कॉन्फिडेंस कम होता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सजेशन ये दिया है, क्योंकि वो वक्त जो है वो जाहिर तौर पर चला गया है कि सरकार के अंदर आपको परमानेंट नौकरियां मिलती थी और आप बड़े आराम से रहते थे। उस माइंडसेट को भी आम लोगों में भी बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपने कहा कि अगर उसके पास ये एश्योरिटी नहीं है कि कल के लिए उसके पास नौकरी है या नहीं है, तो वो जितना पैसा कमाएगा उससे वो सेफ रखना चाहेगा अपने भविष्य के लिए, उससे वो बहुत कम ज़रूरत पर खर्च करेगा। एक तरह से इकोनॉमी में बूस्ट एक लेजर से भी मिलता है कि नया फ़ोन मार्केट में आया है तो मैं नया फ़ोन खरीद लूँ,
नहीं तो वो वही 2 साल पुराने फोन से काम चलाएगा अगर उसके पता है कि आने वाले दिनों में मेरी नौकरी है या नहीं है, तो वो खर्च नहीं करेगा पैसा। देखिए, इस समय जो सरकार के लिए चैलेंज है वो यही है, आम आदमियों के हाथ में पैसा नहीं है, गुडविल फैक्टर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है आदमी के पास। और अगर जिनके पास पैसा है वो खर्च इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी नई पॉलिसी फिर लेके आएगी, कितने दिन में पॉलिसी फिर चेंज हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं से एक सिरदर्द बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा ईज ऑफ करना चाहिए। जैसे आपने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट अब 3.8 किया है, और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर 3.8 या 4 से आम आदमी का ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो वो थोड़ा सा फोकस यहाँ पर ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी तरफ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में सरकार को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में सोचना चाहिए। एक पॉइंट जो आप और हम मिस कर रहे थे, मुझे अचानक से याद आया, वो है सीनियर सिटीजन और दिव्यांग। आपने बात की थी तो मैंने सोचा था सीनियर सिटीजन पे भी हम बात करेंगे। सीनियर सिटीजन को इस बार के बजट एलोकेशन में 9,500 करोड़ दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को दिए गए। मिक्स है, दोनों मिलाकर है जी, मिलाकर है। और मैं समझता हूं कि ये सरकार का जो है वो एक कदम ऐसा है जिसमें कि मैं अगर मार्किंग देना चाहूं तो मैं सिर्फ 10 में से 2 मार्किंग दूंगा। मैं सिर्फ इस मामले की बात कर रहा हूं जो सीनियर सिटीजन को लेकर है। सीनियर सिटीजन आज हर एक फैमिली में है, और हर एक फैमिली में कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर एक एवरेज निकालें तो 2,500 से 5,000 रुपए मंथली मेडिकल खर्चा सीनियर सिटीजन का है। ये सरकार जानती है नहीं जानती है, मुझे लगता है उनके सलाहकार को जाननी चाहिए। और सरकार कहेगी हमने आयुष्मान चलाया नहीं, सर आयुष्मान चलाया, लेकिन आज का जो आम आदमी है, आप सिर्फ इससे देख लीजिए कि चाहे वो अगर किसी को डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, नी प्रॉब्लम है, इन सब की ही दवाओं को अगर देखें तो पूरी की पूरी दवाओं का खर्चा 2,500 रुपए से ज्यादा होता है, वो भी महीने की मैं बात कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो और सरकार ने एक गलती यहां पर ये रखी कि जो इसके लिए वो कहेगी ना जनौषधि केंद्र खोल रहे हैं हम, जब खोलेंगे तब खोलेंगे ना, आदमी को जरूरत आ जाए दवा की। तो देखिए मैं क्यों ऐसा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मैं इसमें बात करना चाहता हूँ। जो सीनियर सिटीजन हो जाता है, हर एक के पास ऐसा नहीं है कि सबको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीनियर सिटीजन अपना एक पैसा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में रखता है और उससे उसका खर्चा चलता है। अब सरकार ने 6% और 6.5% जब इंटरेस्ट रेट कर दिया तो वो आदमी अब खर्चा करने से डर रहा है, दवा लेने से भी पहले सोचता है कि मैं अगले महीने का खर्च सिर्फ दवा खा पाऊंगा या खाना खा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं से वो पेन बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं सपोज एक घर में हूं और मेरे अगर घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे भी पता है कि अगर मम्मी और पापा 2 लोग हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 10,000 रुपए मुझे उनको देने हैं दवा के लिए। तो कहीं ना कहीं से मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा और मैं एक्सपेंस नहीं करूंगा अगर सरकार मेरे हाथ में पैसा नहीं देगी, नौकरी की गारंटी नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिससे कि इकोनॉमी में जो है वो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, या फिर सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट को कम से कम 8.5% करना चाहिए था। और जाहिर तौर पर जो हम इनकम टैक्स स्लैब्स की बात कर रहे थे, एटीसी की जो हम बात कर रहे थे, आपने नई रजीम उसे खत्म ही कर दिया पुरानी। और लोगों को उम्मीद ये हो रही थी कि एटीसी के अंदर जो आपने 1.5 लाख की लिमिट कई सालों से चली आ रही है, उस 1.5 लाख की लिमिट को आप बढ़ाएंगे ताकि जो है वो ज्यादा पैसा आदमी के हाथ में बच जाए। लेकिन आपने वो एग्जम्पशन ही अगर जो है नई रजीम के अंदर खत्म कर दी है तो वो बहुत बड़ा धक्का जो है एक तरह से आम आदमी के लिए है। और एक विशेष साइकिल एक तरह से हम कहें कि ये अगर इकोनॉमी की बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है कि सरकार ने एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट को बूस्ट देंगे, आपने हाउसिंग लोन या सीआरआर नहीं बढ़ाया, आरबीआई ने नहीं किया, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि डिपॉजिट जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 8-8.5% मुझे एफडी पर पैसा मिलता था, वो अब 5.5-6% पे आपने ला दिया, तो वो फायदा कहाँ है? देखिए, इसमें सरकार की सोच की बहुत बड़ी कमी है, मैं समझता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए सिंपल है, सरकार ने ये सोचा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, रियल एस्टेट अगर नीचे आ जाएगा तो रियल एस्टेट की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी तो इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर कैलकुलेशन पे देखिए, जब आदमी एक घर बनाता है, घर खरीदता है तो घर बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक भी इस्तेमाल करता है, वो हाउसिंग के इस्तेमाल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है, वो ऑटो भी इस्तेमाल करेगा, यानी कि हर एक सेगमेंट वहीं से स्टार्ट होता है खर्चे का। जब आपने रियल एस्टेट की कमर तोड़ी, उसकी वजह से हुआ ये कि लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया। और
ईएमआई की बात करें तो आपने इस बार भी बजट में ईएमआई पे छूट नहीं बढ़ाई है, वही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि आज अगर आप एक मकान एवरेज उसमें शायद एक साल के लिए टैक्स हॉलिडे और इसका कुछ बात की है। नहीं, उस पर बात की है, लेकिन आप एक बात को समझिए सर, लोन 20 साल का होता है, एक साल पे मुझे नहीं चाहिए। सही बात, मेरी बात, मैं एक आम आदमी के हिसाब से बात कर रहा हूं। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर यह है कि आप किसी भी आज आम आदमी को ले देखिए तो उसका 60% खर्चा सिर्फ उसके रहने में जाता है। आप सोच रहे होंगे 60% तो मेरा नहीं जाता, मैं आपको जुड़वा सकता हूं कि आपका 60% इसलिए जाता है क्योंकि 30% आप किराया देते हैं और 30% आपकी ईएमआई का बिल होता है। तो 40% में आप कितनी परसेंट सेविंग कर लेंगे, आप वापस कैलकुलेट करके देखिएगा, तो आम आदमी इससे घिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में थोड़ा सा लोन में एक अगर वेवर देते तो ये और अच्छा होता। अगर इसी की हम बात कर रहे हैं तो हाउसिंग सेक्टर की, रियल एस्टेट की ही बात कर रहे हैं, उसमें ये भी वही कुछ टैक्स एग्जम्पशन की बात की है सरकार की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर था। जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो सबसे बड़ा एमएसएमई और रियल एस्टेट, इसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जो एक नया मिडिल क्लास जो उभर कर आ रहा था, जिसकी इनकम बढ़ रही थी, या जो नए बच्चे अगर हम जिनकी बात करें जो 22-25 साल में पहले शायद घर बनाने की नहीं सोचते थे, उनकी इनकम बढ़ रही थी, तो रियल एस्टेट बूम कर रहा था। यहीं की दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इस वक्त डिमांड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या इस बजट के अंदर रियल एस्टेट को कैटर किया गया है कि उससे कुछ बूस्ट मिलेगा रियल एस्टेट के अंदर? देखिए, फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है अभी, और रियल एस्टेट के हालात अभी फिलहाल बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि जो आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बार ग्राउंड लेवल पे जाकर रियलिटी चेक जरूर करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो मकान हैं वो शायद आपके पूरे परिवार के रहने के हिसाब से नहीं होते हैं, और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग शायद अफोर्ड नहीं करने लायक होती है। अब रही बात, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आप किसी को 18 से 20 लाख रुपए का अगर मकान दे रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट रेट बताइए कि उसका कितना होगा। कम से कम मिनिमम 18,000 रुपए। जो 18,000 रुपए कमा इंटरेस्ट दे रहा होगा उसकी इनकम कम से कम होनी चाहिए 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए अगर इनकम वाला होगा तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग फिर नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और बीच में एक काफ़ी बड़ी दीवार दिखाई देती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करने की और ज़रूरत है, या फिर टैक्स बेनिफिट को बढ़ाएं, या फिर बाइंग बेनिफिट को बढ़ाएं, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग को और अफोर्डेबल करें। जी, वापस आपके पास लौटूंगा मैं। इस वक्त कांग्रेस नेता शशि थरूर जो है उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया है पूरे बजट को लेकर। आइए सुनते हैं कि शशि थरूर क्या कह रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया से सिट डाउन इंडिया चला गया। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं था, आधा मतलब 1.5 घंटे हम तो पुराने नारे सुन सके, और उसके बाद अभी जो अंत में एक अच्छी चीज शायद हो सकती है वो मिडिल क्लास के लिए टैक्स कंसेशन की 12-12.5 लाख रुपए के नीचे वाले इनकम को जरा सा रिलीफ मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुना जो हमें कुछ ऊर्जा देंगे। अब देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर भी भाजपा की तरफ से भी ताली बजाने वाले। तो शशि थरूर को इस वक्त हमने सुना। शशि थरूर का कहना है रवि जी की स्टैंड अप इंडिया से हम सिट डाउन इंडिया की तरफ चले गए। हालांकि उनका कहना है कि थोड़ा सा टैक्स में जो है मिडिल क्लास के लिए जो बेनिफिट दिया गया है वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। तो क्या वो जिस तरह से हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट पे ही अगर हम वापस आए, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक चंक है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का कि एक जगह प्रोजेक्ट बन गया है, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, आज काम है उनके पास, कल काम नहीं है। तो अगर इसको बूस्ट मिलता तो जाहिर तौर पर उस सेक्शन को भी कैटर किया जाता और वो भी एक तरह से कंज्यूमर है, उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और हमें हमेशा एक एग्जाम्पल मिलते रहते हैं। जैसे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम चाइना को लेकर के काफ़ी हद तक रहते हैं कि चाइना के सामान को इस्तेमाल ना करें। ऐसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज आई कि आप बाहर से हम इंपोर्ट चाइना से कम करें। लेकिन चाइना ने यहाँ पर एक स्टैंडअप एक सेट किया है, एक लेवल सेट किया है। उन्होंने 5 सालों में लगभग 8 करोड़ लोगों को यहाँ पर जॉब दी है। और उन्होंने इस सबसे बड़ा जो उनका नारा रहा है वो ये रहा है कि हमारी पावर है लेबर पावर, यानी कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो पावर है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से
भारत उसी कदम की ओर इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है, लेकिन बजट में वो थोड़ा कम देखने को मिला। मुझे लग रहा था कि इस पे थोड़ा और फोकस होगा, जिससे कि जॉब की सिक्योरिटीज और जॉब यहां पर और निकलती हुई नजर आएंगी। और मैंने बोला ना, सब रास्ता आपका रियल एस्टेट से ही जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट जैसे ही आपका बूम करना शुरू होगा, सब चीजें चल पड़ेंगी, चाहे वो एक्सपेंस लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां एक छत मिलती है उस छत के नीचे खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें रियल एस्टेट को सपोर्ट देने की भी जरूरत है, इंडस्ट्री को सपोर्ट देने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने पूरी तरह से कोशिश ये करी है, क्योंकि जितना उनके पास रेवेन्यू है उसके हिसाब से ही उन्होंने यहाँ पर एलोकेशन रखा है। और मैं समझता हूँ कि अगर एलोकेशन की बात करें तो 10 में से 8 नंबर मिलते हैं बजट को एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्प्लीमेंटेशन में अब कितना आता है वो शायद अगले साल हम लोग रेटिंग करें। लेकिन एलोकेशन में भी हम देखते हैं ये कुछ चीज़ें सरकार ने जिस तरह से बदल दी। हम सुनते थे कि हम इतने मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम हालांकि एक दो चीज़ों की बात की गई है, पीपीपी मोड पर हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की बात की गई है, लेकिन इस बारी जो वो माइन्यूट चीज़ें होती है ना, आदमी सुनने के लिए रहता था एक आदमी की अगले 5 साल के अंदर, पिछले बजट में भी जो पिछले बजट डाला आया था कि हम देश के अंदर 5 एम्स खोलेंगे। इस तरह की चीज़ें इस बजट में नहीं दिखाई दी। अच्छा हुआ, मैं तो समझता हूँ दिखाई नहीं दी, क्योंकि पिछले वाले एम्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। यही जानबूझकर इसलिए सरकार ने किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम आम आदमियों को यह समझना होगा कि सरकार जो बजट पेश कर रही है, अगर उसका 5 मिनट का लेखा जोखा पिछले बजट का दे दे तो शायद हमें क्लियर होगा कि जैसे, क्योंकि मैं आपको बहुत से ऐसी स्कीम्स बता सकता हूँ सरकार की ऐसी रही हैं जिनका यूटिलाइजेशन सिर्फ 20% हुआ है, बहुत सी फाइलों में दबी अभी रखी हुई हैं, जो कि पिछले बजट से इस बजट तक अभी तक लागू नहीं हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस टॉपिक की तरफ अगर जाते हैं तो शायद वो सरकार के लिए और नेगेटिव होगा। फिलहाल अभी जो एलोकेशन किया है, जो टैक्स बेनिफिट दिया है, उससे आम आदमी को थोड़ा सा यहाँ पर राहत जरूर मिली है, ये कह सकते हैं। हालांकि मार्केट ने उसको पूरी तरह से डिसएग्री किया, इसलिए मार्केट में आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। और हाल फिलहाल में अभी जो सरकार के लिए एक चैलेंज देखने को मिलेगा वो है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो शायद इक्विटी मार्केट में और देखने को मिलेगा। तो ये भी एक ऐसा चैलेंज है जिससे कि लड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल मार्केट ने एक रिएक्शन जरूर नेगेटिव दिया है, लेकिन बजट एलोकेशन से मैं काफी हद तक सेटिस्फाई हूं, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार के पास इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये इंप्लीमेंट कैसे होता है और पैसे आएंगे कहां से, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ एनके गुप्ता जी हैं, बाइट जो है एनके गुप्ता की हम आपको सुनाएंगे। एनके गुप्ता चेयरमैन है इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी पीएचडी जो है उसके। एनके गुप्ता क्या कहते हैं, जरा इंडस्ट्री की तरफ से इनका रिएक्शन देखते हैं, सुनते हैं। साल 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को देखकर कि मतलब क्या खामियां थी और क्या खामियां नहीं थी आपके हिसाब से इस बजट में? देखिए, मैं आई विल स्पीक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। It's a 2.5 years. Okay, what we were expecting, at least, what is the roadmap for the future in GST, right? We have done in 2.5 years, but the roadmap should have been the budget. That what is the next? I know that the government has it is a GST council who has to decide, but budget should give the path at least or roadmap for the GST. That is totally missing. Second thing, okay, they have given for the boosting the expected that see there are a lot of indirect taxes goes like electricity or municipal corporation tax and all this goes into the exports, which they have given. This is a good thing that they have given the refund of this amount also. And the most important part is that in fact they have not told about the customs. See, we are all talking about make in India, but custom is a major part if we want to grow the Indian industry. And for that, I think it's not clear from the budget what we have got from there. I don't know for the fine print what is there, but it's not clear how we are improving the Make in India by amending some Customs Act or that. सर, आपको क्या लगता है इनकम टैक्स में इतना बदलाव किया गया, उसके हिसाब से आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? सी, मेरा ये मानना है कि जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा टैक्सेस में, ओके, सिंपल प्रोसीजर्स नहीं होंगे, सिंपल कंप्लायंस नहीं होंगी, आपका टैक्स में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। ओके, आज की डेट में अगर आप देखें तो आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस कि देयर आर सो मेनी स्लैब्स दे हैव इंट्रोड्यूस अगेन, से 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख। वाई वी आर गोइंग इन दिस
break up and break up and break up. I don't understand. We are unnecessarily making complicated society. Now मैं अब एक दूसरे को डिफरेंस करना है 2.5 लाख आएगा तो मैं 2.5 लाख को नीचे करने की कोशिश करूँगा. अब 2.5 लाख से ऊपर है. Why don't, as we have taken a bold step in the corporate taxation, like they have reduced from 35% to 22%, from 22% to 15%. Why can't we take a bold step in individuals also? I think there is a big gap between the legislature and the bureaucrats. I'm telling you, legislature says something, but when it comes to the drafting, okay, because bureaucrat has to draft it, I think there is a big gap. Okay, they might say, okay, we are reducing the tax, but these systems of reducing tax by having so many slabs, you are just confusing the people, and you are just making complicated law. Let me tell you, despite I am expert in income tax, I cannot file my return. What others? सर, एक मेन चीज़ जो LIC के बारे में कहा गया कि LIC का एक सेक्टर बेचकर हम लोग बढ़ावा करेंगे, आपको क्या लगता है उसको लेकर? LIC का is not selling to the private party. It is through IPO. Okay. Right? If LIC is earning today, okay, good amount of earning today, IPO means is going to the public. Okay. The public should also take the advantage of this earning. So, in my opinion, if it is going to the IPO, not a disinvestment or going to the privatization, then I think it's good. Because then, okay, whosoever buy the share of the LIC is doing well, no doubt about it. I think the basic policies will not change, but the LIC, yes, if the local person like you, if you have LIC shares and LIC is growing, then it's beneficial for you. If it's going to the public, then it's good. If it's going to the private sector, particular private sector, then I'm against it. But it is, I think LIC is distributed through IPO, not through private placement. तो एनके गुप्ता को इस वक्त हमने सुना, कुछ सेक्टर्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे. जिस तरह से हमने सुना कि पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स जो इतने बना दिए गए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इंडस्ट्री के लिए जो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एकदम से बूस्ट दिखता नहीं है. हालांकि LIC पे उन्होंने कहा कि ये तो IPO के थ्रू है, तो उससे वो थोड़े सहमत नज़र आ रहे हैं. हम वापस आपके से ये जानना चाहेंगे रवि जी, जो हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट की लेकर हमारी चर्चा हो रही थी यहाँ पर. जी, इस बीच वापस आपको माफ़ी चाहता हूँ वापस आने से पहले, इस बीच किरण रिजिजू जो हैं और स्मृति ईरानी, वो जरा क्या कह रहे हैं दोनों लोग इस बजट के बारे में, ये सुन लेते हैं पहले. इसका बजट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक बजट है. आज एंटी डंपिंग जो MMF सेक्टर की बहुत बड़ी चुनौती थी, उसका समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ. टेक्निकल टेक्सटाइल की दृष्टि से एक नेशनल मिशन की स्थापना सराहनीय काम है, जिसका इंतजार भारत को वर्षों से था. लेकिन साथ ही महिला और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से जो विशेष प्रावधान वित्त मंत्री जी ने किया, वो उन अंदर की मां का दर्पण साबित हुआ है. आज मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दिवाली से कम नहीं जो टैक्स रिलीफ निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राष्ट्र को समर्पित किया है. एक सर्वव्यापी, सभी समुदायों को समाधान देने वाली और राष्ट्र को सशक्त करने वाले बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करती हूं. जो टैक्स रिलैक्सेशन छूट जो मिला है, आप देखिए कितना बड़ा दिल है मोदी सरकार जी का. वो जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो छूट दिए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी रहा है ये. तो स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू को इस वक्त हमने सुना. सरकार का हिस्सा तो जाहिर तौर पर बजट का उनकी तरफ से स्वागत ही किया गया है और बड़ा अच्छा बजट जो है वो बताया गया है. लेकिन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो अभी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं की है जिस तरह से हमने अभी एनके गुप्ता का जो है उनका भाषण, माफ़ कीजिएगा, उनकी बाइट, उनकी रिएक्शन हमने सुना है. और मार्केट में भी अगर एक बार हम फिर से देखें तो मार्केट डाउन है इस वक्त. सेंसेक्स 895.94, ये चीज़ें जो है वो लगातार बढ़ रही है, ये घाटा लगातार बढ़ रहा है. 995 पॉइंट्स जो है वो डाउन चला गया है इस वक्त. 908 पॉइंट्स पे इस वक्त सेंसेक्स डाउन है. निफ्टी की बात करें तो 274.5 पॉइंट निफ्टी भी इस वक्त जो है वो नीचे जा रहा है. जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जब भी
बजट होता है या पिछले दिनों में इलेक्शन, जहां तक हम बात करें इलेक्शन जब हुए मोदी सरकार को जब जीत मिली तो एक सेंटिमेंट्स जो है वो मार्केट में देखने को मिला कि मार्केट बूम की, लेकिन आज के बजट के बाद उस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो मार्केट में हमें नजर नहीं आ रहा था। जी देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके की गिरावट अभी निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल रही है ये एक हिस्टोरिकल से कम नहीं है, क्योंकि ऐसी बढ़त आपको देखने को जरूर मिली थी जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट अभी तक मार्केट में नहीं देखने को मिली। और मुझे लगता है कि शायद ये हिस्टोरिकली 1000 पॉइंट की गिरावट ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। अगर आप सेंसेक्स को देखिए ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसका मतलब है कि बजट से मार्केट बहुत निराश है और कहीं ना कहीं से सेक्टर स्पेसिफिक मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादातर सेक्टर जिनमें हालांकि गवर्नमेंट ने एलोकेशन जरूर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर सरकार कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई है। क्योंकि अगर इस समय मैं सेक्टर वाइज अगर यहां पर जाता हूं तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी, चाहे वो बैंकिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, ऑयल एंड गैसेज हो, ऑटोमोबाइल हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी या फिर फार्मा, इन सभी सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं से सेंटिमेंट बहुत खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि एलोकेशन के हिसाब से आप 8 पॉइंट्स देंगे, लेकिन फिर ये वजह क्या है कि इतना खराब रिस्पॉन्स? क्योंकि जो एलोकेट किया है शायद वो इतना एप्लीकेबल नंबर नहीं है, यानी कि सरकार के पास इतनी इनकम नहीं है कि जो एलोकेशन किया है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। शायद ये बहुत बड़ा चैलेंज है और सरकार ने अपने रेवेन्यू को यहाँ पर नहीं शो किया है, क्योंकि नंबर्स रेवेन्यू के टोटली डिफरेंट है। मैं उनकी बात भी यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कैलकुलेट किया है, यानी कि इकट्ठा किया है, बाकी वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं से इस चीज को मार्केट ज्यादा जो है वो एक तरीके से देखे तो मार्केट उस चीज को समझता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं से मार्केट में ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल, लेकिन ये चिंता का विषय जाहिर तौर पर। और दूसरा ये कि जो मैं कह रहा था आपसे बात कि सरकार ने वो चीजें नहीं बताई कि हम अगर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा इतना बजट है, तो हम एजुकेशन में क्या क्या करेंगे। हाँ देखिए, मैं वापस से थोड़ा सा मार्केट की तरफ इसलिए ले जाना आपको चाह रहा हूँ क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। ये मैंने जैसे ही स्टार्ट हुआ था तभी आपसे ये बात कही थी, जब आफ्टर बजट हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर इस बात का है कि आपने जो एलोकेशन किया है उसके भी स्टॉक आपके, यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक भी यहाँ पर गिर रहे हैं। यानी कि इंडस्ट्री को आपने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, आपने यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म किया, उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट जो पिछले करीब 1 से 2 महीने से एक अपट्रेंड में था, वो शायद बजट में बहुत बड़ी उम्मीद को लेकर बैठा हुआ था। क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें भी हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाने की उम्मीद यहाँ पर बहुत ज्यादा थी और वो ना हटने से मार्केट को काफी धक्का लगा है। दूसरा है कि एसटीटी और सीटीटी, एसटीटी होता है जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इक्विटी मार्केट में लगता है, सीटीटी होता है जो कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कमोडिटीज में लगता है। और इसीलिए मैंने आपसे गोल्ड और सिल्वर की बात स्टार्टिंग में थी। तो कहीं ना कहीं से मार्केट इससे काफी ज्यादा निराश है और इसी वजह से इतनी बड़ी आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर शायद अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा टैक्स की रियायत देती तो मार्केट के हाल कुछ दूसरे देखने को मिलता। करेक्शन की उम्मीद क्या है? किस चीज के करेक्शन? मार्केट करेक्शन। देखिए, मार्केट में अभी करेक्शन तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रिगर किया है ये मार्केट में एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर ट्रिगर कर चुका है और अभी आने वाले हफ्तों में आपको मार्केट में अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के फंडामेंटल आज डिस्काउंट होने शुरू में, इंटरनेशनल फंडामेंटल अब यहाँ पर करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, कोरोना वायरस के बारे में भी आपको भी थोड़ी हिस्ट्री में बताऊंगा, लेकिन पहले मार्केट पे चर्चा चल रही है तो बिल्कुल करते हैं। देखिए, और दूसरी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, ऑयल की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ी हैं, वो सारे फैक्टर जो हैं वो मार्केट को यहाँ पर डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन यहाँ पर अभी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। वापस आपके पास लौटेंगे। इस बीच राकेश चड्ढा जी का एक रिएक्शन आया है, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज ब्रोकिंग इंडिया के, उनका क्या कहना है इस बजट के बारे में, ये सुन लेते हैं। 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल बजट कैसा रहा? ये 20,000 जो नया बजट है ये इसमें बहुत सारे अच्छे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं।
जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ है या जो इंडिविजुअल टैक्स इनकम टैक्स को लोअर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है और बहुत सारी नई स्कीम्स जिसके अंदर ग्रामीणों का ख़ासतौर पे जो डबलिंग फार्मर्स इनकम है उसको विकसित करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, किस तरह से हम अपने नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, उसके बहुत सारे साधन इन्वेस्टमेंट के रूप में किस तरह से हम करेंगे बताया गया है, जो कि इस बजट में एक हम सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसा भी आएगा जिससे कि इजी हो जाए बिजनेस करने के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे जो इश्यूज आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे उस पर रेट्स लगे हुए हैं, उनको कम करने की बात हम सोच रहे थे कि शायद इस बजट में एड्रेस की जाएगी। बहुत सारे रेट्स हैं और जो उस पर रिफ़ंड भी दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, वो भी लेट हो जाते हैं। तो आइडियली एक ही जीएसटी रेट होना चाहिए पूरे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, बट मल्टीपल रेट्स को ठीक करना है। एक तो ये इशू है जो मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। दूसरा, हम मेक इन इंडिया के चाहते हैं, मगर साथ साथ में हम अपने देश को प्रोटेक्शन भी दिए जा रहे हैं। कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो पिछले 2-3 बजट में बढ़ाई गई हैं, उनसे फिर अलग अलग इश्यूज पैदा होते हैं कि एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसमें जो मेरा कहना होगा वो यही होगा कि हम प्रोटेक्शन को कम करें, कस्टम ड्यूटीज़ को वापस यूनिफॉर्म रेट पे लाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट तभी होगा जब हम इंपोर्ट सस्ते दाम पे कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट मैं सिर्फ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम जो आरसेप से संबंध तोड़े हुए हैं उसको सीरियसली कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। यदि भारत अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करना चाहता है, जिसे कहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हम करेंगे। और पूरा ग्रोथ प्रोसेस जो है इस साल, उम्मीद इसलिए भी है कि जो विश्व की गति 1919 में कम हो गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो अब 2020 में बढ़ने चली जा रही है, ट्रेड बढ़ने चला जा रहा है, इसलिए हम इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब राजेश जड्ढा जी का कहना है कि जीएसटी के बारे में उन्होंने चर्चा की। हालांकि जीएसटी काउंसिल उस पर डिसाइड करेगी, बजट में उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो जान मार्केट है या जो इंडस्ट्री है वो जाहिर तौर पर जीएसटी को लेकर काफ़ी एप्रीहेंशंस जो है उसके दिमाग के अंदर है कि जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद हो सकता था। देखिए, यहाँ पर सरकार ने अगर पूरा बजट आप देखें तो उसमें ये भी एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो खर्च है वो 4% तक कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जीएसटी को लेकर के अगर आप देखिए तो सरकार धीरे धीरे, वही बात है कि आपने एप्लीकेबल तो कर दिया लेकिन करेक्शंस अभी तक कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा पीरियड खींच चुका है। सेम मैं वापस मैं नोटबंदी पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत पुराना हो गया, लेकिन नोटबंदी के बाद आपको याद हो तो 443 बार रिवाइज किए गए थे स्टेप्स को, तो वो कहीं ना कहीं से नुकसानदेह होता है। बिल्कुल उसका नुकसान हो ही रहा है। और साथ ही एक बार फिर से जल्दी से हम, क्योंकि थोड़ी देर में जो है निर्मला सीतारमण जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, वहाँ भी हम जाएंगे। जल्दी से रैप अप आपसे करना चाहूँगा। एक तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में हमने बात नहीं की। ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो आप कह रहे हैं कि नोटबंदी का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और नितिन गडकरी इसे देख रहे हैं। उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए मांगे थे। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए ये किया गया है कि 5 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, जो पहले 1 करोड़ था, भी उनका ऑडिट टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिट कर दी है कि उनका ऑडिट अब नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या पॉजिटिव दिख रहा है कि एमएसएमई सेक्टर रिवाइव करेगा, जॉब जनरेशन होगी, क्योंकि 11 करोड़ के आसपास एक डाटा में पढ़ रहा था कि जॉब्स दे रहा है एमएसएमई सेक्टर देश के अंदर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें तो इनमें गवर्नमेंट ने अच्छे जो है एलोकेशन इस बार करा है। 11,000 करोड़ गडकरी जी ने मांगा था, लेकिन 27,300 करोड़ के करीब सरकार ने एसएमई सेक्टर और ई मार्केट प्लेसमेंट के लिए दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। लेकिन
एप्लीकेबल, फिर वहीं पे आके हमारी बात अटक जाती है कि एप्लीकेबल कितना हो पाएगा। अगर पैसा कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे, मैं यही चीज कहने वाला था, आपने वो पहले कह दिया कि पैसा कहां से लाएंगे। हाँ, अगर मैं मान लेता हूं कि पैसा ले आते हैं बाहर से, FIIs का भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते हैं, क्योंकि FIIs की फिगर इन्होंने दी थी $284 बिलियन, जो कि इन्वेस्टमेंट इस बार FIIs का FDI के थ्रू देखने को मिला है, $284 बिलियन। तो कहीं ना कहीं से अगर ये फिगर और बढ़ती है तो जरूर है कि पैसे यहाँ पर बढ़ेंगे और इकोनॉमी को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। तो SME सेक्टर के लिए इस बार ये पता चला, पिछली बार ही पता था कि GST लागू करने के बाद SME सेक्टर काफ़ी हद तक खत्म हो चुका, बीच में रिवाइज करते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है इस बार बजट में कंसीडर किया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा SME सेक्टर को यहाँ पर आप सपोर्ट जरूर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरीके से बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर पूरे बजट के जो इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की, अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई शुरुआती है, क्या आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि अगले कितने वक्त में हमें इकोनॉमी में रिवाइवल दिखना शुरू हो सकता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें मैं अगर इसमें हाईलाइट करता हूँ, वापस से स्टॉक मार्केट की तरफ ले जाना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये तो जरूर देखा कि 3 क्वार्टर के बाद से, मतलब अब कुछ कंपनियों के फंडामेंटल दुरुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस शीट पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बॉटम आउट कहते हैं, यानी कि मार्केट वहां से उठना शुरू हो गया है। लेकिन अभी इकोनॉमी में सरकार कितना रोल अदा करती है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट था, और बजट के हिसाब से सरकार ने एलोकेशन कर दिया है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो आने वाले जो अगला बजट है उसमें शायद ज़्यादा अच्छी सिचुएशन यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आएगी। लेकिन चिंता का कारण फिर एक खड़ा हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर रिसेशन देखने को मिल रहा है, और उससे भारत अछूता नहीं रहेगा। 2008 में भी नहीं रहा था और अब भी नहीं रहेगा जाहिर तौर पर। अंत में जाते जाते, क्योंकि आपको भी कहीं और जाना है चर्चा के लिए, और इतना लंबा टाइम हमारे साथ आपने बिता दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 से 10 अगर रेटिंग देनी हो इस पॉइंट को, एलोकेशन पे आपने 8% दे दी थी, लेकिन अगर ऑल ओवर रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस बजट को क्या आप रेट करेंगे? देखिए, मैं बहुत ही नंबर देने में मैं बहुत पुअर हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप नंबर की बात करें तो 10 में से मैं 7 नंबर देना चाहूँगा। लेकिन मैं रीज़न जरूर बताऊँगा मैंने 3 नंबर क्यों काटे हैं। पहला नंबर जो मैंने काटा है वो इसलिए है क्योंकि आपने एक तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर कुछ नहीं दिया। दूसरा है कि आपने गोल्ड ज्वेलर्स के लिए जो यहाँ पर हैं उनके लिए कुछ नहीं किया है, ये मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। और तीसरा मैंने इसलिए काटा क्योंकि सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स में जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है वो सोल्यूशन नहीं है, और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर कुछ और देना चाहिए था। तो ये 3 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 3 नंबर काट रहा हूँ। बाकी मुझे बजट का टैक्स स्लैब से आप संतुष्ट है? देखिए, टैक्स स्लैब इतना कुछ मैटर नहीं करता, तब नहीं मैटर करता, ये आम आदमियों को खुश करने के लिए होता है, क्योंकि ये घुमा फिरा के लिया गया है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप पैसा इधर से नहीं तो इधर से दे रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी अगर अच्छी करी, और इकोनॉमी में अगर मेरे 5,000 रुपए इन्वेस्ट होते हैं और उसकी वजह से इकोनॉमी अच्छी होती है, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश हित में काम करने के लिए। लेकिन होना ये चाहिए कि जिन सेक्टर को ज्यादा जरूरत है उन सेक्टर को यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैंने इसीलिए जो कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात इसलिए की क्योंकि उससे 56 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट पिछले 5 सालों में अभी तक नहीं सोचा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में लोग जब इन्वेस्ट करने जाते हैं उनका लॉस होता है तो उनको कुछ बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी उनका लॉस कोई रिकवर नहीं करता, फिर भी उनको टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर वो जरूर छूट देनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि सिंह, हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए, और काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करने में। काफ़ी डिटेल में आपने समझाया भी कि किस तरह से सारे सेक्टर्स के अंदर जो एलोकेशन हुई है उसमें आप काफ़ी संतुष्ट है, लेकिन नंबर 7 आपने ज़रूर दिए हैं, शायद उसी चीज़ों को मिलाकर, और एक उम्मीद के साथ कि जिस तरह का एलोकेशन हुआ है, क्या सरकार उसको इम्प्लीमेंट अगर करती है तो बेहतर होगा आने वाले दिनों के लिए। लेकिन सेंसेक्स जो है, वो मार्केट जो है, वो फिलहाल उस तरीके से उसे नहीं ले रही है, और हेडलाइंस हम देख रहे हैं कि वेबसाइट में या ऑनलाइन डिजिटल में छपनी शुरू हो गई है कि मार्केट इज़ ब्लीडिंग। तो वो जिस तरह से आपने खुद कहा कि इतना बड़ा धक्का मार्केट को लगेगा, शायद ये सरकार ने नहीं सोचा होगा जितने कदम उसने अपनी तरफ से उठाए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, और आने वाले समय में फिर हम आपको बुलाएंगे और चर्चा करेंगे कि इकोनॉमी की स्थिति जो है वो देश के अंदर कैसी है, और कैसे उसके अंदर बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उसे बूस्ट किया जा सकता है, और अन्य सेक्टर्स पर भी आपसे बातचीत हम कर सकते हैं। तो रवि सिंह हमारे साथ थे, डॉक्टर रवि सिंह, जिन्होंने पूरे डिटेल के साथ पूरी चर्चा हमारे साथ की कि किस तरह से इस बजट में
क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, देख पाएंगे, और बड़ी डिटेल में उन्होंने इन चीज़ों को हमें बताया है। तो एलोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट उनकी तरफ से ये कहा गया है, लेकिन सवाल वहाँ पर उठकर यही आ जाता है कि अगर एलोकेशन की गई है बजट में, ये पैसा अलॉट किया गया है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना को हम देख पा रहे हैं जिसकी बात इस बजट के अंदर की तो गई है कि हम और स्मार्ट सिटीज़ जो है वो बनाएंगे, लेकिन पिछले स्मार्ट सिटीज़ का क्या हुआ, वो स्मार्ट सिटीज कितनी बनी, कितना काम उसके अंदर हुआ, इस बात की चर्चा जो है वो सरकार ने बजट के अंदर किसी भी तरह से नहीं की है। इसी तरह से अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, दूसरे सेक्टर्स की बात करें, अगर पिछले बजट का एक छोटा सा खाका सरकार की तरफ से दिया जाता तो शायद बेहतर होता है। हालांकि कोई भी सरकार, ये सरकार कहें, पहले की सरकारें जो रही हैं वो कहें, वो पिछले बजट में जो ठीक ठीक चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें हुई है पिछले 5 साल के अंदर या पिछले बजट के अंदर, उसका जिक्र तो कर दिया जाता है। जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कर दिया, या दूसरे चीज़ों का कर दिया, 2-4 चीज़ों का। जीएसटी के बारे में उन्होंने जो शुरुआत की थी कि जीएसटी एक बड़ा अच्छा कदम रहा, और उन्होंने जो फॉर्मर वित्त मंत्री थे जो हमारे बीच नहीं रहे, अरुण जेटली, उस कदम को उनके जीएसटी के कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि एक ऐतिहासिक कदम था। तो उन चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया कि पिछले बजट में जो चीज़ें कही गई थी, जो चीज़ें बताई गई थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो स्मार्ट सिटीज़ का है, जो बड़े जोर शोर के साथ पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आया था, जिसके लिए एलोकेट किए गए पैसे, कि उसमें कहां तक काम हुआ है। इसी के अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई थी पिछली बार, तो वो काम कितना पूरा हुआ, कितना परसेंटेज उसका पूरा हुआ, और अगर कृषि क्षेत्र की बात थी, कितना टारगेट आप लोगों ने पिछला अचीव किया, इन चीज़ों के बारे में किसी भी तरह की चर्चा जो है वो ना तो इस सरकार ने की है इस बजट में, ना पहले की सरकारें करती थी। लेकिन आगे के लिए जो है एक रोड मैप सरकार की तरफ से तय किया जाता है बजट के अंदर कि हम इतना इतना पैसा जो है एक मद के अंदर देंगे। लेकिन इस बजट के अंदर एक अलग चीज़ जो देखने को मिली वो ये मिली कि ये ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से बजट पेश किया जाता था संसद के अंदर, और सेक्टर वाइज कह दिया जाता था कि हम ये सेक्टर में इतना पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उस चीज़ से थोड़ा सा हटकर जो है ये पूरा बजट पेश किया गया। इसमें नए टर्म्स जो है वो यूज़ किए गए, और इसे एक तरह से एक पॉइंट्स के अंदर बांटा गया। जो सबसे पहले एस्पिरेशनल इंडिया की बात जो है वो निर्मला सीतारमण ने कही, फिर उसको सब हेड्स के अंदर बांटा गया कि उसके अंदर क्या 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 होना चाहिए, वो उन्होंने की। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, जो लक्ष्य एक तरह से कहें कि बजट के 3 लक्ष्य उन्होंने रखे थे, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी। तो उन हेड्स के अंदर फिर उसको बजट को डिवाइड करके उन्होंने किया है। एक दूसरी बात यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि भाई ये नहीं कहा कि कृषि क्षेत्र में हम रेल तो चलाएंगे, लेकिन क्या कितने वेयर हाउस हम खोलेंगे। एक जो नंबर्स हमेशा एक बजट के अंदर आते थे कि हम इतने वेयर हाउस बनाएंगे, इतने हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इतने मेडिकल कॉलेज हम खोल देंगे, इतनी रेलगाड़ियां हम चला देंगे। इस तरह के फिगर्स जो है वो बहुत कम देखने को इस बजट के अंदर मिली है। उन फिगर्स को एक तरह से बोलने से बचा गया है, या वो जानबूझकर नहीं कही गई हैं, लेकिन उनके लिए फंड एलोकेट किया गया है कि ठीक है हम इसके क्षेत्र में काम करेंगे। जो हॉस्पिटल्स की बात की, या इतने हॉस्पिटल्स हम आने वाले साल के अंदर खोल देंगे, तो उन चीज़ों की बात हालांकि नंबर्स के अंदर जो हम कहें कि वो नहीं की गई है, लेकिन एक पैसा उसके लिए ज़रूर एलोकेट किया गया है। अब ये कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे उसके अंदर, अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और अगर SC ST या OBC जो वेलफेयर के अंदर अगर 85,000 करोड़ रुपया SC और OBC वेलफेयर के लिए रखा गया है, तो उसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, ये इसका जिक्र जो है वो फिलहाल वहाँ पर निर्मला सीतारमण ने नहीं किया है। हो सकता है कि बजट का जो डिटेल चीज़ें हों उसके अंदर ये निकल कर सामने आया हो। तो ये एक बदलाव एक तरह से बजट के अंदर रहा है। और दूसरी बात ये कि आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ी बात, इसे राहत कहें या ये कहें कि सरकार ने बड़े टैक्टिकली तरीके से, बड़े तरीके से नई जो टैक्स रजीम है, इंडिविजुअल टैक्स रजीम, उसे लाने की बात कही है। इससे कितना फायदा होगा ये अभी भी मैं बताऊं कि अभी भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई दिख नहीं रही है। जो बड़ी उम्मीद थी
बड़ी उम्मीद थी आम आदमी को, मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को, कि उससे बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा इस टैक्स में, टैक्स स्लैब्स के अंदर। तो वो टैक्स स्लैब जो पहले 4 हुआ करते थे एक तरह से, उसे सरकार ने 7 मदों के अंदर जो है उसे बांट दिया, 6 से 7 मदों के अंदर उसे एक तरह से बाइफरकेट कर दिया। तो अब इसमें से कैलकुलेट करके आपको कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। इसकी कैलकुलेशन जो है अभी होनी बाकी है, क्योंकि और अगर जो दूसरी बड़ी बात जो हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि अगर सेक्शन 80C की जो रियायत हम लोगों को मिलती थी, अगर वो रियायत नई टैक्स रजीम के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दी गई है तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा। अगर वो रियायत है नई टैक्स रजीम के अंदर तो हम मान सकते हैं कि कुछ फायदा, ठीक ठाक फायदा, एक तरह से बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक फायदा आम आदमी को, सैलरीड क्लास को होगा। लेकिन अगर वो 80C की छूट जो है वो खत्म कर दी गई तो फिर वो बड़ा समस्या हो जाएगा। और निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा वहीं पर चलते हैं। A reduced rate and a simple process could adopt the new. The same principle is in our minds when we designed this. Eventually, we want to bring the rates down and remove the complications that are there in the compliance. Too many exemptions, it's very difficult for the administrators to administer it. As much as too many exemptions, you need an expert to keep advising you as to how you plan your taxation. So we wanted to achieve 2 goals, make our intentions clear that we want to simplify the income tax process. We want to reduce the rates. So to achieve both, we have come up this year with a new scheme with very limited exemptions to it. Ideally, a new scheme without any exemptions would have been the best, but still, because there are some exemptions which are absolutely indispensable, and therefore we have brought in those exemptions to it and kept it at the minimum. Those who still want to have the benefit of those exemptions which they have been using for some years can remain in the old system. So we provided both with an intention that in the long run, we will be gradually able to remove all exemptions, and in India, your personal income tax, the entire framework should be simple and a very low rate without difficulties in compliance. With that said, I have also read out the examples of people who don't want any exemption in the old, don't want any exemption in the new, what will be the benefit. I've also given you in my speech example of, all right, some benefits in old and some benefits in new, what do you tend to benefit? The new scheme has been designed in such a way that you definitely benefit in terms of the money which is going to be remaining in your hand, having not to pay a higher income tax. With that said, I'll ask the Revenue Secretary to tell you which are those exemptions which are part of the new scheme now. With the reduced rate and with those few exemptions, what will be the benefit that anyone can get will be obvious from his answer. Revenue Secretary. We took a very comprehensive review of all exemptions, and what we found that there are close to 120 exemptions, all different kinds of exemptions. For example, the amount received by a member of a Hindu united family from the income of family state, share of a Hindu undivided family from an income of family state, share of profit received by a partner, interest on certain notified securities, interest on masala bonds, income of foreign diplomats, income of employee, consultant and family members under technical assistance program, death come retirement gratuity. So this way there was a huge list. And so we took a review of each item, and then we found that in this new regime, as has been explained by the finance minister, that the whole idea was to offer a simplified regime and also lower the tax rate, because there were large number of people who, because of cash constraints, the amount of the income that they were having, they were not able to take all benefits. And some people were able to take a larger number of exemptions and deductions. So in order to
offer a simplified system and also to help those who are not taking an exemption offer a lower tax rate. This system has been introduced. Now the total number of exemptions which have been removed from the new system is about 70. So in fact, I will give you some example that which one have been removed and which one have been retained. So particularly the important ones which have been retained in the new system would be like the retirement benefit, for example. Death cum retirement gratuity for government employee, no limit. For others up to 20 lakh, it was already there, they will be retained. Commutation of pensions will be retained. Then the leave encashment on retirement, that will be retained. Retrenchment compensation will be retained. Amount received on VRS up to 5 lakh, that will be retained. Similarly, the EPFO, the employer contribution up to a certain limit, whatever limit that is there now, that will be retained. Payment received from NPS, National Pension Scheme on closure, partial withdrawal from NPS, they all will be retained. A scholarship granted to meet the cost of education, that will be retained. Then payment of awards instituted in public interest, that will be retained. So similarly, so these are the things which will be retained. Then and then there are 70 exemptions, as I mentioned. That probably put it all in the net. Yeah. Yes, so I will put it on. So that will be clearer for you. Yes. Okay, we take next question, 13. Ma'am, just you will get the details. Question number. Timsy, when there's more money in your hand, and you, the person who has it, will be better in a position to decide where you want to save, instead of me directing it. So I'm allowing you to have more money in your hand and depend on your judgment where you want to place your savings. मैम दिस इज़ मोनिका फ्रॉम जी बिजनेस. मैम मेरा सवाल है कि आपने कहा कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में रिवीजन करने की ज़रूरत है. आपने हाल ही में कुछ रिलैक्सेशंस अनाउंस करे थे, तो अब हम क्या स्पेसिफिक मेजर्स उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स है, उसके लिए आपने कुछ भी अनाउंस नहीं करा, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट एक वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो है उसकी घोषणा हो जाएगी. तो क्या कारण रहा उसके पीछे? नहीं, actually for the real estate we had announced some things even earlier. We had announced that stalled projects which need to be completed will be given the last mile funding so that that project can be completed. Home buyers will be getting the project. That is already ongoing. Now, in this also, we have extended the date by 1 year, so that if it's affordable housing, the exemption which the home buyer has is available for them, and the tax holiday for the real estate people, promoters, is also extended by 1 more year. So actually they can now seek the buyer and benefit from it once the transaction gets over. So we've actually given something much more than what was announced even before the budget for the real estate sector. 29. Next question, That's 29. already ongoing. Na? Yeah, thanks. Good afternoon, ma'am. Sapna Das here from CNBC TV 18. You've also created a lot of buzz with your new divestment target of 2110 lakh crore estimated for FY21. Ma'am, you've clearly mentioned that, out of this amount, around 90,000 crores is what you're looking at via sale of stake in public sector banks and financial institutions. Could you please explain that to us? And also IDBI, sir. So the target which has been specified, FM has already mentioned it during the budget speech. It is essentially to come from the listing of the LIC and also from the IDBI at this stage. Yes. Yeah. And so that listing will decide the valuations. We will work on this. Next and question it's from essentially these two. 53. Yes, 53. Sir, this is Mukesh Kaushik from Dainik Bhaskar.
Ma'am, I want to have clarity on defense budget, how much this time has been allocated and what is the percentage increase, what is the capital budget for this, and what is the amount allocated to Indian Air Force, Army and Navy specifically? I think all these details will be provided in the documents. So if there is any clarification on that, you can. Otherwise, PIV press release is providing all the details and data about the different heads. We can take next question number from 8. Ma'am, this is Ruchi Bhatia from ET Now. Congratulations on the budget. I want to ask you about the massive 2.1 lakh crore target that has been set out in the budget for disinvestment proceeds. Many say this is a very stiff target. How will the Department A look to achieve this target? Because we've seen a massive shortfall in this year. So A, on the target, and you've also spoken about a tax charter that the tax department will bring in. What will the tax charter really entail, just to understand that? I'm glad you asked that question. I was a bit worried that on a measure like a tax charter, and in spite of me mentioning it in 2 different places in my speech, not a person has asked me any question. I'm so glad you asked. That's a very major step. Other than us going around the country to tell tax administrators to ensure that face-to-face engagement with the taxpayers need not necessarily be there, to ensure that they are dealing with them more like wealth creators, and to make sure that they would approach them only to gather information. In spite of all this, you would still hear some comments occasionally about, no, there is a level of harassment and so on. And our commitment to make sure that taxpayers are respected, and we quite honor them for the commitment in nation building that they're showing by being honest taxpayers, had to be given an expression of sorts. And therefore we came up, and I must thank, he's not here, the principal advisor, Sanjeev Sanyal did a lot of work for me on this. He researched and gave me a lot of inputs. If I'm right, there are only 3 countries in this world which have enshrined the rights of a taxpayer in their laws. Canada, USA, and Australia, if I remember correct. So when he, after quite a lot of inputs, came up with the taxpayer rights and a charter as a result, we, as usual in the ministry, discussed it in my morning meeting with the secretaries, and then we worked on it. That is to prove very clearly that the government's intent is not to harass anybody. If there are 1 or 2 black sheep here and there, they are there everywhere, not just among tax administrators. But the intent of the government had to be cleared, and therefore we thought we'll enshrine it in the statute itself, because we believe in it. It's an article of faith for us to respect wealth creators. It's an article of faith for us to make sure that the honest taxpayer is not suspect. And therefore we have made it a point to bring it into the Act itself as a charter, the details of which will come out. So that was one of your questions. What was the other? Tuhin Pandey is here. Only to have one word in his favor before he speaks is, I set the target in July. And I also will have to tell you, didn't you know about it, will be your question next. But I'll also have to tell you, between July and now, January, the immense effort that Atanu, before Tuhin as disinvestment secretary, and now Tuhin, are all undertaking. You will see successful disinvestment happening within the next few months. But your accounts for this year end 31st March. Can I keep speculating? So obviously I agree. Between July and now, a lot of legwork has been completed. And the benefits are going to go into the next financial year. So you may hold me for having set a target which I didn't fulfill,
But within 6 months, I can stand up and tell you, we have done enough groundwork. Tuhin Pandey can speak now about the rest. So I think 20th of November, government took decisions of some big ticket disinvestments. One is the BPCL, another is Concord, another is Shipping Corporation of India, and THTC and NIPCO. Some of them we are going to conclude this year, but some of the large ones are going to spill over to the next year, and the revenues, receipts are going to come in the next year. So the transactions are all lined up. As you know, the Air India expression of interest is already out, and very soon BPCL expression of interest it is just about ready. It will be out as well, and so on and so forth. So therefore we are quite hopeful that we would be achieving the disinvestment target next year. And also for this year, whatever is there. As you know, we are a very successful ETF. Last 2 days we raised 21,000 crore on the ETF, of which we are retaining 16,500 crore. 40. Sir, ma'am, this is Karunjeet from ET. This is a question for the Revenue Secretary. Sir, there's a provision in the finance bill that Indians who are not paying taxes abroad, that Indians who are not paying taxes abroad will have to pay taxes in India. How will this work? Does this mean people working in Dubai and places like that which have zero taxation will have to pay taxes on their global income in India? We have made changes in the finance changes. We have proposed changes in the Income Tax Act, where if an Indian citizen, if he stays out of country for more than 182 days, he becomes non-resident. So we have made some changes there. So now in order to become non-resident, he has to stay out of the country for 240 days. That is one. And secondly, we have also provided that in many cases we have found that some people are resident of no country in the world. They may be staying a certain number of days in different parts of the country. So what we have said is that if any Indian citizen, if he is not a resident of any country in the world, then he will be deemed to be resident in India, and then his worldwide income will be taxed. Number 12. Hi ma'am, congratulations on an amazing budget speech. This is Meghna Mittal from Newsrise. I wanted to ask you regarding the fiscal deficit relaxation that we have announced for the current year, 3.8 and 3.5 for the next year. I wanted to understand, will it be possible from 3.8 to directly achieve the 3.5% fiscal deficit target? And secondly, I wanted to understand from the LIC IPO, what would be the likely quantum that we could look at and the time frame? On the LIC time frame and also the IPO details, I'll have Secretary talk about it. But on the fiscal deficit, we had announced during the BE July 3.3. But subsequent to that, because of the challenges that we faced towards wanting to put more money in the hands of people, to improve on consumption demand, to improve on investments which have to be from the public happening, because the private investment was happening but not at the pace in which it would have helped the whole process, but the public expenditure had to be kept up. And equally, because of various reasons, some natural disaster related, some because of the compliance difficulties in the process, some others unexplained, GST collection coming down. So on the one hand, your revenue generation could not be pressed further. On the other, there was a very clear demand on public spending. So when it was so obvious that I had to go spending, and you know the various attempts we made to release money from the government expenditure be carried out, and make sure that no pending amounts are lying anywhere, and so on. So with both opposite sides being so strongly laid out, it was only obvious
that without violating the FRBM, I had to seek that escape clause. And therefore 0.5% forbearance was something which I had to invoke. And therefore 3.8 this year. And the question that you're asking about, why is it 3.5 next year, are you sure you'll be able to come down to that level? Is because if you were to look at the way in which revenue generation is improving now, in the last 3 months itself, the GST collection has crossed 1 lakh crore. And I guess the coming months, and also equally with it, the reduction because of corporate rate cut, corporate tax which was reduced, and therefore the income foregone there, both accentuated the problem in terms of revenue generation. I hope the corporate rate tax, the tax cut and the benefit derived by new companies will all come to play in the coming months. I guess therefore there will be an improvement in collection. So improvement in GST collection as we are seeing it now, and even better in the future months. Improvement because of the corporate tax cut and the incentive which is coming because of that. I guess revenue generation improvement will give me that little comfort so that I can come down from 3.8 to 3.5 next year, with the disinvestment also showing clear signs of improvement. 27. These details will be worked out. This is a process which is going to take time in terms of the offer which will it make and thereafter listing. So we'll detail these timelines to you. But this is all to happen in the next year. मैम आलोक फ्रॉम CNBC आवाज, इधर से मैम, जो आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च करने की बात कही है, उसको लेकर क्या टारगेट है, कितना उसमें कलेक्शन हो पाएगा, और उसके डिटेल्स क्या है कि 31 मार्च तक आप लोगों ने कहा कि कोई उसमें एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे, 31 जून तक चार्जेस लगेंगे, वो क्या डिटेल्स होंगे, कितने चार्जेस लगेंगे, अगर इसके बारे में जानकारी देते, और कितना इससे अमाउंट कलेक्ट हो सकेगा, रेवेन्यू कितना सपोर्ट मिल पाएगा? रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका डिटेल्स देंगे, फिर भी इसके पीछे हमारी नियत ये था कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी सबका विश्वास के द्वारा हमने पेंडिंग लिटिगेशन को सॉल्व की, और उसका रिस्पॉन्स आपने देखा, that most of them decided to join in the scheme and close the cases which have been pending. On the very same principle अभी डायरेक्ट टैक्स में भी कर रहे हैं. 31 के अंदर ही करो तो सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट पे करो, कुछ पेनल्टी नहीं है, कुछ टैक्स भी, इंटरेस्ट भी आप पे करने का आवश्यकता नहीं होगा. अगर 31 मार्च को क्रॉस कर दिया फिर भी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पे करके यही प्रिंसिपल के आधारित आप आपके क्लोज कर सकते हैं आपके केस को जून 30 तक. यही है मूलभूत इसमें विषय. मगर रेवेन्यू सेक्रेटरी इफ यू वांट टू ऐड ऑन. करीब 4,90,000 केसेस हैं जहां पर कि केसेस डिस्प्यूट में हैं, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कमिश्नर अपील में. सभी को यह सुविधा दी गई है कि 31 मार्च के पहले अगर इसका फ़ायदा उठाएं तो किस डिस्प्यूट में जहां पर कुछ टैक्स डिस्प्यूट में होता है, उस पर इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो सब माफ़ हो जाएगा, सिर्फ उनको टैक्स देना पड़ेगा. अगर 31 मार्च के बाद लेंगे तो उनको 10% और टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि टैक्स डिस्प्यूट में नहीं है लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी का सवाल होता है. उस केस में भी हमने कहा है कि जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी आ रहा है उसमें सिर्फ वो 25% भर दे अगर 31 मार्च के पहले, तो उसका पूरा केस खत्म हो सकता है. अगर वो 31 मार्च के बाद करता है तो 25% के बदले में 30% देना पड़ेगा. 113. I'm Nikunj Jori from Bloomberg Quint. Vishwas scheme, I'd like to ask you a question on that. This has been designed to the previous scheme for indirect taxes. Although the collections from that scheme were better, there were only small taxpayers who actually availed this scheme. So how would this scheme be attractive for even large taxpayers who generally owe larger tax dues to the government?
And also, ma'am, there's not been any allocation for recapitalization sector banks this year. And most of the mergers that were announced last year would take place now. So what happens, what's your recapitalization plan for the next year? I'll answer that second bit first and then ask the Revenue Secretary to talk on the Vivad Se Vishwas. I have very clearly said about the mergers. I'll ask also the Secretary Banking to speak about it. I have spoken in detail about the recapitalization of the bank and about the bringing 10 banks to 4 and the process of amalgamation. And later also I've spoken about the way in which banks can benefit from certain tax deductions, rates, concessions and so on. All in this context of banks having been amalgamated. I have not said I won't give any money for recapitalization. Just as you're saying you've not given any numbers for recapitalization, I've also not said no, I will not give. Which means as and when there is a need, we'll certainly consider that. As about as Madam said that this will be assessed during the year, but at the same time, out of the merger, if we look at the Bank of Baroda, already there are signs of huge expenditure, rationalization and efficiency gains out there. The synergy which has been identified for annual saving is close to 1900 crores and the realizable target for this year itself is around 500 crores. So these are the kind of efficiency gains which are coming, and therefore these banks will also go through this process in terms of whole lot of expenditure optimization and efficiencies. You have seen the SBI results yesterday. I mean, this is a record operating profit which you have seen. So all these banks, having done all the NPAs reduction, PCR coverage at high time, recoveries, are in a position that they can also go to the market to take care of their own capital needs. 25. Involves the rights of the taxpayer but also the obligations of a taxpayer. So what has the government decided as far as the obligation is concerned, because compliance to taxes is a problem and Mr. Pandey others have been working at it. The second question is although you have said that a list will be given later about what exemptions to taxation still there, but I wanted to know a lot of tax was saved by people by making donations to charitable trusts. For example, tomorrow there is a mandir and people want to donate to that. What will happen? Will that exemption continue? In the new system, any donation made to a charitable trust will not be allowed as a deduction. However, if someone wants to make deductions to the charitable trust and claim exemption, he can be in the old regime, number one. So far as the charitable institution is concerned, they will continue to enjoy the exemptions as permissible under the Income Tax Act. You see, the obligation of the taxpayer has already been specified in the concerned tax laws. If it is an Income Tax Act, Income Tax Act provides that by such and such date the returns have to be filed, then so much tax has to be paid. So those obligations are already there so far as the taxpayers are concerned. What we have done now is that we have, through this charter, we are going to provide that what obligations the tax administration will have towards the taxpayer. Number 9. Ma'am, Ujjwal Narayan from Newsrise. This side, ma'am. Ujjwal Narayan from Newsrise. My question is about food subsidy. Looking at the budget documents, we see a huge cut in food subsidy. It was earlier in B, it was 1,84,000 crores, which has been now reduced to 1,08,688 crores. So, in the next financial year B also, it is 1,15,000 crore. So, what is the new arrangement from where
this spending, food subsidy spending had been reduced, or from any other heads you are utilizing the funds or diverting them? My another question is about PM Kisan, because in B you have put an estimate of 75,000 crore, which has been reduced to 54,000 crore. So what is the reason behind unutilization of the stated estimate, the estimates in this head, sir? Regarding the food subsidy, the balance between what you find in the budget estimate and what has been estimated as a liability, you will find in a separate statement which the minister referred to in her speech. He said we have annexed a statement on other resources that are being used to fund costs, and that you would find in Annexure 5 to the budget speech. So this is being provided as credit to the Food Corporation of India from the National Small Savings Fund. The principal as well as the interest will be serviced by the Government of India. So the funds are provided, they are provided for separately. You will find it in Annexure 5. And as regards PM Kisan, the scheme was announced with an expected number of farmers. In actual practice, in the rollout of the scheme, this year being the first year of the scheme, the estimation was done on a particular basis. The actual number has worked out to be a little less. Therefore, the revised estimates reflect what is expected to be incurred this year. But next year's provisions are fully provided for the larger number. That is expected, yes. Number 10. Priscilla from The Hindu, ma'am. Looking at given that this is a time of distress in the rural economy and especially a consumer slowdown, consumer demand slowdown in the rural economy, what is the rationale behind reducing your allocation for rural development? And especially when you look at the Narega scheme, which has had a lot of demand this year, your budget estimate, your allocation is only 61,500 in comparison to 71,000, which was last year's revised. You've actually cut it by 9,500. What's the rationale behind that? And my other question is about LIC. Would the LIC listing require an amendment to insurance laws? You mentioned about MNRGA. See, that is a demand-driven scheme. This year we went up because there was a demand for this in certain areas, and the full money was provided. Again, next year, if you see, it's a usual, normal level funding that has been provided for MNRGA. If there is an additional demand from some areas which comes up, accordingly at RE stage, we'll again meet it. All these schemes, rural development has a very large chunk this year, and rural development and agriculture put together are very close to 3 lakh crores. So wherever there is a demand, especially on MNRGA, whenever additional demand comes up, they will be fully funded. It's a normal run of demands over the year which comes up. There was an additional demand from certain areas which came up, which were funded. So RE of 2019-20 reflects meeting the demands fully, not rolling them over. We'll follow the extent procedure for listing and for other things, including the legislative changes if it requires, in consultation with the Ministry of Law. And that process we have already started. 103. Hello. Hello. Yeah. Ma'am, congratulations for presenting a very positive budget in a very odd macroeconomic situation. You've mentioned you've targeted 10% growth of GDP, and you have also given a lot of income tax exemption this time, which is supposed to fuel the consumption demand, which is why the economy is in this position, sir. Ma'am, what the recent, if you see the Sensex right now, it has tanked by about 1,000 points. It means that the corporates are not happy with the exemptions and deductions that you've given in the budget. So what is your take on that? Do you think they were also expecting the STT and CCT also to be reduced? Well, thank you for, first of all, seeing
what we had worked for, the positive side of the budget. The observation that you have put forward about the stock market, I would wait for a full working day in the stock market. Today being Saturday, I think they have not really, well, I'm not sure if every aspect of the stock market was fully open today. So we'd wait for Monday. I would think many of what we have said in the budget would definitely have an impact, positive impact on the stock market, particularly the kind of reforms that we have put forward on the progressive, forward-looking, bold steps on strengthening and deepening the Indian bond market has come through in this budget. And I'm confident that on Monday, when the stock markets actually open, there will be definitely a clear indication of what the government has done in this. So today's response from the stock market, I would reserve my comments till Monday. Unless any other secretaries want to say. 57. मैम आनंद हूँ इंडिया टीवी से। यहाँ सब आपको बधाई दे रहे हैं बजट के लिए, लेकिन आज हिंदुस्तान के पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य माननीय पी चिदम्बरम जी हमारे साथ हैं और वो 2020-21 के बजट और भविष्य की रूपरेखा को लेकर सरकार द्वारा क्या पेश किया गया है, इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे और आपके सवालों का जवाब लेंगे। आदरणीय पी चिदम्बरम जी। Good afternoon to all of you. I have an opening statement. Copy will be distributed or may have been distributed. Let me read the statement. It will only take 160 minutes. So you'll have to be patient. We've just heard the longest budget speech delivered by a finance minister in recent years. It lasted all of 160 minutes. If therefore all of you are exhausted, as I am, I would not blame you. The only way I can help is by keeping the opening statement brief. I am at a loss to understand what was the message intended to be conveyed by Budget 2020-21. I'm also not able to recall any memorable idea or statement in the speech. The takeaway from the budget speech are the following. 1. The government has given up on reviving the economy or accelerating the growth rate or promoting private investment or increasing efficiency or creating jobs or winning a greater share of world trade. 2. There were multiple themes, segments, and programs, leaving the listener dazed and confused. It was a laundry list of old, that is, current programs. I'm pretty certain that even the most loyal BJP MP or supporter cannot latch on to any idea or statement in the budget speech and take it to the people. If the ongoing programs have failed the people, how can throwing more, or in some cases less, money into the ongoing programs change anything? 3. The BJP government has been identified with debatable positions like self-reliance, protectionism, control, and aggressive taxation. The budget affirms those positions. The government does not really believe in a market economy, competition, or higher trade intensity. The chief economic advisor must be a very disappointed man. 4.
The government is in complete denial that the economy faces a grave macroeconomic challenge and the growth rate has declined in 6 successive quarters. There is nothing in the budget that leads us to believe that growth will revive in 2020-21. The claim of 6 to 6.5% growth next year is astonishing and even irresponsible. 5. The Indian economy is demand constrained and investment starved. The FM has not acknowledged these 2 challenges, and that is a pity. Consequently, she has proposed no measures or solutions to those 2 challenges. If the twin challenges remain, the economy will not turn around and there will be no relief to the millions of poor and the middle class. 6. Food subsidy has been reduced. Fertilizer subsidy has been reduced. The petroleum subsidy has been marginally increased because of anticipated increase in oil prices. It appears that the people will not get any relief on the price front. Please remember that CPI inflation is over 7% and food inflation is over 10%. 7. The finance minister failed miserably on marksmanship. In 2019-20, the current year, she failed to meet any of the key budget estimate targets: nominal GDP growth, fiscal deficit, net tax revenue collection, disinvestment revenue, or total expenditure. There is no assurance that she will meet the targets set for 2020-21. 8. The government does not believe in reforms and certainly not in structural reforms. The FM has outright rejected every, and I repeat, every reform idea contained in the economic survey. I wonder, did the FM read the economic survey? I also wonder, was the chief economic advisor privy to the contents of the budget speech? I think the answer to both questions is in the negative. So that is your budget for 2020-21. You did not ask for such a budget, and you did not deserve such a budget for voting the BJP to power. But you have to live with it until the government is forced to revise it, as it did in 2019. Any questions? We'll take it. We'll start with you. Sir, I just want to know whether the Congress party welcomes the income tax relief in terms of, for the salaried classes. There has been some reduction, and of course, Nirmala Sitaram says that exceptions will be removed. And then, of course, the other aspect about the fact that there's going to be disinvestment of, once again, LIC and IDBI. So do you think that is in the correct direction? See, as far as the personal income tax relief is concerned, of course, we would welcome any relief given to the income taxpayers in the lower brackets. But whether it is 40,000 crore is a big question mark, because it is subject to the condition that you can't avail of exemptions. It's only when you trade off the exemption and the relief, you can really arrive at the relief. If they've finally thrown some crumbs at the lower tax bracket, I mean, it's not a matter to be welcomed or congratulated about, but any relief to the lower income tax bracket, we welcome it. As far as IDBI is concerned, that was a decision taken last year. So it's not a new decision, so I don't have to make a new comment on that. As far as LIC is concerned, it's highly debatable. To assume that every public sector must go through a process of disinvestment, partial or whole, is wrong. LIC actually has increased its share of first premium income in the last year, as reported by the chairman. It has gained in competition with very strong private sector players. So we will internally debate it within the party.
and we will give our view on the floor of Parliament. But I think it's a highly debatable proposition. Yes. Yes, sir. What do you think of the tax exemption on the sovereign wealth funds? Do you think that this will bring in some money into the infrastructure sector? She announced it last year. She reiterated it this year. Yeah, but there hasn't been any... No, last year she didn't raise any money. But today, the external market conditions are certainly not favorable for a sovereign wealth fund. If the world economy is going to slow down and oil prices will rise, or there's going to be conflict in some theaters, I don't know what the external situation will be. They announced it last year, they didn't raise any money. If they have announced it again this year, I doubt whether they'll be able to raise any significant amount of money. The better course is to allow a quasi-sovereign to raise money abroad, and that will benchmark where your sovereign rating is. The obvious quasi-sovereign is the State Bank of India. See, we are all talking about making... Well, I think you stopped counting at 3. I had 3, and under each one of the 3 there were some numbers. So if you multiplied, I think it came to close to 100. I think she lost count somewhere along her speech. I lost count midway in her speech. How do you call it a budget for caring society? I've just given you food subsidy has been reduced. Fertilizer subsidy has been reduced. We have to get into the details to find out what is the allocation for specific programs that are targeted at midday meal scheme also. The RE is less and the BE is at the same level as last year. PM Kisan, the RE is less, the PE is the same as last year. So I think this talk about caring society is more words than deeds. Once we drill into the numbers, we will know how caring they are or how uncaring they are. But what aspirational India, because all the opposition parties are saying that the burning issue of unemployment is somewhere not touched upon by this budget. That's true. That's what I said. Surprisingly, the President's speech did not utter a word about employment. And I commented on that yesterday. The Economic Survey has a chapter on employment, but it makes this extraordinary claim that new firm registrations have increased 12.2% in the 5-year period of the BJP government, and every 10% increase has boosted GDP by 1.8%. Now, where are these firms? Are they on another planet or are they in India? I mean, I travel around. I don't see any firms. All I can hear is stories about firms closing down, not firms starting. I think this budget has also done nothing to create jobs. The 3 job-creating sectors are mining, construction, and manufacturing. Now tell me anything in this budget, which gives a boost to mining, construction, or manufacturing. There's nothing for mining, construction, or manufacturing. So these are the 3 job-creating sectors. Sir, on a scale of 10, how would you rate this budget? How many marks are you going to give to Nirmala Sitharaman? 10 has got a 1 or a 0. You can pick either a number.
10 has got a 1 and a 0. You can pick either number. I'm okay with it. No, no, I think she mentioned some other place, not Kirladi. She mentioned Rakhi Gadi as. Where is that? No, no, I know in Tamil Nadu, but where in Tamil Nadu? It's not Kirladi. Thoothukudi. No, no, I have no complaint if there is archaeological site in Thoothukudi. Well, I was disappointed that she didn't name Kirladi. Kirladi is a authentic and a pure Dravidian civilization. I don't know what the Thoothukudi site is. Since I don't know, I can't answer. But why she made why she emphasized repeatedly Sindhu Saraswati civilization, she should have also acknowledged that there is an equally ancient, equally famous civilization called the Dravidian civilization, and there is huge amount of evidence that has been excavated at Kirladi. No, I don't. You see, you can have two views on DDT. But undoubtedly, it is one of the most efficient taxes levied by the government of India. There is no scope for evasion in a DDT. So every pie that is collectible as tax on dividend will be collected. Now today, they've abolished DDT, obviously as a sop to corporates, especially foreign corporates. And now they'll have to go after the recipient of the dividend to collect the tax. Now, whether they succeed in collecting all the taxes is a moot point. But I'm pretty certain there will be a loss of revenue in substituting DDT by the traditional tax on dividends. Sir, Govt of India made a huge allocation for 2 new UTs, one Ladakh and Jammu Kashmir is the second one. It's around 36,000 crores. So how do you see and what would you like to comment? Money is no substitute for freedom. What the people of Jammu, Kashmir and Ladakh require is freedom. What the people of the Kashmir Valley require is restoration of their human rights. Only a free society, people breathing free air, can enjoy the fruits of development and participate in the development process. Money is no substitute for freedom. If they think that they can take away freedom and substitute it by money, they are completely wrong. I will restore freedom first and then give money. What fiscal deficit is 3.8 instead of 3.3, and even next year she has not put it only to 3.5. So Which means they are no longer on the fiscal consolidation path. This government has given up on fiscal consolidation. I'm sorry to say that, but every analyst around the world, every investor will take note of this fact that this government has given up on fiscal consolidation. 3.8 is also not counting the off-budget items, and 3.5 is also not counting the off-budget items. And after borrowing an additional 69,000 crore rupees, they still don't meet their total expenditure target. So where did this money go? We'll have to drill into the numbers to find out where this money actually went. Depositor insurance coverage has been increased. Now, does one celebrate or reflect more that it seems that our savings in the banks may not necessarily be safe? Because Well, they've increased it to 5 lakhs. About, I think 70 or 75% of depositors have
deposits of only less than 5 lakhs. They are covered. But I have never felt that our banks were unsafe and our deposits were unsafe. And to even imply that public sector banks were unsafe is, I think, unnecessarily dragging them into a controversy. I think the correct approach is to ensure that the regulator ensures that every bank has adequate capital adequacy. They meet capital adequacy ratios, meet solvency ratios, meet the reserve ratios. If all these ratios are met, there is no reason to assume that the deposits are unsafe. So capital adequacy ratio, solvency ratio, and the reserve ratio, if they are met, I wouldn't worry about deposit insurance. But since they have given deposit insurance, well, we take it, we accept it. So my question is, do you think new tax charter will really address the issue of tax terrorism? What new tax charter? Which the government is going to bring. Oh, they're going to make one. Yeah, exactly. When they make... Finance Minister made a focus on that. Well, why was the charter necessary? The charter was necessary because in the last 6 years, they gave extraordinary powers to the lowest official in every department. Income tax, excise, DRI, ED. The lowest official was given extraordinary powers, and they criminalized most laws. Now she's talking about decriminalizing the laws. She's talking about have a charter. Now, you invited this trouble. They're now trying to unscramble a scrambled egg. Let's see how much they succeed. But I think the message has gone across the country that under this government, every department of government with investigative powers is a tool of oppression, is a tool of extortion, and a tool of harassment. Thank you. Done? Can we first take it from him? He hasn't asked. Do you want to say something in Hindi? You will. Yes. गिरावट आई है अभी तक के मोदी सरकार के जितने बजट है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट 2.5% के आसपास आज देखने को मिली उसको कैसे देखते हैं वो जीडीपी की ग्रोथ हो या फिर सेंसेक्स की गिरावट, सच ये है आदरणीय मित्र के जब आप बदहाली नॉमिक्स परसू करेंगे थाली नॉमिक्स के नाम पर, तो फिर उसका नतीजा यही होगा। मैं इससे पहले कि और प्रश्न लूं, मुझे चिदम्बरम साहब ने कहा था कि बहुत संक्षिप्त में जो उन्होंने कहा मैं वो हिंदी में दोहरा दूं, तो मैं उनकी अनुमति से वो हिंदी में दोहराऊंगा। आज के बजट का सार जो है वो कुछ बिंदुओं के अंदर देखा जा सकता है। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को दोबारा से पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाने की बजाय, निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बजाय, रोजगार सृजन की बजाय, विश्व व्यापार के एक बड़े हिस्से पर भारत का कब्जा करने की बजाय इन सारे विचारों को पूर्णतया त्याग दिया है। बजट में निजी निवेश का प्रोत्साहन, रोजगार, युवा, विकास दर, स्किल्स यानी दक्षता बढ़ाने, इस प्रकार का कोई विचार वित्त मंत्री ने नहीं दिया। दूसरा पहलू आज के बजट का है कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार इस बात से पूरी तरह से गुरेज करती है कि अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और हमारे देश की
व्यापक आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि मंदी और तालाबंदी इस सरकार का अभिप्राय या पहचान बन गई है और पिछले 6 तिमाहियों में विकास दर लगातार गिरकर 5% से कम हो गई है। ऐसे में 2020-21 में विकास दर की गति बढ़ेगी, ना तो वो सामने दिखता, ना वो आंकड़ों में दर्शाया जा सकता। 6 से 6.5% की विकास दर का क्लेम अपने आप में या तो आश्चर्यचकित करता है या गैर जिम्मेवाराना है। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या, जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, वो है लैक ऑफ कंजम्पशन, यानी मांग की कमी, और उसके साथ साथ निवेश की कमी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। वित्त मंत्री ने इन दोनों चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं किया। जब आप मर्ज को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो आप मरीज का इलाज कैसे करेंगे? इसलिए कोई समाधान इन दोनों पहलुओं पर उम्मीद नहीं कि सरकार कर पाएगी। चौथा, जैसा महत्वपूर्ण तौर से उन्होंने कहा, इस देश में पहली बार खाद्य सब्सिडी कम कर दी गई। वो आंकड़ा जो मौजूद है, पिछले साल खाद्य सब्सिडी 1,84,000 करोड़ रुपया थी। इस साल वित्त मंत्री ने 1,15,000 करोड़ रुपया खाद्य सब्सिडी प्रपोज की है। यानी देश के गरीब की थाली में जो खाना जाना है, खाद्य सुरक्षा कानून में जो खाना जाना है, देश के किसान की फसल की खरीदी का जो पैसा है, उसमें 68,650 करोड़ की कटौती कर दी गई है। यह इस सरकार का नजरिया है। इसी प्रकार से उर्वरक यानी खाद, किसान के खाद की सब्सिडी भी कम कर दी गई। पिछले साल ये 79,996 करोड़ थी और इस साल घटकर 71,309 करोड़ रह गई। 8,687 करोड़ किसान के खाद की सब्सिडी को मौजूदा सरकार ने इस बजट में काट दिया। न आय दुगनी हुई, 75% किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई और अब आपने किसान की खाद्य सब्सिडी 68,000 रुपया काट ली और लगभग 9,000 करोड़ रुपया किसान के खाद की सब्सिडी काट दी। तो यह बजट गरीब के ऊपर एक गहरा प्रहार करने वाला है। और आखिरी उन्होंने जो कहा, बहुत संक्षिप्त में अगर मैं ये कहूं कि ये सरकार आर्थिक सुधारों में विश्वास नहीं करती। एक तरफ से संविधान पर राजनीतिक हमला बोलती है, प्रजातंत्र को पंगु बनाने का प्रयास करती है, संवैधानिक अधिकारों को पांव के तले रौंदती है और दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियों का सामना करने से गुरेज करती है। ऐसे में ऐसी सरकार जो ना संरचनात्मक सुधार चाहती और ना आर्थिक सुधार चाहती, ऐसे वित्त मंत्री और सरकार से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? इसलिए यह बजट हर पायदान पर फेल साबित हुआ है। Any other questions? Then Chidambaram ji will be happy to take, and let that be the last. The question is that there was a lot of Kashmiri poetry also which was recited, and one of the Kashmiri MP, the MP from Kashmir, Dr. was there, where the opposition has said that he should be brought back. What to make of this situation? See, all these weak and hypocritical attempts to appease the Kashmiri people will not succeed. What they need is freedom. Remember, since August 5, freedoms have been taken away from the Kashmir Valley. People are still in custody without charges. The world has taken note of the fact that India has denied freedom to 75 lakh people in the Kashmir Valley for over 6 months.
the first thing that the government should do is to restore the freedom. It's only after you restore freedom you can talk about other things like money or poetry. The phenomenon of the defense budget under the capital expenditure had been increased only by 10,000 crores. In the face of so much of militarism and claims of threat from all around. How do you read that? It is for the new Secretary, Department of Military Affairs and the Chief of Defense Staff to protest loudly. I want him to protest loudly. I hope he will. On behalf of all the three armed forces or only for military? No, he is the Chief of Defense Staff and he is the Department of Military Affairs. So I want him to protest loudly, and I assure him our voice will join him in protesting loudly. But he should lead the protest. Thank you. Thank you so much. For the boosting the export, this was expected. That see, there are a lot of indirect taxes goes like electricity or municipal corporation tax, and all this goes into the exports, which they have given. This is a good thing that they have given the refund of this amount also. And the most important part is that, in fact, they have not told about the customs. See, we are all talking about Make in India, but सर साल 2020-21 का बजट पेश हो चुका है. आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को देखकर कि मतलब क्या खामियां थी और क्या खामियां नहीं थी आपके हिसाब से इस बजट में? देखिए, मैं आई विल स्पीक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. It's a 2.5 years. Okay, what we were expecting, at least, what is a roadmap for the future in GST, right? We have done in 2.5 years, but the roadmap should have been the budget. That what is the next steps in next 2.5 years? That is not there at all. I know that the government has it is a GST council who has to decide, but budget should give the path at least or roadmap for the GST. That is totally missing. Second thing, okay, they have given for the boosting the export. This was expected. That see, there are a lot of indirect taxes goes like electricity or municipal corporation tax, and all this goes into the exports, which they have given. This is a good thing that they have given the refund of this amount also. And the most important part is that, in fact, they have not told about the customs. See, we are all talking about Make in India, but custom is a major part if we want to grow the Indian industry. And for that, I think it's not clear from the budget what we have got from there. I don't know for the fine print what is there, but it's not clear how we are improving the Make in India by amending some Customs Act or सर आपको क्या लगता है इनकम टैक्स में इतना बदलाव किया गया, उसके हिसाब से आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? सी, मेरा ये मानना है कि जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा टैक्सेस में, ओके, सिंपल प्रोसीजर्स नहीं होंगे, सिंपल कंप्लायंस नहीं होंगी, आपका टैक्स में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा. ओके, आज की डेट में अगर आप देखें तो आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस कि देयर आर सो मेनी स्लैब्स दे हैव इंट्रोड्यूस अगेन, से 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख. वाई वी आर गोइंग इन दिस breakup? I don't understand. We are unnecessarily making complicated society. Now मैं अब एक दूसरे को डिफरेंस करना है, 2.5 लाख आएगा तो मैं 2.5 लाख को नीचे करने की कोशिश करूँगा, अब 2.5 लाख ऊपर है. Why don't, as we have taken a bold step in the corporate taxation, like they have reduced from 35% to 22%, from 22% to 15%, why can't we take a bold step in individuals also? I think there is a big gap between the legislature and the bureaucrats. I'm telling you, legislature says something, but when it comes to the drafting, okay, because bureaucrat has to draft it, I think there is a big gap. Okay, they might say, okay, we are reducing the tax, but this systems of reducing tax by having so many slabs, you are just confusing the people, and you are just making complicated law. Let me tell you, despite I am expert in income tax, I cannot file my return. What others?
सर एक मेन चीज़ जो LIC के बारे में कहा गया कि LIC का एक सेक्टर बेचकर हम लोग बढ़ावा करेंगे, आपको क्या लगता है उसको लेकर? LIC का is not selling to the private party, it is through IPO. Okay. Right? If LIC is earning today, okay, good amount of earning today, IPO means is going to the public. Okay, the public should also take the advantage of this earning. So, in my opinion, if it is going to the IPO, not a disinvestment or going to the privatization, then I think it's good, because then, okay, whosoever buy the share of the LIC is doing well, no doubt about it. I think the basic policies will not change, but the LIC, yes, if the local person like you, if you have LIC shares and LIC is growing, then it's beneficial for. If it's going to the public, then it's good. If it's going to the private sector, particular private sector, then I'm against it. But it is, I think, LIC is through IPO, not through private placement. 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल बजट कैसा रहा? ये 20,000 जो नया बजट है, ये इसमें बहुत सारे अच्छे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, ख़ास तौर पे जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ है या जो इंडिविजुअल टैक्स इनकम टैक्स को लोअर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, और बहुत सारी नई स्कीम्स जिसके अंदर ग्रामीणों का ख़ास तौर पे जो डबलिंग फार्मर्स इनकम है उसको विकसित करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, किस तरह से हम अपने नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, उसके बहुत सारे साधन इन्वेस्टमेंट के रूप में किस तरह से हम करेंगे बताया गया है, जो कि इस बजट में एक हम सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसा भी आएगा जिससे कि ईजी हो जाए बिज़नेस करने के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे जो इश्यूज आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे उस पर रेट्स लगे हुए हैं, उनको कम करने की बात हम सोच रहे थे कि शायद इस बजट में एड्रेस की जाएगी। बहुत सारे रेट्स हैं और जो उस पर रिफ़ंड भी दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, वो भी लेट हो जाते हैं। तो आइडियली एक ही GST रेट होना चाहिए पूरे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, बट मल्टीपल रेट्स को ठीक करना है। एक तो ये इशू है जो मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। दूसरा, हम मेक इन इंडिया के चाहते हैं, मगर साथ साथ में हम अपने देश को प्रोटेक्शन भी दिए जा रहे हैं। कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो पिछले 2-3 बजट में बढ़ाई गई हैं, उनसे फिर अलग अलग इश्यूज पैदा होते हैं कि एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो उसमें जो मेरा कहना होगा वो यही होगा कि हम प्रोटेक्शन को कम करें, कस्टम ड्यूटीज़ को वापस यूनिफॉर्म रेट पे लाएं, और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट तभी होगा जब हम इंपोर्ट सस्ते दाम पे कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट मैं सिर्फ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम जो RCEP से संबंध तोड़े हुए हैं उसको सीरियसली कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। यदि भारत अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करना चाहता है, जिसे कहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हम करेंगे, और पूरा ग्रोथ प्रोसेस जो है इस साल, उम्मीद इसलिए भी है कि जो विश्व की गति 1919 में कम हो गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो अब 2020 में बढ़ने चली जा रही है, ट्रेड बढ़ने चला जा रहा है, इसलिए हम इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, और आपको क्या लगता है ये बजट ओवरऑल कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा? देखिए, अगर आप इस बार का बजट देखें तो मुझे ओवरऑल का बजट बैलेंस बजट लगा, और हम 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ये बजट मेरे लिए एक रोड मैप था जो मुझे लगा, और पाथ ब्रेकिंग इसलिए कहूँगा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश की इस बजट को एक दिशा देने की कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे, और उन्हें कई ब्रॉडर स्टेप्स लिए। ब्रॉडर स्टेप्स में उन्हें ये कहा एस्पिरेशनल इंडिया क्या होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, और हम केयरिंग सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। कई चीज़ें उन्होंने टच बेस की, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को टच किया, और ओवरऑल एक व्यू देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है जो इस बार का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम इंडिया देखना चाहता है विद 6.5% GDP ग्रोथ, उन्हें कोशिश की इस बजट में रोड मैप डालने की कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल बजट बैलेंस बजट रहा।
सर आपके हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए वो आपको किस हद तक आम जनता के लिए फ़ायदेमंद लग रहा है? देखिए, इंडिविजुअल इनकम टैक्स के जो रेट कम हुए, 5 लाख तक आपके पास इनकम टैक्स नहीं लगता था, 5 लाख से 10 लाख 20% लगता था, जिसको उन्हें रैशनलाइज किया 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, देन 10 लाख से 12.5 लाख पे गए, उन्हें रेट रैशनलाइज किया। लेकिन एक कॉशन उन्हें ये भी दे दिया कि आप फिर कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेल नहीं करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा बिंग इंडिविजुअल जो आपके इनकम टैक्स के रेट थे, अगर आप पहले इनकम टैक्स के रेट देते थे और डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेल करते थे, और अगर आप ये नए रेट जिसको आप चूज़ करना चाहते तो उन्हें कह दिया है आपको कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप नए रेट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको बेनिफिट जो डिडक्शन एग्जम्पशन की होती थी, लाइक 1.5 लाख की बेनिफिट आपको मिलती थी ATC के अंदर, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। सर LIC का जो एक हिस्सा बेचने की बात कही गई है वो आपको किस हद तक सही लग रहा है? देखिए, ये एक तरह के एक LIC IPO आएगा, उन्हें कहा है। हिस्सा बेचने की बात जो कही गई है, अब हमें देखना पड़ेगा कि किस पर्सपेक्टिव में है, कितना % ये बेचेंगे और बेच के कितना मनी ये अरेंज करेंगे और उस मनी का यूटिलाइजेशन क्या होगा। सो अगर LIC की बात कही जाए तो मैं तो चाहता हूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़नी चाहिए। जहां भी आप PSU की बात करते हैं, PSU में प्राइवेट मैनेजमेंट आना चाहिए। हम एक गैप देखते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक के अंदर। इस गैप को हम तभी कम कर सकते हैं अब जब हम दोनों इन्वॉल्व हों और एक साथ आगे आएँ। तो थोड़ा अगर प्राइवेट इसमें आता है और पब्लिक के साथ मिलकर हम काम को करता हुआ देखेंगे तो मेरे ख्याल से LIC में जो और भी अपॉर्चुनिटी है, जो हिडन अपॉर्चुनिटी है, वो बाहर निकल के आएंगी। सर अब मेक इन इंडिया को जो कहा गया है कि बढ़ावा दिया जाएगा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मेक इन इंडिया बढ़ावा देने के लिए कोशिश बहुत की गई है और ओवरऑल कहा भी गया है। आप देखिए, कॉर्पोरेट टैक्सेशन के रेट नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो 22% है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है। आप देखिए, ओवरऑल जब सारा सिनेरियो को जब आप वर्कआउट करते हैं मेक इन इंडिया के लिए, तो कोशिश की गई है सेफगार्ड ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी, इनको देखा जाए, जो कस्टम के एग्जिम्पशन है वो विड्रॉ कराए जाए। और आपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की है, मोबाइल, सेमीकंडक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं जो मुझे लगते हैं वो हमें हेल्प करेंगे, और ये हेल्प जॉब क्रिएशन को भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपका मेक इन इंडिया बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन भी बढ़ेंगे और जॉब क्रिएशन से ओवरऑल इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। सर एक पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट मेरे को लगा, जो एक तेजस ट्रेन जैसी ट्रेनों को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है, आपको उस ट्रेनों के बारे में क्या लगता है कि इतना बजट दे पाएंगे उन तेजस जैसी ट्रेनों को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, ये एक विजनरी स्टेप्स है जिसको हम डालना चाहते हैं, पर मैं अगर मेरा पर्सनल व्यू आप देखें तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसकी बजाय जो लोकल हमारी चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें उस पर भी थोड़ा फोकस देना चाहिए। हमें मालूम है स्पीड वाली ट्रेन एक हमारे लिए विजनरी होती है, इंडिया की आइडेंटिटी को शो करती है, बट एट द सेम टाइम हमारी रेल लाइन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन लोकल से लेके एक्सप्रेस एंड जो भी मेल ट्रेन्स हैं उनको भी हम इम्प्रूव करें, उनके भीतर की हाइजीनिक सिचुएशन को ठीक करें, प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव बनाएं और लोगों को ओवरऑल फ़ायदा रेलवे से देने की कोशिश करें। हाँ, कई चीज़ें हमें विजनरी वे में लेनी पड़ती हैं, शायद उसमें ये अनाउंसमेंट है, बट ओवरऑल जब हम फंड जनरेट करेंगे, और फंड जनरेट होता है आपके प्रॉपर मैनेजमेंट से, सो रेलवे को भी ज़रूरत है कि हम वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएँ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डालें, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट भी आए और साथ बाई साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारी बढ़े, जो ओवरऑल ग्रोथ दे सकती है। सर एक लास्ट पॉइंट, जो कृषि सेक्टर के लिए कहा गया कि इतना पैसा उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा करोड़ रुपया, तो आपको लगता है कि इससे कृषि सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा? देखिए, कृषि सेक्टर के लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया है कि जो फार्मर की इनकम है उसको डबल किया जाएगा, और डबल करने के लिए उस पर वो वर्क कर रहे हैं। और कृषि सेक्टर में ये लैंड के ऊपर, खाद के ऊपर, बीजों के ऊपर आपको प्रोविज़न दे रहे हैं और सब्सिडी भी देने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी बात की, केमिकल फर्टिलाइजर से बाहर किया जाए, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डालने की बात की जा रही है। ओवरऑल एग्रीकल्चर CMP के ऊपर भी फोकस किया गया है कि कॉमन मिनिमम प्राइस मेरे आउटपुट की क्या होनी चाहिए। इस बार के बजट में एग्रीकल्चर को एक विशेष जगह दी गई है जहाँ पे टोटल आपकी एंड टू एंड सिचुएशन को देखा गया है, और फार्मर की इनकम एंड अलॉन्ग विथ लैंड अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी,
खाद की अवेलेबिलिटी, बीजों की अवेलेबिलिटी, सब पे बातचीत की गई है। अगर ये सारी बातें जो बजट में रखी गई हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया गया तो बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ग्रोथ देखेंगे। सर, साल 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, आपको क्या लगता है ओवरऑल बजट किस हिसाब से रहा, आम जनता के लिए कितने फ़ायदेमंद है इस बजट का? देखिए, बजट अच्छा है और ख़ासकर जो अभी इन्होंने इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस में चेंजेस किए हैं, एक आपको ऑल्टरनेटिव स्कीम दी है जिसमें आपकी अप टू 5 लाख की जो इनकम है वो उसमें एग्जेम्प्ट कर दी गई है। बेसिक एग्जेम्पशन आपको 2.5 लाख से 5 लाख कर दी है और उसके बाद भी जो टैक्स स्लैब है वो 5%, 10%, 15%, 20% और उसके बाद 30% इस तरह से कर दी है। 5 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है, अगर हर 2.5 लाख इनकम बढ़ने के बाद आपके स्लैब उस हिसाब से कर दिए गए हैं और साथ में आपको ये एक ऑप्शन भी दी गई है, आप इसको ले सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग आपका जो अभी जो पिछले साल से जो चल रहा है सिस्टम, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जिन लोगों को जो एग्जम्पशन नहीं मिल रही है या जो उन्होंने नहीं ली हुई है, उनके लिए एक बहुत काफ़ी बेनिफिट इस प्रोविज़न से आएगा। लगभग 25,000 से लेके 75,000 रुपये तक की सेविंग उनको होती है। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को 5.5 करोड़ जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो एक इसमें जो चेंजेस किए हैं, जो कॉर्पोरेट के लिए असेसिस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से कंपनीज़ की जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बड़ा स्ट्रेन पड़ता था और वो इस वजह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने में उनको काफ़ी कम होता था उनका, क्योंकि उसके साथ उनको टैक्स का भी इम्पैक्ट पड़ता था। अब ये टैक्स कंपनी को ना देने की बजाय अब ये टैक्स जिसको रिसिपिएंट है उसको देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा कदम है और इससे कंपनीज़ के पास रिसोर्सेज, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी उनको नहीं देनी पड़ रही है, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी, जिसका बेनिफिट वो आगे अपने एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हैं या वो अपने जो प्रोडक्ट के प्राइसेज है उसके अंदर उसका बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। एक जो इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, जो बहुत बड़ा एक अच्छी स्कीम आई है, जो हमने जैसे देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लास्ट ईयर जो 2019 में एक स्कीम आई थी, सबका विश्वास डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड कम एमनेस्टी स्कीम 2019, जिसके तहत हमने देखा है कि लगभग 35,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को मिला और लगभग 1,61,000 केसेस उसके माध्यम से सोल्व हुए, जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट थे वो ख़त्म हुए। ऐसे ही इस बार जो गवर्नमेंट है, विवाद से विश्वास तक एक ऐसी स्कीम लेके आई है जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये स्कीम है। इसके तहत आपको जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वही देनी पड़ेगी, जो पेनल्टी है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको माफ़ हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आप 31 मार्च 2020 तक ये आप अमाउंट पे करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे बहुत सारे एसएससीज जो कि आगे डिस्प्यूट में पड़ना नहीं चाहते, जो पीस बाई करना चाहते हैं, वो इस स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे और मेरा मानना है कि इससे भी बहुत बड़ा पैसा गवर्नमेंट को आ सकता है। और इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये भी दिखाया है कि हम एसएससी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, एक ट्रस्ट करने का माहौल क्रिएट किया गया है। तो ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा है। मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट ने जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा खर्च किया है, जो पैसा खर्च करने की बात की गई है, जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट को जाहिर किया है और जो 16 पॉइंट एजेंडा जो आया है, जिसके तहत बहुत सारे 25 लाख, लगभग 25 लाख किसानों को सोलर पंप मिलेंगे। ऐसे ही उसके अंदर एक स्कीम आई है जिसके अंदर तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो एयरपोर्ट्स बनाएंगी और ऐसे सिस्टम होगा जिससे कि आपका जो प्रोड्यूस, जो हॉर्टिकल्चर है, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो कि अभी ख़राब हो जाते थे बिकॉज़ आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए जो ये एक फैसिलिटी दी जाएगी एयरलिफ्ट करने की, आई थिंक इससे भी फार्मर्स को, रूरल इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये बजट बहुत अच्छा बजट है और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। और इस बजट के माध्यम से चूँकि डिमांड जनरेट होगी, और अगर डिमांड जनरेट होगी तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी नहीं हो रहा था, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो एक और कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो आप समझिए कि जॉब क्रिएट होंगे। तो आई थिंक ओवरऑल ये जॉब क्रिएटिंग बजट है
ये डिमांड को जनरेट करने वाला बजट है और एक फील गुड फैक्टर भी ये इकोनॉमी में क्रिएट करेगा। सर साल 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, आपको क्या लगता है ओवरऑल बजट किस हिसाब का रहा बजट? ओवरऑल बजट की दिशा डायरेक्शन पॉजिटिव है। इसकी दिशा $5 ट्रिलियन के जो हमारे इकॉनमी का टारगेट है सन 2024 तक का, उसकी तरफ देखते हुए काफ़ी कुछ स्टेप लिए गए हैं। लेकिन कोई भी बजट पूरी तरह हमेशा उम्मीदों पर तो नहीं उतर पाता है। हमें भी अभी काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगी, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ों में निराशा भी हुई जो हम लोगों को उम्मीदें थी कि होना चाहिए था। बट कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। सबसे बढ़िया चीज़ हुई है पर्सनल इनकम टैक्स में जो सिंप्लीफिकेशन स्कीम आई है, जिसमें कि अगर आप एग्जेम्पशंस अपनी लेने छोड़ देते हैं अगर, तो आपके टैक्स स्लैब 5 से लेकर 10% तक घट जाते हैं। करीबन 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर को करीबन 90,000 रुपये की टैक्स फ्री सेविंग होती है, जो एक, और उसमें उसको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है अपना फॉर्म भरने के लिए। तो एक जो है लाइफ आसान होती है। हो सकता है वो एग्जाम्पशन भी 30, 40, 50 हज़ार की कुछ हो, तो सेविंग 90,000 नहीं हो तो 30,000 हो, लेकिन सेविंग है। और सबसे बड़ी बात है सिंप्लीफिकेशन, काम आसानी से आप अपना टैक्स भर सकते हैं। और कुछ पॉजिटिव्स हैं इस बजट में, जिसमें कि मैं कुछ गिनवाना चाहूँगा। एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो हटाया जाना एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे टैक्स जो है मल्टीप्लाई होता है और काफ़ी जो है इकॉनमी में इनकरेजमेंट मिलती है इस टैक्स के जाने से। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, आज उनको भी एक रिटर्न बेटर होगी। तो दूसरा एक बड़ा स्टेप है फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड, जो विदेशी सरकारी फंड हैं, वो जो पैसा लगाएंगे हिंदुस्तान में निवेश करेंगे यहाँ कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर उनको बहुत अच्छी एग्जेम्पशन और छूट दी गई है। पूरा 2024 तक जो वो पैसा लगाएंगे उस पर पूरा उनको टैक्स की छूट है। उससे वो लोग काफ़ी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भारत सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में लगाने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि लोग पैसा लगाने वाले भी तो चाहिए आपको खर्च करने के लिए। तो ये पैसा मिलेगा आपको इन्वेस्टर से और आप उसको फिर इकॉनमी में लगाएंगे, जिससे आपको देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और उससे आप $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुँचेंगे। कृषि सेक्टर में ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद रहेगा कृषि सेक्टर में ये सब? देखिए, कृषि सेक्टर में काफ़ी तो मैं अभी नहीं देख पाया, लेकिन मेरे विचार में एक बहुत अच्छा स्टेप है कृषि के लिए, वो है हॉर्टिकल्चर। यानी कि सिर्फ ये अनाज की बात ना करें आप, अनाज गेहूं चावल की बात ना करें, हॉर्टिकल्चर के जो दूसरे आपके सब्जियां और फल वगैरह हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की गई है कि हर देश की हर डिस्ट्रिक्ट को 1 या 2 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट को 1-1, 2-2 प्रोडक्ट के लिए एनकरेज किया जाएगा और उसके लिए उसमें पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। इससे जो है एक सिर्फ अनाज उगाने की बजाय उसके अलावा दूसरी फसलों पर किसान की जो अटेंशन जा सके, उसके लिए बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। और जहाँ तक मेरी समझ में आया है, एक जो है फूड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेशन इस बजट में बढ़ाई गई है, पैसा खर्च तो बढ़ाया गया है। सर एक मेन पॉइंट था जो LIC को लेकर एक IPO बनाया गया है जिसे बेचा जाएगा एक प्राइवेट कंपनी को, तो आपको कितने हद तक ये अच्छा लग रहा है? LIC को IPO लाना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि LIC एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिस पर आज हमें सबको फ़ख्र है और उसमें सबको विश्वास भी है। उस इंस्टीट्यूशन के अगर शेयर आज बाज़ार में फ्लोट होंगे तो सरकार को भी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और वो पैसा अल्टीमेटली लगेगा हमारी इकॉनमी में और इन्वेस्टर को एक पैसा लगाने की जगह मिलेगी। तो इसलिए मैं तो इसको एक बहुत अच्छा स्टेप मानता हूँ। इस साल हमारे रियल एस्टेट बिजनेस और ऑटोमोबाइल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा गिरे, आपको क्या लगता है इस बजट से वो उसको बढ़ावा मिल पाएगा? देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस को तो कुछ छूट दी गई हैं काफ़ी। अफोर्डेबल हाउसिंग, जो सस्ते मकान जो बिल्डर्स बना रहे हैं उनको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन 1 साल के लिए और बढ़ाई गई है और कुछ फैसिलिटीज़ इंटरेस्ट में टैक्स वगैरह की कुछ दी गई हैं जो होम ओनर के लिए हैं। तो रियल एस्टेट को भी बढ़ावा दिया गया है। अब कितनी उम्मीद थी और कितना मिला, ये सब तो 2-3 दिन बाद जब सब लोग अपना टैक्स की पूरी किताबें पढ़ लेंगे और पूरे बजट की किताबें पढ़ लेंगे तब शायद बता पाएंगे, लेकिन इसको एक पॉजिटिव तो गिना जा रहा है। सर एक लास्ट पॉइंट, तेजस जैसी ट्रेनों को जो बढ़ावा देने की बात कही गई है, आपको क्या लगता है कि इतना बजट हम दे पाएंगे? देखिए, रेलवे के लिए बजट 50 लाख करोड़ रुपए है अगले 10 साल में
और वो पैसा काफ़ी हद तक सरकार ने अपने प्रोजेक्शंस में लिया हुआ है। और ये तेजस जैसी ट्रेन बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना इकॉनमी में आप सिर्फ एक हवाई यात्रा को नहीं आप इनकरेज करें, रेलवे भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो कम्पीट करना है रेलवे को हवाई ट्रैवल से, उसके लिए तेजस जैसी ट्रेन और इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तेजस ट्रेन बन रही हैं ये हिंदुस्तान में बन रही हैं, तो इंडिया की मेक इन इंडिया भी इनकरेज हो रही है इससे। सर साल 2020-21 का बजट पेश हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को देखकर कि मतलब क्या खामियां थी और क्या खामियां नहीं थी आपके हिसाब से इस बजट में? देखिए, मैं आई विल स्पीक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. It's a 2.5 years. Okay, what we were expecting at least, what is the roadmap for the future in GST, right? We have done in 2.5 years, but the roadmap should have been the budget. That what is the next steps in next 2.5 years? That is not there at all. I know that the government has it is a GST council who has to decide, but budget should give the path at least or roadmap for the GST. That is totally missing. Second thing, okay, they have given for the boosting the export. This was expected. That see, there are a lot of indirect taxes goes like electricity or municipal corporation tax, and all this goes into the exports, which they have given. This is a good thing that they have given the refund of this amount also. And the most important part is that, in fact, they have not told about the customs. See, we are all talking about make in India, but custom is a major part if we want to grow the Indian industry. And for that, I think it's not clear from the budget what we have got from there. I don't know for the fine print what is there, but it's not clear how we are improving the Make in India by amending some Customs Act or there. सर आपको क्या लगता है इनकम टैक्स में जितना बदलाव किया गया उसके हिसाब से आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? सी, मेरा ये मानना है कि जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा टैक्सेस में, ओके, सिंपल प्रोसीजर्स नहीं होंगे, सिंपल कंप्लायंस नहीं होंगी, आपका टैक्स में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा. ओके, आज की डेट में अगर आप देखें तो आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस कि देयर आर सो मेनी स्लैब्स दे हैव इंट्रोड्यूस अगेन, से 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख. Why we are going in this breakup? I don't understand. We are unnecessarily making complicated society. Now मैं अब एक दूसरे को डिफरेंस करना है, 2.5 लाख आ गया तो मैं 2.5 लाख को नीचे करने की कोशिश करूँगा, अब 2.5 लाख से ऊपर है. Why don't, as we have taken a bold step in the corporate taxation, like they have reduced from 35% to 22%, from 22% to 15%, why can't we take a bold step in individuals also? I think there is a big gap between the legislature and the bureaucrats. I'm telling you, legislature says something, but when it comes to the drafting, okay, because bureaucrat has to draft it, I think there is a big gap. Okay, they might say okay, we are reducing. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने अनेक योजनाबद्ध रूप तरीके से प्रयास किए हैं. नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर पार्क्स हो, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो लिए गए हैं. इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा. बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरूरत है उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉम्बिनेशन पर बल दिया जाएगा. जैसे डिग्री कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्था का ऐलान किया गया है.
भारत से जो युवा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज की व्यवस्था भी की जा रही है। एक्सपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई घोषणाओं के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का इसमें निर्णय लिया गया है। छोटे उद्यमों की फाइनेंसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है। आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत कोई जानते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए से 6500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा, देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। देश में 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य देगा। भारत के पर्यटन सेक्टर के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है और टूरिज्म से कम पूंजी निवेश से अधिक रोजगार की अधिक संभावनाएं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम स्टार्टअप्स के जरिए और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के जरिए युवा ऊर्जा को नई ताकत देंगे। टैक्स स्ट्रक्चर में मूलभूत बदलावों के कारण भारत में अनेक सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवश्यकता होती है और प्रमुख ड्राइवर होता है। इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड़ रुपए आएंगे जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए विभिन्न टैक्स कंसेशन भी इस बजट में दिए गए हैं। स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े। हमारे कंपनी कानूनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं और उसमें कई सालों से क्रिमिनल एलिमेंट है, एक प्रकार से परेशानी का कारण है सामान्य नागरिक को, उन्हें अब डीक्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा टैक्स पेयर्स के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। दुनिया में शायद बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स पेयर चार्टर की कल्पना की गई है। भारत आज एक प्रगतिशील कदम उठा रहा है। एमएसएमई से जुड़े छोटे उद्यमियों पर हमारी सरकार ने
हमेशा भरोसा किया है। हम नागरिकों पर विश्वास करने वाली सरकार है। अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक ही थी, अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस को लेकर हुआ है। बैंकों में, और ये खास करके मध्यम वर्ग के लिए होता है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, वो अपने जीवन की पूंजी को बचा के रखता है और कभी संकट में पड़ जाता है। बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है, ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कि एक प्रकार से जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं, 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया और सरल स्ट्रक्चर, डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर, ऑटो एनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, नागरिकों की शक्ति बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ईज ऑफ लिविंग के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा। मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में 1 लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गांवों में भी लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्तियां की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बजट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा।